Believe. Believe. It's in your DNA. This is our legacy to you. Come on, you Blues. Come on, Jeffs. Chelsea, 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 Chelsea. I know भाई मैन सिटी फैंस बोलो भाई हमें भी बोल दो थोड़ा बहुत हम भी है. We are the champions after all, the treble holders. लेकिन it is a big match, guys. Yes, I know. आप बोलोगे 10th versus first. Come on, away to Etihad है. वहां पर 7 games non-stop. 7 games non-stop भाई. Man City haven't lost to Chelsea after that Champions League final. We all remember which Champions League final we are talking about, not the recent one of course जो Man City जीती थी. लेकिन at the end of the day भाई, this is Chelsea of today. अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दूसरा नाम है चेल्सी. जैसे फॉर पीपल हु फॉलो अदर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, जहां पर हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज ऑफ द यस्टरयर्स, पाकिस्तान ऑफ द यस्टरयर्स, भाई इस सीजन की चेल्सी वही है. तो यू नेवर नो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. तो भाई कम ऑन, यू जस्ट नो मैटर व्हाट इट इज, मैच डे और कुछ भी हो सकता है. दैट इज व्हाई वी लव फुटबॉल. लेकिन बाकी मैचेस भी चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बात करेंगे. बाय द वे, वेरी स्पेशल स्ट्रीम. होपफुली वी विल हैव McKyle joining us as well in hopefully just a few minutes. But I've also invited another Chelsea ultra. Let's see if we can make it as well. Lekin talk about Chelsea, bhai. London rivals Arsenal doing the drill. As things stand, I believe वो लोग जीत रहे भाई 3-0 against Burnley away. Good performance, great performance in the first 1 hour. General Trossard. लेकिन अब देखते हैं how it goes beyond this. गनर्स फॉरएवर वापस छा गए भाई यहाँ पर. गनर्स वेयर आर माय ब्लूज भाई. कम ऑन, लेट्स हैव अ मोर ब्लूज एंड कम ऑन गाइस. मुजाहिद इन द हाउस. बाय द वे, आई नो बारसा की गेम भी शुरू होने वाली है इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेटर टुनाइट. लेकिन भाई बिग मैच, मैन सिटी वर्सेस चेल्सी. आई नो अगेन, मतलब you can say that Chelsea have conceded 18 out of 19 times the last times that we have played against Man City in all competitions. ठीक है, that's the reality if I'm not wrong प्रीमियर लीग में. लेकिन मैन सिटी का भी, yes, that is football for you. I know थोड़ा बहुत होप ही है, and that hope keeps us alive, guys. That hope keeps us alive. By the way, भाई मुजाहिद, जनरल ट्रोसार्ड, गरज फॉर अवेयर, जो भी लोग जुड़े हैं, first of all let me know who all are there in the chat. Again, if you're not subscribed to the channel, consider subscribing. Just takes a press of a button, as well as like the stream. भाई सब लोग like button दबा दीजिए. Come on, let's hit that like button so that we'll have everyone in. Let's hit that like button on the community post as well. Yes, we are going to discuss about a little bit about Liverpool as well, because certain news there as well as other games. But we have something special for you with the ultras coming in. तो भाई let's smash that like button. Of course, big up to you all as well. ये आपको भी जाता है सब लोग. लेकिन साथ साथ में भाई मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया. If you can like that, that will help the stream and the algorithm. चेल्सी विन बोल रहे भाई जनरल प्रसाद. तो आज हालैंड को ट्रिपल कैप्टन किया है, बट दिल से चीयरिंग फॉर ब्लूज. ओके, दैट्स गुड टू नो. अगेन आर्सेनल सपोर्टिंग चेल्सी. इफ यू नो व्हाई, यू नो व्हाई. लिवरपूल एज मच एज कैराबो कप आ रहा है आज रात को, लेट्स बी रियल, लिवरपूल भी सपोर्टिंग चेल्सी एंड आर्सेनल भी सपोर्टिंग चेल्सी. एज मच एज चेल्सी विल ऑब्वियसली बी सपोर्टिंग चेल्सी, बट इट इज एट एतिहाद. अवे फैंस हैव बीन बवाल. आई हैव टू से अवे फैंस हैव बीन बवाल. तो भाई हम भी अपना एक नारा डालते हैं भाई, सब लोग को बुला लेते हैं विद आर नारा. एक हफ्ते में होने वाला है, तो भाई गा देते एक और बार. Flying high up in the sky, we'll keep the blue flag flying high from Stamford Bridge to Wembley. We'll keep the blue flag flying high. Are you listening that, Liverpool fans? लेकिन भाई great win for them as well, I must say, despite the injuries, some bad news. लेकिन वो डिस्कस करेंगे. अभिषेक in the house, Onoji in the house as well. Of course, हुए माई का current ongoing champion for the current series. लेकिन देखते क्या होता है फ्यूचर में in the current series season. अभिषेक as others. Chelsea should win. The menace बोल रहे, menace क्या हाल है भाई? How has your Saturday gone? Will score भाई साहब, दिस इज जनरली अ सुपर सैटरडे जो हो रहा है, जो और भी सुपर होने वाला है. सो होपफुली विल हैव एवरीवन इन. भाई अगेन जता जनार्दन, ऑलमाइटी फैम, घंटा गैंग, आई नो दैट यू आर वाचिंग द मैच. लेकिन आ जाइए सब लोग. आई होप नोटिफिकेशंस आ रहे भाई. सब लोग हिट दैट लाइक बटन. अगेन हेल्प द स्ट्रीम एंड एल्गोरिथम, जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ. लेकिन टॉटनहम ने इक्वलाइज किया था, आई बिलीव राइट आफ्टर हाफ टाइम विद कुलुसेव्स्की, एंड यहाँ पर वुल्व्स हैज स्कोर्ड अ सेकंड गोल जस्ट अबाउट, while West Ham are behind. Newcastle and Bournemouth का 1-1 हो गया है. Aston Villa 2-0 up against Fulham. Arsenal 4-0 up against Burnley, and Liverpool have obviously beaten Brentford 4-1 away. मेरा मन बात ये क्या बांट रहे, चेल्सी हारेंगे. अरे भाई राजर्षि ऐसा क्यों भाई? कोई नहीं,
मतलब अगेन पूरी दुनिया बोल रही है भाई 4-1 हारेगी, 5-1 हारेगी, 3-0 हारेगी, 2-0 हारेगी, भाई 6-1 भी बोले लोग. आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्वीट्स. भाई इट इज व्हाट इट इज. लेकिन लेट्स बी रियल, एज मच एज मैन सिटी आर ऑन अ विनिंग रन, मतलब इट्स नॉट दैट चेल्सी ने कभी जीता ही नहीं है भाई. 7 मैचेस तक हमने जीता नहीं है मैन सिटी का अगेंस्ट. यस एतिहाद में है, बट उसके पहले भाई कैन एनीवन टेल मी इन द चैट हु वाज द लास्ट Chelsea goal scorer in a Chelsea victory over Man City? हाँ, of course आप बोलोगे Kai Havertz भाई. Again, one of them that I was lucky enough to meet. Again, Arsenal fans right now, I believe he is performing for you. Having said that, प्रीमियर लीग में लास्ट प्लेयर कौन था जो मैन सिटी के साथ विनर स्कोर किया था? लेट मी नो इन द चैट. विच चेल्सी प्लेयर स्कोर द लास्ट विनर इन अ प्रीमियर लीग मैच अगेंस्ट मैन सिटी इज द क्वेश्चन. चैट हो जाए भाई. अगे भाई कंफर्म्ड दैट रोबर्टो डी ज़र्बी विल रिप्लेस जावी हर्नांडेज फ्रॉम जुलाई 1st, ऑफिशियल सम डेज लेटर. एक जी बोल रहे हैं. आई डोंट थिंक इट्स ऑफिशियल, बट आई एम सीइंग आज बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं. आई सी दैट एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन थिंग्स विल चेंज इन फुटबॉल. हो सकता है ट्रांसफर विंडो होता है, हम कवर करेंगे ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द सीजन. मुझे अभी भी लगता है आई नो हम मंडे ट्यूसडे बात करेंगे वो चैंपियंस लीग, लेकिन considering that Napoli here, Barca might go to the latter stages of the Champions League, and you never know. Mind change हो सकता है भाई जावी का, for all we know. For all we know, I genuinely believe that. I know I might be over optimistic as a neutral, लेकिन मैं से बोल रहा हूँ भाई आर्सेनल चौथी गोल भी मार लिया यार. What is happening भाई? इतने सारे गोल्स कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं यार. ट्रोसार्ड स्कोरिंग का 4th गोल आई बिलीव. लेकिन यहाँ पर भाई अपना लाइनअप आने वाला है, तो होपफुली विल हैव एवरीवन इन बाय द टाइम द लाइनअप कम्स इन. all the Liverpool and Arsenal fans are here. तो भाई Chelsea fans किधर हो? Where are my Chelsea fans? Calling all Chelsea fans blues. Come on भाई. I'm Chelsea till I die. I'm Chelsea till I die. And I know I am. I'm sure I am. I'm Chelsea till I die for sure. लेकिन हाँ ट्रोसार्ड गोल थैंक्स फॉर द अपडेट एज वेल. लेकिन मेनेस भी अच्छे. चलो रिवर्स पिक्चर जैसे कुछ धमाल मच जाए भाई. 4-all. यस, मेरा अर्ली प्रेडिक्शन बिफोर सी द लाइनअप मैं बोल रहा हूँ 2-all गाइस. आई नो 4-4 हुआ था लास्ट टाइम, इस बार 4-4 ही होगा, लेकिन टोटल 4 गोल्स मैं बोल रहा हूँ. 2-all मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है. ऑल्सो यहां पर लाइनअप निकलने वाले हैं जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स. हैविंग सेड दैट मेरा लाइनअप आप लोग देखिए, आप लोग ही बताइए. इफ यू आर अ चेल्सी फैन और इवन एज ए न्यूट्रल, व्हाट वुड यू लाइक टू सी चेल्सी प्ले टुडे? आई नो एज मच एज लास्ट 2 मैचेस में हम जीत का सामना किए हैं, स्पेशली द क्रिस्टल पैलेस कमबैक विन एंड ऑफ कोर्स द एफए कप एस्टन विला विन 3-1. लेकिन द रियलिटी बीइंग दैट भाई निकोलस जैक्सन इज ऑन 9 येलो कार्ड्स प्लस रहीम स्टर्लिंग नेक्स्ट सिटी मैन है, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब आर्ग्युबली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था इन चेल्सी जर्सी अगेंस्ट काइल वॉकर, वन ऑफ द राइट बैक्स ऑफ द प्रीमियर लीग. तो भाई यू हैव टू से रहीम स्टर्लिंग कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा आज. तो आई बिलीव दैट इज इनफ विद ऑफ कोर्स निकोलस जैक्सन बीइंग ऑन 9 येलो कार्ड्स भी एक रीजन बीइंग क्योंकि हमारा जनरली फॉरवर्ड्स आफ्टर ब्रोजा लीविंग इज आल्सो वन लेस. तो आई वुड लाइक टू सी दैट रोटेशन थोड़ा बहुत. Also, Palmer is not good as a number 9 false मेरे लिए. I think it's better off Palmer अगर खेलता है as a cam और a right winger, कहीं ना कहीं वो free space in behind the striker जब रहता है as a second striker, he is better off. तो मुझे लगता है that is why I would go with that. I know काफी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में बोले हैं, other content creators might have said it as well, some of them, that the fact is 2 हफ्ते पहले before that Aston Villa game there was a rumor that Chelsea might play back 3. तो मतलब हो सकता है we could go for that. लेकिन considering the इंजरी एफसी आई नो लिवरपूल पर आएंगे, लेकिन इंजरी एफसी चेल्सी भी है, मेजर इंजरी एफसी है. तो वहां पर आई डोंट थिंक वी हैव एन ऑप्शन. थियागो सिल्वा ग्रॉइन इंजरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और गिलक्रिस्ट इज टू यंग टू प्ले स्टार्ट इन द 11, और ऑफ कोर्स बार्डिशेली इज आउट, और फोफाना और चालोबा इज जस्ट बैक. तो मुझे नहीं लगता वहां पर रेस्ट लेंगे हम, इसलिए विल गो विद द बैक 4. बट तिगड़ी अपनी मिडफील्ड की खेलेगी. दैट इज माय प्रेफर्ड लाइनअप. आप लोग बोलिए फेयर और नॉट, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल लाइनअप भी आने वाला है. गाइस अगेन मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हो रहे हैं भाई. जनता जनार्दन कम ऑन, बिग अप टू एवरीवन जॉइनिंग. लेकिन भाई कहाँ है मैं अपनी जनता जनार्दन ऑनलाइन ऑलमाइटी फैम, आ जाइए सब लोग. यहाँ पर चेल्सी लाइनअप विल बी आउट एज वेल एज मैन सिटी लाइनअप इन जस्ट अ कपल मिनट्स. लेकिन आई नो मल्टीपल मैचेस रनिंग, और हो जान में जान आ गई देख करके पेट्रोविच शुरू कर रहा भाई. रूमर्स आ रहे थे दैट पेट्रोविच माइट नॉट स्टार्ट, बट पेट्रोविच इज बिगिनिंग. ये था हमारा प्रिफर्ड लाइनअप. अब मैं डालने वाला हूं स्क्रीन पर व्हाट इज द एक्चुअल लाइनअप चेल्सी अवे टू मैन सिटी एट द एतिहाद. गाइस, पेट्रोविच इन गोल, मालो गुस्टो स्टार्टिंग एट राइट बैक, Disasi Colwell center back as we expected, Chilwell captain at left back, Caicedo, Enzo, Gallagher की तिगड़ी in the middle with
Palmer, Jackson, and Sterling. So there is literally no change, is what I'm understanding, apart from the injury at the back. तो भाई Nicholas Jackson starts. I know यहाँ पर शायद, if I'm not wrong, even if he gets a 10th yellow card, he will be eligible for the Carabao Cup finals. हम सेमीफाइनल्स में कवर किए ही थे that I don't think those cards carry over to Carabao Cup for the semi-finals and finals. I might be wrong. People might correct me in the chat. Absolutely. लेकिन हाँ, मुझे ये लगता था कि भाई आज एंकुंकू, कंसिडरिंग दैट लाइप्सिक के लिए जब वो खेला था अगेंस्ट मैन सिटी, भाई हैट्रिक मारा था भाई. आई नो इट वाज इन अ लॉस, एतिहाद में हैट्रिक मारा था. तो सर्टेन नाइट्स कैन नॉट बी फॉरगॉटन, प्लस द फैक्ट दैट ही वो स्टार्ट नहीं कर रहा लास्ट दो मैचेस से. आई नो कहीं ना कहीं मतलब वी आर इन अ विनिंग रन फॉर द लास्ट टू मैचेस. I know that we have a Liverpool huge game coming up, which is the Carabao Cup final, the game of the season for Chelsea अभी के लिए. But ये भी important है भाई, ये भी must not lose है. And Nkunku has a natural ability to get that goal. कहीं ना कहीं chances कम मिलने वाले आज away to Etihad. So I don't agree with that starting lineup in terms of the forward line, but Sterling Palmer मैं expect कर रहा था absolutely. Gusto is fit, yes, he's fit, absolutely is fit. लेकिन अगेन गाइज, बिग अप टू एवरीवन गाइज. मैं देख रहा हूँ जब तक टारगेट नहीं डालू स्क्रीन पर होते नहीं लाइक्स. बिग अप टू जनता जनार्दन भाई. अगर सिंगल पर्सन डज नॉट लाइक द स्ट्रीम, लेट मी नो व्हाई. डजंट टेक अ बिग अप टू एवरीवन. लेकिन लेट्स हैव इन ईच एंड एवरीवन हियर. बारसा लेजेंड मार्कस also scored the winner against City. Yes, करेक्ट आंसर भाई, करेक्ट आंसर. मुजाहिद भाई ने बोल दिया इन द चैट जो मैंने पूछा था क्वेश्चन. द लास्ट चेल्सी प्लेयर टू गेट अ विनर इन द प्रीमियर लीग अगेंस्ट मैन सिटी was Marcos Alonso in 2021 guys. Yes, मुझे याद है जिएश और मार्कस अलोंसो स्कोर किए थे. Ironically the third goal was from a current Chelsea player and ex City player obviously Sterling. और उसके पहले भी आई थिंक एफए कप में हम जीते थे 1-0, दैट जिएश स्कोर्ड एज वेल. और उसके बाद में ऑब्वियसली काई हावर्ट्ज स्कोर्ड दैट विनिंग गोल इन द चैंपियंस लीग इन पोर्टो. लेकिन उसके बाद 7 कंसेक्यूटिव भाई सामना किया हमने नॉट अ विक्ट्री का अगेंस्ट सिटी. तो भाई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. that's something जो हमें सोचना पड़ेगा. दैट इज द मेंटालिटी. हम बात करेंगे टैक्टिक्स के बारे में एज वेल. कप फाइनल में भी स्टार्ट नहीं करेगा पॉच बोल रहे गौरव इंकुंकू को. भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज एन इश्यू गाइस. मतलब हम पूरा सीजन बोल रहे थे भाई इंकुंकू कहाँ है, इंजर्ड है वापस आएगा. अब भाई इंकुंकू आया है तो I don't know what to say. I really don't know what to say. Guys, what do you think about it? What are your expert comments? Let me know in the chat. Again, guys, big up to the chat. यहाँ पर एक सेकंड दीजिए, मैं क्विकली मैं डाल देता हूँ स्क्रीन पर इन अ बेटर फॉर्मेट सो दैट आप लोग को बेसिकली दिखे 11 क्लियरली. बेंच पर ऑब्वियसली है चालोबा who just made a comeback from injury. Alfie Gilchrist is there in terms of defense क्योंकि Thiago Silva is obviously not fit. We have Samuel Smith as well, by the way, another player there. Having said that, Cassidy, Madueke, Mudrik और Nkunku है बेंच पर. Unfortunately, कार्ने चुकुमेका का इंजरी हुई थी तो that is where we basically expected it. लेकिन सिटी लाइनअप में भी आ रहे. एक सेकंड दीजिए मुझे, just a second guys. Okay, मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ. Just making sure. I think McKyle is also joined in the chat. Sorry, in the panel. I'll just add him as well. लेकिन मिकाइल बिग अप यार, क्या हाल है भाई? व्हाट्सअप मिकाइल. बिग अप ऑलमाइटी दोस्तों, क्या चल रहा है? ग्रेट टू सी यू मैन, ग्रेट टू सी यू एज ऑलवेज नो मैटर व्हाट अप द चेल्स. लेकिन मिकाइल, ब्रेकिंग न्यूज, इंकुंकू भाई येट अनदर थर्ड गेम इज नॉट स्टार्टिंग. The first news is that breaking news, and of course we'll talk about the tactics and whatnot. काफी सारे भाई मैचअप सिटी का लाइनअप भी देखेंगे. But first reactions first about obviously injuries तो थे ही हमारे, लेकिन इंकुंकू नॉट स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड और नो? यार एक सब आजकल तो सब कुछ ही एक्सपेक्टेड है. हमारी तो किस्मत ही आजकल चेल्सी की ऐसी है कि वो कॉइन टॉस करो कौन सा चेल्सी विल शो अप, एंड कॉइन टॉस करो कि इस वीक की इंजरी क्या होगी. दिस इज जस्ट द वो हार्ड टाइम्स आए हुए हमारे सितारे गर्दिश में है, या ग्रे क्लाउड्स हैंगिंग ओवर आवर क्लब एंड अस फैंस. तो बस ठीक है, हम वी आर सपोर्टिंग आवर क्लब थ्रू थिक एंड थिन. इंकुंकू करे स्टार्ट ना करे, चक्वमेका करे स्टार्ट ना करे, वी विल सपोर्ट आवर क्लब, राइट? दैट्स द स्पिरिट. आज का थीम यही है कि इट्स गोना बी अ रफ गेम, टफ गेम. ठीक है, होपिंग फॉर अ परफॉर्मेंस. एटलीस्ट रिजल्ट मिले ना मिले, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो मेरा ख्याल में दैट विल बी माय पर्सनल सेटिस्फैक्शन. लेकिन ऑब्वियसली बीइंग ब्लू, वी वांट द चेल्सी ब्लू टू डोमिनेट टुडे.
बिल्कुल बिल्कुल भाई, मतलब अगेन दैट इज फुटबॉल। मैं काफी मतलब अगेन मतलब सोशल मीडिया इज अ थिंग, वी ऑल नो दैट मिकाइल, बट आई एम सेइंग 6-1 फाइनल दोस, मतलब सारी डेज। और आयरॉनिकली मैं बोल देता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी के सीजन में वी लॉस्ट अ बैड मैच बट वी आल्सो वन 2-0 इफ आई रिमेंबर राइट। बट हैविंग सेड दैट, मतलब that is football, right? Matlab, if Wolves can do well against Man City, for example, of course a Chelsea can, भाई. That is the Chelsea mentality, right? We know what we are, but at the same time, हमें grounded भी रहना पड़ेगा. It is away at Etihad. Do you think Sterling has been picked for that reason alone? The fact that he knows Etihad and the fact that he got better off Kyle Walker in the first leg? आई होप सो, या उसकी हालांकि लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस के बाद तो अब मेरा उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट थोड़ा सा इट्स शेकन. But he has the brilliance in him. If he can find a motivation to show up on the day, he has the ability single-handedly to turn a game. कम शो करता है, लेकिन we all know कि he has the ability. उसकी problem is consistency and sometimes motivation. So I want to see a positive game from him. I want to see him passing to whoever is open with the ball. थोड़ा सा वो selfish हो जाता है ball पे कभी कभी. So I want to see कि भाई he's putting in balls in behind अगर chance मिले. And I think हमारी जो सबसे बड़ा हमारा जो challenge है वो हम we are ourselves our biggest opponent because we don't take our chances. तो जो हमारा चांस बनता है आज, कैन वी कैपिटलाइज ऑन इट, आई थिंक उस पे गेम आ जाती है. और अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो उसका आंसर क्या है. सो वन कैन ओनली होप, वन कैन होप कि हमारी जिस तरह 4-4 रिजल्ट हुआ, तो वी हैव द एबिलिटी टू पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट. गैलेगर के आपने गोल्स देखे पिछले कुछ मैचेस में, ही स्कोर्ड. एंड आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हमारी ओनरशिप में क्या मेंटल ब्लॉक है कि दे कैन नॉट गिव हिम कॉन्ट्रैक्ट. ये चला गया तो पीछे कौन रह जाएगा. बिकॉज ठीक है, उस ही इज नॉट द मोस्ट स्किलफुल ऑफ प्लेयर्स, लेकिन इफ ही कैन गेट इनटू दैट निक अगेन, जो कि ये पहले क्रिस्टल पैलेस में भी था और हैड द नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स एंड असिस्टिंग, राइट. तो अब आजकल वो ही इज पुटिंग इन अ शिफ्ट फॉर द मैनेजर फॉर द टीम टू बी अ डिस्ट्रॉयर टाइप ऑफ अ प्लेयर. लेकिन we saw okay when push came to shove, he scored a few goals okay, they weren't the simplest of goals, they weren't the simplest of chances. He just found a way to put it in the back of the net, and that's what you need in like वो कहते हैं ना, जैसा क्रिकेट Instinctive में वाला कहते हैं चाहिए. ऑलराउंड, एक ऑलराउंडर प्लेयर होता है that just knows how to get it done. तो ये फुटबॉल में भी इसी तरह कुछ ऑलराउंडर प्लेयर्स होने चाहिए जो कि just get it done. It doesn't have to be the prettiest, doesn't have to be the best technique. As long as the ball gets into the back of the net, I don't care how it went, whether it went off the shin or the knee or the shoulder, as long as we get the goal, right. और वो मुझे थोड़ा सा नजर आया वो गैलेगर के गोल्स में कि he just found a way to make it happen, right. And that's what we need now. We just need players that can find a way to take advantage of our chances. Wastefulness now. अब मैन सिटी के खिलाफ खेल रहे हैं और 20 चांसेस निकाल के 0 गोल्स करके आगे, तो दिल ही खराब होगा ना हमारा भी, राइट. सो आई वांट कि कम चांसेस हो बेशक, लेकिन लेट्स मेक कैपिटलाइज देम होपफुली. बिल्कुल बिल्कुल. By the way, big up to the chat, guys. Again, I would request each and everyone to smash that like button again. Mikhail, hope you ho in the chat. I've also invited another Chelsea ultra, bhai. Mikhail, if you remember when I had the honor of called by Chelsea TV, I was actually there, and we met, of course, a current Arsenal player who, by the way, was scoring many goals today, and of course Chaloba. So Debojit, I think he's trying to set up, and let's see if he can make it. But because he's not regular, but लेकिन मैंने link भेजा, hopefully he'll join as well. Big up to Debojit as well. Abhinav, bhai, big up to you as well, bhai. Abhinav has gifted a Almighty Blues FC membership. Thanks, Abhinav. Always helps the channel, no matter what. And again, congratulations to the member who's become a new one at that. लेकिन मुझे DM करिए नया member जो भी बना है. लेकिन नो इंकू को अगेन सांगने was the point of having him then again. यहाँ पर मिकाइल ने एक बहुत अच्छा चांस बात बोला है. टेकिंग आर चांसेस, ठीक है, बीइंग इंस्टिंक्टिव. वहां पर जो फॉर एग्जांपल गैलेगर ने दिखाया इन द रीसेंट मैचेस, और मे बी इवन एंजो आयरॉनिकली हैज इंप्रूव्ड देयर, टचवुड, कंसिस्टेंसी इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर चेल्सी. लेकिन मिकाइल, कमिंग बैक टू द इंकुंकू पॉइंट, the fact is we are away at the Etihad. We know that we will not get as many chances as we got at Stamford Bridge against City, right? Although, I know that tactically बात करें तो I don't think we can be on the back foot. We have to play like a highlish line, right? नहीं तो हम we are doomed, right? Because in the final third City are crazy. But less chances होंगे तो Nkunku का conversion ratio is obviously far better than arguably Sterling भी, if not Jackson, for sure. यस, आई थिंक वो बेंच पे बैठ बैठ के ना उसको अंदाजा हो गया कि यार जस्ट पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट गाइस, व्हाट आर यू डूइंग.
So sometimes, वो perspective आ जाता है थोड़ा सा from watching your team play week in week out, but not being able to compete, participate. कि यार, sometimes we overthink it, and I think वो energy चाहिए हमें. Hopefully he can come off the bench and be an impact to the game as well. But it goes for everybody, man. If we play as a team, right, and if we play to a positive mindset, obviously you're playing Man City, so you have to do something, right? You have to. You cannot just say, "Okay, we will play our game." You have to kind of mitigate for their strengths as well. But yeah, we need to not get too distracted in trying to chase them or their style. थोड़ा सा अपना style भी we will have to, जिस तरह आपने बात की कि there were positives and we need to kind of keep those in mind. So I think कि हमारी जो wide the width है, that will probably define how the game goes for us, right? Are we able to bomb forward when we get the chance? And then are we getting caught out of possession when we do that, right? So वहाँ पे I think game will kind of define itself. But it will be interesting to see Caicedo, Enzo, how they cope, because they will be under the microscope today again. Because City will push all the buttons and poke for all the weaknesses in that pivot. यहाँ पर ईश्वर का कमेंट जो है, if you want to get something, we just have to sit back, compact, and just finish our chances in counter. On the other hand, Fabregas has told exactly the opposite. McKyle, where are you? यार मुझे फैब्रिकास का नजर नहीं आया, लेकिन मुझे फीलिंग यही हो रही है कि अगर हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए इन डिफेंडिंग, तो वी आर वेस्टफुल इन आवर चांसेस एनीवेज, Basically, तो I'll मुश्किल just हो sum it जाएगा. up. Basically, what he said is that what I just mentioned, कि the fact is, अगर Chelsea sit back ना, and we kind of call Man City into our box, in the final third, Man City are basically better than most teams, if not all. ठीक है, तो हाँ, वहां पर we are calling trouble. So the only way to kind of beat or even get a result in terms of a draw against Man City is the fact that we have to try and basically attack and surprise them. बिल्कुल, टेक आवर चांसेस. बात वहीं पे आ जाती है कि एज लॉन्ग एज वी टेक आवर चांसेस, वी शुड बी ओके. सॉरी, मैं अपना कैमरे का एंगल जरा बदल कोई लूं. नहीं, कोई नहीं. सो वही बात आ जाती है कि हाउ विल वी टेक आवर चांसेस बाय प्लेइंग लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट. एक आउटलेट, we need to not bomb forward all at once, but at least one flank should have the liberty to go forward if given the chance, and make some overlapping run, try to get to the byline and cut back. The basics, right? And if we find an opportunity to make them run towards their goal, I want to see us crossing that ball in and somebody trying to do something with it, as opposed to cut back, as opposed to cycle the ball back. Every time we take the ball, we cycle it back because we're so scared that we're going to give up possession and they will counter. Okay, we'd rather just keep the ball and go back all the way and then come back. So वो थोड़ा सा bravery दिखानी होगी in some moments. It's a big occasion, but we showed that, if we can find the energy and if we can find the inspiration, we can go toe to toe with them on the day. I'm not saying across the season, like on a day, maybe we can match their energy and maybe we can give them a run for that result today. So lots of interesting. अब उसका I don't know lineup आया कि नहीं आया, आपने लगाया है अभी मेरे ख्याल में lineup. हाँ, मैं वही मतलब बेसिकली पेट्रोविच, गुस्तो, डिसासी, कॉलवेल, चिलवेल, यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, मतलब सैंचेज नहीं है गोल पर. उस पर क्या टिप्पणी? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर हैप्पी विद पेट्रोविच, राइट? हाँ नहीं, पेट्रोविच ऑन फॉर्म फिलहाल तो कोई मसला नहीं है. He is fine. No issue. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि Poch might shock us by basically start Sanchez, and I'm happy that he's continuing with Petrovic. Caicedo, Enzo, Gallagher, three midfielders against start. Palmer on the right hand side, Jackson up front, Sterling on the left hand side. That's how the lineup is. So I think kind of expected. On the bench though, again आज bench थोड़ी सी weak लग रही है, but again मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कोई नहीं है. Man City का lineup भी डालते हैं guys. I think 20 minutes in the stream I forgot to put Man City's lineup. Tactically हम बात करें इतना, हम एक साइड का बात कर रहे हैं, Man City का perspective से देखते हैं एक सेकंड. भाई, what is this lineup guys? I think they are going to be basically, I think they are going a 3-2-4-1. That's interesting. I don't agree ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो होने वाला है. Although Akanji has played fullback before, I think return leg में, rather first leg में, I think जो हुआ था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, Akanji played in midfield with Rodri. Correct me if I'm wrong guys, 4 all में.
तो अकांजी प्लेइंग रॉड्री अगेन येट अगेन मुझे लगता है with Nathan Ake being left centre back, Diaz being centre back and Walker being right centre back, Doku, Alvarez, De Bruyne, Foden, why they are playing an attacking lineup 3-2-4-1. लेकिन that tells me that there has to be a lot of defensive work rate needed by Doku and Foden. और वहां पर अगर अपना विंग जो है with Chilwell and Gusto, मतलब we can counter Mikhail. There is some opportunity there, and that's the thing. This will be not just uh, a battle of the players; it will be a battle of tactics as well. क्योंकि Yeah. Pep is Pep, right? So वो not just the pre-game preparation होगी उसकी, बल्कि in-game tweaks भी होंगे उसके. So that's something that makes me nervous because Pochettino not necessarily known to be the most proactive, yeah, the most timely, in-game changer of tactics. So वो देखना पड़ेगा हमें कि how the game progresses. It could be a positive, it could be a negative, either way. But we're playing Pep, so it is what there is no tougher opposition in world football than playing one of Pep's teams. So we have to just go there with the basics in mind. Uh, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि they are take I don't know if they're going to start the way they are 4-1-4-1, so it's almost looks like it's a 4-3-3 type of situation. हाँ क्योंकि हो उसमें भी सकता है ये, लेकिन क्योंकि अकांजी हैज प्लेड बोथ नोइंग पेप एंड हिज टैक्टिक्स एंड बेसिकली इज मतलब जो ड्रॉ करता है बोर्ड, यू ऑल नो दैट राइट. लेकिन हाँ, मुझे लगता है दे माइट गो 3-2-4-1 व्हिच इज व्हाट दे काइंड ऑफ स्टार्ट एट द लैटर पार्ट ऑफ द सीजन, जो लास्ट सीजन में हमने so they'll देखा था. morph between the two. You're thinking. तो अकांजी विल बी लाइक एग्जैक्टली, तो अकांजी विल बी काइंड ऑफ चेंजिंग पोजीशंस, डायनामिक रोल रहेगा उसका, लेकिन रॉड्री विल बी दैट मेन गाय सेटिंग Gusto, देम. if Gusto can have a strong game, we can cause them problems because Chilwell is also dangerous. So if Gusto can get the ball down the line and cross it for Chilwell or anybody else making a run into the box, we can make them. Or it looks like there is some opportunity on that side for sure. बिल्कुल बिल्कुल. ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्स प्लेयर्स भाई. हैविंग सेड दैट क्विकली अगेन मैं दिखाता हूँ बेंच का कंपैरिजन करें तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड दैट कोवाचिच इज नॉट गेटिंग रेगुलर स्टार्ट्स. मतलब मिकाइल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कोवाचिच गोइंग टू सिटी? जस्ट ट्रॉफीज क्या? सीरियसली आई नहीं डोंट ठीक है. अंडरस्टैंड. ही वाज द मेन गाय एट चेल्सी राइट? I think नहीं मगर the thing is he did everything he needed to do at Chelsea. I think it was time was right to move on. ठीक है, वो Premier League rival भी कहना आजकल तो is not really accurate. लेकिन एक Premier League team के from Chelsea to another Premier League team, it does kind of make us kind of wonder कि कहीं और चला जाता शायद. लेकिन ठीक है, he paid his dues over the years. उसको criticism भी बहुत मिलता था कि he is not the complete profile of player. But you could argue that in today's lineup, can he not fit in? I don't know. Like I think he could. मतलब डेफिनेटली कुड हैव प्लेड नेक्स्ट टू रॉड्री भाई. मेरे ख्याल Yeah. से मतलब 3-2-4-1 अगर खेल रहे हैं, अगेन विल वेट एंड वॉच व्हाट एक्चुअली पेप इज प्लेइंग. हाँ, हो सकता है द फैक्ट इज ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा डिफेंडर ऑन द पिच, क्योंकि knowing that Gusto and Chilwell are like proper traditional fullbacks rather than center backs or playing fullback. And again, thanks for Poch to finally agree to do that. I know injuries have helped कहीं ना कहीं, लेकिन I think maybe Guardiola is having an extra defender for that reason, which again is respecting Chelsea. But hope Chelsea shows the magic. बोल रहे शुभम यहाँ पर. Again guys, we will cover a lot of other news as well, इसलिए हम आते हैं जल्दी in the pre-match. A lot of to be discussed as well. Forza Barca, Foden, Alvarez, KDB, Rodri, look at that midfield, unbelievable. And Bernardo Silva is on the bench. Bhai, Mikhail, remembering, we will go a little bit nostalgic. Remember those days when you used to have Joe Cole on the bench? Man City ho gayi, but Bernardo Silva on the bench, bro. yeah, yeah. No, it's a great lineup. It's a great team roster. It is what it is. It's boys versus men in some ways, but I think we shouldn't underplay ourselves as well. We can make them hurt. ठीक है, they can hurt us too. So it will be a contest. I think we're going to miss Badiashile today because I think Haaland ki physicality ke against he would have probably been a nice foil. But it's sometimes these are the type of games जहाँ पे you have to stand up and be countered. So Colwell has an opportunity today to do that, to kind of put in a good strong performance and try to
try to deal with, because if you can handle Haaland, you can handle anybody. So can he बिल्कुल. do that? I'm sure it's just a matter of focus. अगर वही वाली बात है कि वो लेफ्ट बैक खेलता रहे, so उसकी positional sense कहाँ पे है, वो we'll find out today. He'll be tested. Again, Ishwar, I hope that the results go away. Having said that, it's Man City at the Etihad. Matlab, with all due respect to our own club, and we love it. But let's see how it goes. Again, that's the Premier League for you. Having said that, थोड़ा बहुत I know we'll come back to the tactics in a minute. लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने बोला था एक्स प्लेयर्स के लिए मतलब मैकेल मैंने एक पोल डाला इंटरेस्टिंगली. I know that अभी के लिए तो obvious answer is that KDB is the biggest regret that Chelsea will ever have. That is for sure. At least मतलब for the last few years, for the last decade and a half, right? लेकिन मतलब once they finish their careers ना एक early prediction हो जाए भाई. What do you think? मतलब will it be eventually that City will regret more or Chelsea will regret more still? किसके लिए? Sorry, can you repeat the Cole players? Palmer moving to Chelsea from City. Of course, when he moved, people said that basically आप देख सकते हो tweets जहाँ पर a lot of people gave hate that Chelsea paid so much etc. And obviously what Cole Palmer is doing. Again, मैं यहाँ नहीं पर नहीं यार, I do Cole not think Palmer has so. been a fresh addition to our lineup. It's Correct. too soon to say end of career क्या होगा क्या नहीं होगा, many years to come. But ये है कि of the many potential based signings, I think Cole Palmer is one of the best return to value. It wasn't a massive spend. Like if you compare what you paid for Cole Palmer to what you paid for Mudryk, for example, so the return on investment is hands down. It's a no argument there. It's a much better transaction. So बाकी ये है कि it's Premier League में unfortunately या fortunately the opportunities are such that young players don't want to sit and wait for their opportunity in their home teams. So Chelsea has had to let go so many players over the years, right? Because they were young, they were being promised starting time at other Premier League clubs, and they just could not afford to wait and let those opportunities. वो कहते हैं bird in hand is better than two in the bush. So कल को क्या होगा किसको पता? आज जो मिल रहा है कम से कम वो तो पकड़ो ना. And you have to understand that these players are full सही बात. time dedicated to football as their careers, right? So there is obviously the notion of paying the bills and helping return some of the investment the families have been doing all their lives as soon as they can, right? So when a Brighton or a Wolverhampton or whatever it is that comes and offers you a game time, so Chelsea offering starting time to Cole Palmer, it's a no-brainer. I think Cole Palmer knew that Chelsea there are problems, there are issues, and I have a decent chance of fighting for a top starting position up front. And he hasn't looked back, and we've enjoyed him. So मेरे ख्याल से उनके लिए it's going to be bittersweet in the sense कि ठीक है, they got some money out of an academy player without having too much of experience behind him. But these are the moves sometimes in football. One has to kind of take the good with the bad, and for once, it worked out for Chelsea. If you look at all the signings the new owners have done, you cannot say that about majority of them. Probably 2/3 have not panned out as well as they would have hoped, but it's nice to see some that do. Yes, absolutely. Again, Gustav, Sanket and others who have joined in by 35 minutes into the stream, we have discussed the lineup tactics already briefly, and we can come back to it while we are trying to, basically just talk about current topics in terms of basically, Man City and Chelsea with a little bit of more Premier League as well. भाई एक चीज मैं दिखा देता हूँ. In the past, I know certain Chelsea managers also tried doing this, लेकिन पेप कुछ ज्यादा ही करता है भाई. मतलब his statements, Chelsea have everything, intense qualities, difficult to find a Chelsea player who loses the ball. And then what else? I think he said Chelsea are an exceptional team. They are one of the toughest we'll face this season. मतलब इतना मतलब it's almost funny to me. I know that I would love my club and I say I would like to believe that's true, but actually it's not true, right, McKyle? What Pep says sometimes, मतलब you mind really think games. कि It's भाई mind games. what? वो चढ़ा रहा है कि uh, ऊपर चढ़ाओ फिर उसके बाद slap them down. So, but I think we are smarter than that. We don't necessarily have to fall for that kind of talk. लेकिन ये है कि ठीक है, mind games है उसकी, like कोई मुकाबला नहीं है हमारा उसका, right? Pep's City are fighting for the title.
our Champions League holders. Chelsea are nothing, right, in this season in the by comparison. So वो कहे हम अच्छे हैं वो भी ठीक है, वो कहे हम बुरे हैं वो भी ठीक है, दोनों जायज है. But it's what we do on the day that will decide. बिल्कुल बिल्कुल गाइस look at who's also joined bhai matlab glad to have two Chelsea ultras bhai in the panel today. Debojit is in the house guys, and for people by chance I don't think he needs an introduction. Of course for OGs of the channel know that bhai this post matlab Debojit I know kind of reflecting the memories. Definitely it's part of the best moments of our lives, and of course McKyle and everyone in the chat, especially the OGs, are also to contribute with Almighty Blues FC getting the chance. But Debojit, matlab, I know it's been over a year. What have you been to up to? And this year has not been good for Apna club, bhai. Chelsea, absolutely, bhai, absolutely. Still on my front view. Some great memories. Lekin the last year after this happened, why it has not been great. So what have you been into? I know that social media bolo, yeah, basically जो neutrals बोलो या opposition बोलो, rivals बोलो, they are really basically making sure that मौके पे चौका मार रहे, or they are making sure that Chelsea fans are knowing what they are facing, right? But we have seen our club when we were not so good as well as great. Now how do you feel right now? जैसे मतलब Pep is saying that Chelsea players are right up there. There is some truth there, so there's not some truth there. Lekin what is your idea about the current squad, generally speaking, or of course, आज का lineup भी? Before I start off with the current situation with Chelsea, the managerial part, the statistics, the team, the physios, and everything. First of all, warm welcome to everybody present out here, McKyle and Ankit, both of you guys. Once again, we are up against the lighter shade of blue and the darker shade. That means Chelsea versus Man City, or the other way around. But what I will say that we have gone through some tough waters recently. Whether the change in the managerial part, the change of ownership, change of right now the new players, only one of the old players, that's Thiago Silva standing, and like his wife is just going all cylinders, saying everything that our heart feels. So the point is that what I feel is time lagega boss. जैसे even Didier Drogba said, I remember there was one like X tweet what he said, that we can see this team fighting alongside even what Petacek said, okay, 25-26. So there has to be a transition where Correct. we have to go through that phase of 24-25 season. We cannot expect this team to again start off going all cylinders, going all gun blazing, where we'll be in the top notch, like clearing off with our CL points, top 4. नहीं हो पाएगा यार. Transition लगता है. Even you saw, we always walk alone. Liverpool, उन लोग का भी they had a transition phase before they got in the new recruits. Actually, काफी लंबा था. People forget very easily. Or absolutely right. मतलब Liverpool, I remember. They had a tough one. Correct. Benitez definitely in the cup competitions he got them. Like in league में they were not there, and that's the reality of it. For a good And you while they were cannot not there. compare, if you are comparing Carling Cup and League Cup, जो भी नाम हम देते हैं, ultimately it's a like it's not the PL part. It's like you're trying to compare somewhere when we're talking about AFC Cup in the Asian part, where people are playing in like Kolkata League or the IXL with the AFC Cup standards. You cannot do that. You have to wait. You have to go through the transition where the team needs to gel up. They have to understand they are filling in big shoes. They are filling in the places of, I think somebody is writing something about the old veterans leaving the club, big name. मतलब बारसा है ना वही ट्रांजिशन फेज में ही है वापस से is what it looks like, what they have been actually. मतलब if you remember again, I know football और transfer window especially is a very मतलब बोलते हैं ना short term, मतलब change होने का बहुत मतलब short term लगता है, and that's the thing about transfer window in particular. तो sometimes you have to be patient because Barca actually won a league and we all forget so soon. मतलब it's just literally a few months back they won a league यार. People forget, but the reality is वो transition वापस होना ही, क्योंकि it's still a youngest squad. और Chelsea का तो भाई I know that is also part of the thing, right? Like McKyle, we have been discussing over the last few months, right? That अपना जो I know a lot of directors and we'll be talking about that as well, that why are we targeting again, मतलब with all due respect to Brighton and Southampton and all those things, मतलब it's fine, लेकिन you cannot have each and everyone from there, क्योंकि
it depends on your recruitment as well. Ab Tuchel dekh lo, Tuchel is suffering because of maybe partly his tactics, partly his recruitment as well. You can argue, right? Because Bayern's recruitment was a different strategy when Budget Tuchel was constraint not around. again. Yeah, absolutely. लेकिन talk about transfers, guys. Again, we are coming back to the tactics and the lineup जो आप देख रहे हो screen पर. लेकिन big news, McKyle obviously यहाँ पर people putting in their thoughts. Mbappe looks like he's going to Real Madrid for all we know, भाई. Unless basically Burnley does the madness जो होने नहीं वाला. Liverpool भी यार, even Liverpool fans would say that as much as they would like it, they're not getting Mbappe. So that kind of puts Ozyman to PSG wala situation as well. McKyle, again, a lot of people saying that they would rather go with a winger in PSG. Chelsea में, मतलब, do you agree with this William Gallas statement that Ozyman will sign for Chelsea next summer? Personally, I don't know Victor, but I noticed a resemblance with Didier Drogba. The latter was strong in the penalty area, but Ozyman is even faster. यार ऑनेस्टली स्पेकुलेशन है सारी, तो मैं क्या बोलूं. दोनों आ जाए चेल्सी, आई वुड लव इट. बट होता नहीं होता. व्हाट द ओनर्स वांट टू स्पेंड. हमारा फाइनेंशियल फेयर प्ले का प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा आगे जाके. हम थोड़ा सा अभी हम वी आर इन काम बिफोर द स्टॉर्म वाले फेज में है हम. आगे जाके काफी गड़बड़ होने वाली है. सो इसीलिए इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया है ऑलरेडी, कि अगले सालों में हमें शायद ना करने का मौका मिले. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि they will also have to sell a few players, क्योंकि there's already talk कि June 30th is a critical date and they have to have a certain number of certain amount of money generated. तो किसी ना किसी को तो बेचना पड़ेगा. अब वो किसको बेचेंगे और कितनों को बेचेंगे, and that will create in terms of requirements on our side. स्टर्लिंग का नाम आ रहा है, मुड्रिक का नाम भी आया है शायद. So one doesn't know how it's going to pan out. कौन जाएगा. वो जो भी बिकेगा they will have to sell, unfortunately. गैलेगर हो या कोई हो, they will just have to bite that bullet for now, and then hopefully be able to get somebody in. कोई बड़ा प्लेयर चेल्सी क्यों आएगा इस वक्त, मुझे आप ये बताओ. लाइक एन एम्बापे और एन ओसिमन, व्हाई वुड दे कम टू चेल्सी, राइट? मुझे तो इस बात का नहीं समझ आया कि लाइक मतलब what are unless we there is offering. a personal connection or something like that, right? मतलब again, that's the only understanding जो 1% chance है about Ozyman coming. अफवाह तो But बहुत फैलेगा ना, like अफवाह तो बहुत फैलेगा कि this person is going, that person will be like, people will have their own but we sets of, have to देखो, that's why generally मैं खुद बोलता हूँ, देवोजीत, मतलब for OGs of the channel, McKyle knows it, people in the chat, members especially know it, as well as OGs subscribers. I always say that do not believe the transfer news which comes between say March and April. You only believe say before and after वाला चीज, क्योंकि March April is almost like league dates. इस बार थोड़ा different है because let's be real, Mbappe वाला is not like a small thing. Mbappe वाला I know last 3 years से जो हो रहा है वो ऐसी हवा में हो रहा है, लेकिन finally this time Mbappe वाला is actually moving, right? And that will create a domino because there are quality number 9s available इतने नहीं है मार्केट में, especially Chelsea का, जैसे मैकाइल ने बोला that what is the motivation for a player to come to Chelsea if you're like top notch, and that's a fact as much as we love our club. And that's why I think यहाँ पर से अपना फ्रैंक सिंक्लर ने बोला भाई go for Ivan Toney, because anyway Victor Osimhen is not realistic. Go for some Premier League proven player. That's the right profile हमारे लिए जहाँ पे हम हैं in the league, and with regards to trying to get into Europe. That's the right kind of profile. A player that needs to prove themselves, and a club that needs to prove themselves. And just one more thing I want to add is the only thing that can probably entice a good player to give up the absolute top level club and come to Chelsea in the summer, let's say, is maybe the kind of manager that Chelsea has. So sometimes a manager can inspire good players to join a project, even if the project itself doesn't look like the most obvious choice, or the club doesn't look like the most obvious destination. A prime example is कि Hazard का वो ओबी मिकेल पॉडकास्ट से स्निपेट आया कि चेल्सी तो मेरे रेडार में भी नहीं था when I was at Lille and I was looking at Premier League. I was visiting Man City, I was visiting I think Liverpool, I was visiting Tottenham. उस जमाने में Tottenham were in Europe and in Champions League. तो कहता Chelsea तो गया भी नहीं मैं. Chelsea won the Champions League that year, and that's when he said okay, we'll be joining the champions of Europe. So that can change sometimes, Hazard. So and उस जमाने का Chelsea
was a much more attractive destination than आजकल का Chelsea, and even then he was not considering it. Right? वो तो हम जीत गए चैंपियंस लीग, तो he said okay fine, you know, this will be a वर्ल्ड कप कैप्टन से हमारे। हाँ, तो भाई अलग वो ही क्या लेवल लेवल था और ये अब क्या लेवल है, तो वो इट डजंट इवन मैटर। तो वही वाली बात है कि ठीक है, ये टोनी शोनी टाइप जो प्लेयर है, आई थिंक दीज आर द गुड प्रोफाइल, गुड फिट फॉर अस, क्योंकि वरना मिसमैच हो जाएगा। अगर आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी ले आओगे, उसकी बहुत बड़ी ईगो फाइट आ एक्सपेक्टेशंस जाएगी। होंगी, वो प्लेयर पावर शुरू हो जाएगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं अच्छा लगा। वी डोंट नीड दैट। टोनी के अपने मसले हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन टोनी इज द राइट टाइप प्रोफाइल ऑफ प्लेयर कि ठीक है, वो ज्यादा फूफा, ठीक है, ही विल बी अ हैंडफुल टू मैनेज, लेकिन मेरे ख्याल में नंबर 9 में थोड़ा सा वो एटीट्यूड प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज यू नीड इट, यू नीड टू हैव अ चिप ऑन योर शोल्डर टू ठीक है। टू हाँ, मतलब एक एज एज बोलते हैं ना, मतलब हाँ, वो एक होना चाहिए, एज वाला। जस्ट टू काइंड ऑफ टेक दैट एनर्जी ऑन टू द पिच एंड बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, लाइक वो जिस तरह हम कॉस्टा के बारे में कहते हैं कि वो लड़ाका था लेकिन वो हमारा हमारा था, राइट? तो वी डोंट माइंड कि वो जो भी करता था वो हमारे लिए करता था, इट्स ओके, राइट? तो हमें भी उस इवन टाइप का इवन यू प्लेयर मे बी वी नीड इट। एक एक मैच से रिमेंबर लाइक ही साइडलाइन वन ऑफ द मैन सिटी गाइस एंड ही स्कोर्ड सिंगल हैंडली व्हेन a pass of Fabregas. अरे भाई Fabregas या pass मैन, and Costa, you know, netting it back. काउंटर्स। बट तो वो एनर्जी जो होती है ना, दैट एनर्जी देन एवरीबॉडी एल्स फीड्स ऑफ एज वेल। hmm. And if we see statistically also, like right now this team needs to first win the domestic cups first. So if we don't get the confidence back, if they don't get in the zeal back that yes we can go on to win, भाई चैंपियंस लीग इतना आसान चीज नहीं है जितना भी सबको लग रहा है कि हाँ फाइन चेल्सी कर नहीं पा रहा है, वो टीम टॉप 10 कर नहीं पा रहे। We have gone through one tough phase, tough situation, tough changes of like managers and everything, वो सब छोड़ देते हैं। We have to get these players in a cohesive unit, उन लोग का माइंड एक तरह से चलना पड़ेगा। We have to understand this team needs to sync with the manager, जो मैनेजर आउटपुट चाह रहा है वो हमको पिच में दिखाना पड़ेगा। Statistics will not happen only by getting the big names, ऐसा प्लेयर लाना पड़ेगा जैसे एसियन was a player, he was a team player, अरे he भाई used to साहब, play किसको with the याद team। दिला दिया। यू नो व्हाट, आई हैव सम प्लान्स। आई नो अभी कितना 25 मिनट्स ऑलमोस्ट बाकी है। वी विल डू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी हैव टू अल्ट्रास इन द पैनल गाइस, वी हैव टू डू दैट फॉर श्योर। लेकिन आप रिजल्ट देख ही रहे हो भाई, क्रेजी रिजल्ट्स। न्यूकासल हैव ड्रॉन अगेंस्ट बोर्नमथ, मीनवाइल ऑब्वियसली आर्सेनल हैव बैश्ड बर्नली 5-0 अवे, एस्टन विला बीटिंग फुलहम जस्ट अबाउट 2-1, or West Ham got a red card in a 2-0 loss, or Tottenham losing to Wolves at home. So some great results. I know यहाँ पर chat बोल रहे भाई we could have been 7th etc. अभी के लिए just focus on getting a point or ideally a victory against Man City guys. आंटी 7th की देखा मूछे जाएगा। आंटी की मूछे होती तो अंकल होते भाई, वो वाली बात है कि होता तो क्या बात थी, लेकिन नहीं है भाई। अभी जो वी हैव टू गो अर्न एवरी सिंगल पॉइंट, एंड जब करेंगे उसके बाद जरूर वी विल गो एंड गेट द बेस्ट प्लेयर्स एंड गेट द बेस्ट ट्रॉफीज, कोई मसला नहीं है, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम करेंगे। बिल्कुल। पहले अभी नेगेटिव में है भैया, अभी ब्रेक इवन पे जाओ, 0-0 करो, मैच ड्रॉ करना शुरू करो, उसके बाद में चल या के हारेंगे। baby तो steps, step baby by steps. step, आई थिंक इफ यू baby step। थिंक अबाउट जोजे, इफ यू थिंक अबाउट जोजे, क्योंकि हमारा जोजे के साथ जो भी है, फॉर बेटर और वर्स, लव हेट जो भी कह लो, एक सेंटिमेंटल टाई है, क्योंकि जोजे हैड यूज्ड टू हैव अ वेरी क्लियर विजन कि उसको हर मैच में से रिजल्ट क्या चाहिए। सो ऑन अ मैच लाइक टुडे, व्हाट डू यू थिंक जोजे वुड अप्रोच द गेम? वुड यू अप्रोच इट टू विन? नहीं तो he will hit on the counter भाई। wow, you remember that crazy 2015 and 2017 Etihad वाले performances? I remember वो 2014-15 में the way he used Matic to kind of sit and basically एक counter में एक ball डाले और बस Ivanovic used to run ही विल उसकी प्री गेम टॉक होगी कि वी मे नॉट विन बट वी कैन नॉट लूज, correct right? So absolutely। first step is don't let them score. Second step is if you can do a break and catch them on the counter, by all means. So I'm just saying कि what are you expecting from the game as fans? थोड़ा सा rationalize करें अपनी expectations भी, कि पहला हमारा target होना चाहिए can we draw the game at least. Second होना चाहिए can we nick something. If it looks like we can draw it, then we have to switch gears and say okay, if we can draw it, maybe we can win it. So that's the opportunity we have to create. जिसके लिए आपको पहले हाफ में और and most of second half में you have to put in a lot of hard work. जिस तरह वो Conte कहता था, you must suffer. So we have to suffer, and if we can suffer and get to a point in the game जहाँ पे maybe a one goal can nick it or can nick a result at least. हाँ, तो let's play for that. लेकिन ये चीज मुझे Pochettino में भी नजर आती है कि sometimes he approaches games in a different way to what fans would like,
because he's trying to get into the second half at least before the team does something different. लेकिन होता क्या है कि ये भी प्रीमियर लीग है, अगले भी घर से खेलने आते हैं. So sometimes the game has already passed us by that time. तो वो that's the criticism as well. थोड़ा सा मैं उसको appreciate करता हूँ कि मुझे वो जोजे की झलक नजर आती है कि he wants to manage the game. वो कोई गंदा खेल रहा होगा उसको सब भी नहीं करेगा, उसको कहेगा नहीं तू खेल और you put in another 20 minutes, half an hour. येलो कार्ड तब तो भाई और भी रखता है. हाँ, फिर तो वो कहता है कि नहीं अब तो तू बिल्कुल या तो रेड लेके आएगा या फिर तू एंड में आएगा. बट आई एम सेइंग कि दैट टू मी आई कैन ऑलमोस्ट कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहा है कि ही इज बिल्डिंग कैरेक्टर एंड ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ सर्टेन मेंटालिटी in the game within the 90 minutes. लेकिन it's always, it doesn't work off. Sometimes it backfires. So we have to kind of, also have the ability to change gears and see कि okay यार ये तो गड़बड़ लग रही है. अब आपको लग रहा है कि अगर वो आपको if they're walking down one of the flanks over and over again, are you going to wait to go 2 goals down before you do something about it, or are you going to immediately change something, right? So that's the criticism as well. Pochettino will probably wait for a goal to happen, and by the time he waits for one goal to happen and gets a guy warmed up and ready to sub in, दूसरा भी शायद हो जाए. तो ये criticisms भी हैं थोड़े से उसके कि यार वो एक आपको नजर आ रहा है कि you're getting exploited in some part of the pitch. What are you going to do about it? So these are the, इसीलिए coach के लिए भी this is a big game. कि are you able to react in a timely manner? We Chelsea fans also, और एक sentiment भी यहाँ पे, we have always seen higher and fire things happening in Chelsea. एक बंदा कर नहीं पा रहा, he is not being able to just blow him off. तो उतना टेम्परामेंट भी है. लेकिन देबोजित यहाँ पर आई वुड लाइक टू पुट इन वन मोर क्वेश्चन व्हाइल यू से दैट, बिकॉज आप देखो तो यहाँ पर काफी लोग कमेंट्स में भी बोल रहे हैं आज के लाइनअप में is Pochettino not calling for it, क्योंकि if it can heavily backfire as well. You yourself said कि you need Nkunku, he's been missing half the season or more than half the season, or then Nkunku is available for 2 games against Man City where you don't have chances. Nkunku is your best finisher in the squad, plus it's an away game, or Nkunku with Leipzig, I know it's been a year and a half back or something like that, he scored a hat-trick at Etihad. So don't you think that's itself a big question mark in the way that Pochettino kind of manages his picks? This is one huge point. I'll just say, when I saw like Pochettino when he was in his Rooster days in Tottenham Hotspur, what he said, what he always what he brought into Chelsea was that he brought in his positive everything. Uska apna choice tha कि ये players चाहिए, but he didn't understand Tottenham Hotspur या उसका जो fan level expectation था in the Hotspur days is not the same that you will have in Chelsea. Because ये टीम अच्छा करते आ रहा था, they have been in top 4 CL खेलना आदत गिर गया था. Fine, chalo fine. We had a change of manager. We had you left all the players. You left Kepa. You left one of the best players. You sold off and you sent off multiple big names. Okay, fine. But you cannot imply the same statistics which you are doing, that you want to have confidence on your young players, you want to stay with them, but this is not that situation anymore. अगर नहीं चल रहा है, अगर है तुम्हारे पास अलग player, if you have the proper substitutes, fine, not in that game, maybe in the other game. You have a big game coming up, that's Man City or Liverpool or Arsenal. If you're playing with the top notches, you cannot think you're playing maybe a county club or maybe a club that's hovering on the 17 or 18 or who's waiting to go down the drain. You cannot do the same statistics, but game after game after game, even mentality, intent is basically part of it. क्योंकि आप जैसे यहाँ पर chat भी बोल रही है, no strategy, बंदा बैठे रहता है. That is very furious, because if you're seeing somebody's faulting, like in one match, if you remember, Zappa Costa was not playing well. Immediately he was given the time up to 60 minutes. नहीं कर पाया था, उसको हटाया था. We had double, even sub changes even after David Zappa Costa came in. तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा स्ट्रैटेजी 1 काम नहीं कर रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजी रखो, बिकॉज दूसरा अगर काम नहीं कर रहा है तो सब उसको भी पूरा चेंज करो. शफल द होल टीम. हारेंगे ना, मैक्सिमम क्या होता है, हार सकते हैं ना हम लोग, पर हार के उससे कुछ सीखो यार. सीखो. टाइम इज रनिंग बाय. एक पूरा सीजन चला गया, 1 ट्रांजिशन हैज गॉन ओवर. अगर अगला सीजन अगर हम लोग मिड टेबल भी रहेंगे तभी कुछ काम बनेगा. अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला सीजन 15-16 पे या फिर 11-12 पे स्टार्ट करेंगे, पहला 5-6 मैच हार गए तो और मोमेंटम और डाउन खाते जाएगा. कितना चेंज करो, कितना खरीदोगे? किसी को तो होल्ड करना पड़ेगा. 8 जन होल्ड करोगे, 3 जन सब करोगे, ऐसे चलना पड़ेगा ना. पर ये चीज नहीं आ रहा उसमें, वो 6-5 का रेशियो में चल रहा है. तो एनीवे, लेट्स सी.
बट I यार need to change वेरी वेल it. एक्सप्लेन बाय देबोजीत गाइस. मतलब पीपल ने जैसे आप लोग बोलिए मतलब वो जो बोला देबोजीत ने, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द मैनेजर मैनेजिंग द सिचुएशंस. एट द सेम टाइम द मेंटालिटी इंस्टिल करना पड़ेगा, वो आता है राइट फ्रॉम द मैनेजर. मिकाइल, कमिंग बैक टू द टैक्टिक्स, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं भाई, अंकुश आप पूछ रहे हैं, डू यू थिंक फोर्डन कैन इजीली पॉकेट चिलवेल? मतलब इट कुड बी दैट वे और इट कुड बी चिलवेल्स जे, मतलब वन और द अदर इज गोइंग टू बी द विनर. आज where will the match be lost? Will it be midfield, or you think that wings will actually be the difference makers? Um, for us, the opportunity, मेरे हिसाब से, lies in the wings. But you like you just indicated that also the danger can be the wings as well, right? So agar aapka Foden is bombing down and Kyle Walker is you know making runs and Chilwell definitely will have his hands full. मुझे Chilwell को इस matchup में देख के I am just wondering कि Chilwell will he be able to last 90 minutes? So that's my concern कि वो जब तक खेलेगा I think he will manage. But अगर वो पुल शुल हो गया trying to run back and forth, that's my concern in this matchup. So he will need support from Enzo. He will need support from Colwell. अब वो किस तरह play out करता है and how Pep will isolate him. पिछले मैचेस में भी हमने देखा कि Chilwell was being isolated and वो they were running past him. I think Wolverhampton था, they were running past him on at will. And then he worked on it in the next match. Literally, the winger was passing to himself. He would just pass the ball forward and outrun Chilwell to get back to it. Mikhail, you know what? I have, sorry to cut you, but I have a counter question इसी पर, क्योंकि you put a very good point that Chilwell needs help, especially against Man City, because of यहाँ पर chat अंकुश ने बोला है about Foden, for example, and they can easily get in behind with maybe two versus one. Or Jackson actually in the last two wins has actually done that. Well, to an extent that we don't see it, but people who actually watch basically the wings, Jackson ka work rate or link up, these are two things I think are real attributes of Jackson, as much as he's not a finished article. I don't want to say it. Well, we have not even discussed that. Why one hour into the stream, I just Good point. That's an excellent point. Jackson might be on left wing, Palmer might stay as a false nine, and Sterling might be a right wing. That makes a lot of sense, actually. In that context, that makes a lot of sense. Yeah, but Ankit, there has to be one more very key factor. If you see, Man City has a very experienced contender out here. They have Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne will come in where Enzo and Gallagher is playing. So if he pockets both of them, we will not have the balls coming through from the mid to the nine, whether you play a false nine or whether you play a center half. So if वो तो बात आपकी सही है 100%. The midfield pivot will have an examination today. They will be under the microscope. Or अगर वो first time, if Enzo can get the ball out from his feet first time, and we can then use that momentum to make them run towards their own goal. That's what worked for us in the previous games as well. We were fluid in our switch of play. We were not ponderous. तो उसमें फिर we can also try to create problems for Man City as well. लेकिन same thing कि वो pivot में जहाँ Caicedo और Enzo operate करते हैं, a player like De Bruyne can score from that distance as well. Forget about the passes that he will feed to the front line. So it will be an interesting battle in midfield, in the center of the park. 100% हमारा जो danger है वहीं पे है. Because these guys are too fast, these guys are too strong, and they are leading. But अगर हम as a team with awareness खेलें, कुछ पिछले matches में snippets I think Couch Critic ने अपने channel पे दिखाया था कि when one player stepped out, I think it was Chilwell, he stepped out into midfield, so Gallagher went to defend because he had cut inside. तो ये हमें awareness चाहिए होगी throughout the pitch. का role वो play कर रहा था rather than basically pressing to the front. हाँ, तो हमें इस तरह की अवेयरनेस दूसरे साइड पे भी चाहिए होगी कि if people step in to help Chilwell, then somebody on the far side needs to move over and somebody needs to move into that gap as well on the far side because वो switch of play करेंगे फिर to try to take advantage. तो this was the hallmark of the Jose's Inter Milan. This was the hallmark of the great teams कि they would adjust. Real Madrid, Jose's Real Madrid, when they were up against the prime Barca, this is how they would adjust कि भाई ठीक है, we will cover, we will put an extra man and then somebody will have to cover the gap. भाई अगले जन्म में ये होगा देखो.
You तो think नहीं, ये Casemiro is a one stable one player, a more. destroyer, and Enzo would have been accepted. No, Lavia one Lavia will be that person eventually. no, like Debojit. अगले जन्म में. we can stop the like Haaland run if we just have a very small nitty gritty change. What I feel like जो Dortmund में होता था, if you see Hmm. Haaland runs straight, he penetrates from the very center third. So what happens Hmm. if you cut off the balls, if you see a supply is coming in now, he becomes upset very fast. He's young right now. He needs हाँ ball to मतलब get. ही डेवलप दैट जो लिंकअप था बहुत लेट इनटू द डॉटमंड करियर राइट एक्चुअली जब सैंचो काइंड ऑफ स्टार्टेड And ड्रिफ्टिंग टू लेफ्ट हैंड साइड ओनली देन ही स्टार्टेड दैट दैट्स अ ग्रेट पॉइंट बाय देवोजीत यहाँ पर रोहित इन द हाउस एज वेल भाई सब लोग जो भी जुड़े हैं फर्स्टली स्मैश दैट लाइक बटन 9 मिनट्स जस्ट लेफ्ट भाई इट्स बीन अ ग्रेट डिस्कशन फॉर दिस 1 आवर ग्रेट टू हैव द चेल्सी अल्ट्रास इन द हाउस लेकिन बिग अप टू द चैट एज वेल एब्सोल्युटली मैं देख रहा हूँ पुदिन आपका 15 महीना हो गया मेंबरशिप का बिग अप टू पुदिन एंड एवरी मेंबर एंड एवरी सब्सक्राइबर हियर again anyone watching or not subscribe consider subscribing big up to McKyle and Debojit यहाँ पर लेकिन मैं जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्योंकि टू अल्ट्राज आर हियर आई नो हम तो वॉच अलोंग करने वाले बट एंड विल कम बैक टू द प्रेडिक्शंस एक सेकंड में भाई मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंबाइंड 11 बनाया है और आप लोग हंसोगे मुझे मुझ पर कि बोल के यार कंबाइंड 11 सीरियसली 10th वर्सेस फर्स्ट से कैसे लेकिन ऑल टाइम कंबाइंड 11 बनाया भाई विद द अल्ट्राज बीइंग हियर कंट्रोवर्शियल होगा आई नो ये हो सकता है बायस्ड भी लगे आप लोग को सिटी फैंस को स्पेशली लेकिन मैंने ये बनाया है आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट इट्स अ 4-4-2 दैट इज द बेस्ट फॉर्मेशन आई कुड मेक ऑल्दो ईदर ऑफ द टीम्स डिड नॉट प्ले दैट फॉर्मेशन मच ड्यूरिंग द प्रीमियर लीग एरा का कंबाइंड 11 this is what I made because I couldn't pick one between Aguero and Drogba obviously I would pick Drogba लेकिन Aguero has been extremely influential for City Hazard, to be very honest, personally, मुझे एक spark as much as Hazard is great. You all know, by OGs know that मुझे Ian Robin has that gave that spark in Chelsea in that 2005 and 2006 back-to-back seasons. It was very difficult choice. Bernardo Silva won 5 Premier Leagues with the City, so cannot leave him out. Lampard, De Bruyne, भाई एक quick question पूछता हूँ. I know आपके भी comments देखने मिलेगा यहाँ पर कमेंट इवेंट पर लेकिन देबोजीत आपके लिए लैम्पार्ड over De Bruyne or De Bruyne over Lampard? Try and keep a neutral hat. Given a choice. अगर मैं एक ही ऑप्शन देता I would pick Lampard भाई. I know people will be laughing at me. I know बहुत trolls भी मिलेंगे. मैं एक रीजन बोल देता हूँ इसलिए मैं 4-4-2 I have put this formation because Lampard मैं you know what I really hate in McKyle when people say that Lampard scored a lot of goals what a goal scoring midfielder that was there for sure he was extraordinary because that reason लेकिन people forget that he has played as a number 6 as well भाई why do people forget that he has played as a number 6 in a 4-2-3-1 quite a bit मतलब 4-3-3 में नंबर 8 खेला है he's played as a number 10 as well as a number 6 and his tackles for me people might say me anything I know De Bruyne आज ही दिखा दे भाई दिखा दे कि क्या कर सकता है two things that Lampard has over De Bruyne over the years again यहाँ debate अलग topic में ले लिया थोड़ा भावुक होकर लेकिन Lampard for me is a better tackler anyone who wants to debate that bring it on for me as much as De Bruyne is a great passer of the I'll give ball you and an fantastic addition. Finish off. हाँ और सेकेंड मेरा पॉइंट है people do not know 2005 में when we won the league after 50 years right Lampard played each and every Premier League game for the third consecutive season how much have you heard of that his fitness is so underrated guys Lampard ka fitness the trainer he was and the fitness yes Debojit please add If everybody, like, I did not interrupt you there, playing with that black band, that captain's band, वो extra भार होता है. वो भार हटा दो आप. Even if you remember, the great of Sachin Tendulkar also said कि remove me as a captain, I'll play freely. Play as the captain, see the weight, see how you know whether you're a defender, whether you're a medio, whether you're in the goal key. If you play with that armband, that comes with the extra 100% pressure. He dealt with that, whether he played for both the sides, whether one game, whether two game, he played in both colors. He even scored for Man City, but he did not celebrate. But that's just the story. He was a utility player, whether he was in Chelsea, whether he was in City. That means what? He could still have one up over De Bruyne.
चलो भाई, ये डिबेट विल जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन, बट कोई नहीं, दैट इज व्हाई वी बेसिकली आर हियर टू डिस्कस. समटाइम्स इट्स आवर व्यूज व्हिच यू एग्री विद, समटाइम्स यू समथिंग यू डोंट एग्री विद. Disagree. लेकिन 5 मिनट्स लेफ्ट टू किक ऑफ. भाई मिकाइल, आई नो दैट यू डोंट वांट टू डू प्रेडिक्शंस, लेकिन क्या लगता है भाई, which Chelsea will we see, will we see the Chelsea which did not turn up against Liverpool at all means at all जो हुआ था, और will we see basically जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में अगेंस्ट सिटी हमने देखा था, दैट मतलब सडन से वी वर एक्चुअली प्लेइंग सम गुड फुटबॉल. कोल्ड पामर के बारे में ज्यादा बात नहीं किया है, मतलब फॉर ऑल वी नो, मतलब he doesn't have much to prove. It's still early days for him. Having said that, Etihad में such a young player, it will be a big deal for him. तो who are you calling that X factor player in Chelsea आज के नाइट के परफॉर्मेंस के लिए? Yeah, there's so many names that are circulating in my mind. I think Gusto, for me, has to have a strong game because anything positive will be tied to how his game goes, right? Yeah. Let me put it the other way. If he plays well, there will definitely be some positivity for Chelsea to get out of that performance. But you already said Jackson will have a role to play. Caicedo, Enzo will have roles to play. The back line, Disasi, Colwell, I don't think they've played a lot together. So there's going to be such a pressure on them, and then of course the forward line has to show up and be counted. So there is opportunity for everybody to put in a game. I think I'm looking for some positives, and I'm looking for us to avoid some mistakes. So वो देखना है कि some of the players are known for getting carded too much. Some players are known for doing rash tackles. So we have to kind of avoid those kind of mistakes, keep our heads about ourselves, and try to match the energy and bring the energy to the game. I think that will determine how the result goes. चलो भाई, let's hope for that. Debojit, we are doing the watch along as well. I don't know if you have the phone or something that you're watching on. I don't mind if you watch along, but obviously keep it on low volume, or you can basically watch on your own and you can rejoin in halftime if you want. It's up to you. Let me know whatever you want to do. लेकिन मैंने तार रखा हुआ है मैच देखने के लिए. हाँ, मेरा भी रेडी हो रहा है भाई, बिल्कुल. लेकिन देवजीत, बिफोर यू डिसाइड ऑन दैट, व्हाट इज योर डिसीजन ऑन योर प्रेडिक्शन? I'll just bank on one person. That's Petrovic. He is chosen over somebody who just came back from injury. That's my one ikka. And if he does everything right, he's the last person to save. He's the last soldier present out there. If he fires all guns blazing, if he saves 20 shots from City, we can expect a 1-1 draw. Or maybe, if I be very realistic, 20 में से 10 भी सेव कर लिया ना भाई, बहुत है तो बोलता हूँ. लेकिन it's a good call actually. Petrovic is actually a great call, and that's a fact. क्योंकि कहीं ना कहीं as much as basically we are Chelsea अब तो गाएगी, लेकिन the reality is it is Etihad and we have to kind of respect that. And वो balance बहुत जरूरी है, मतलब it cannot be that he just kind of faces all the shots. Somewhere down the line, जैसे McKyle ने पहले भी बोला था, that midfield is very key. That the position of the midfield, how it helps the defense and vice versa. The wings में openings होगा, एक chance मिला and City will just score a goal or take a shot, right? Exactly. रमित बोल रहे हैं मारो इनको, वो 2 मारे तुम 4 मारो. तब तक मारो जब तक ये टूट मारे भाई. बिल्कुल. क्या बात है, टीम टॉक्स इसी को देनी चाहिए आपसे. अरे बिल्कुल भाई, रमित ओपी नाउस, हर्षा ओपी एज वेल. भाई गौरव, देवेश, सब लोग जो भी आए, लेट्स स्मैश दैट लाइक बटन. आर वी नियर 125 लाइक्स ऑन द स्ट्रीम? लेट मी नो मॉड्स, हमने लाइक्स अभी अगेन मैंने और मिकाइल ने तो भाई अपना मोबाइल शुरू कर दिया है ऑन म्यूट, सो दैट वी आर एबल टू वॉच टुगेदर. लेकिन देवजीत, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो हॉटस्टार में कि टीवी पर? हॉटस्टार ना, तब ठीक है, तब आप अलाउड हो. देन यू आर अलाउड बिकॉज देयर विल बी नो स्पॉयलर्स देन. But then it's up to you, ठीक है? So we will watch the match together again. Watch along the reactions, guys, and it's going to be crazy match for sure. लेकिन again, be ready to suffer, जैसे Conte ने बोला था, but at the same time, be brave. I think that is the mantra आज के लिए, नहीं क्या? Any other mantra you guys want to let me know. लेकिन भाई 100 likes नहीं हुए, क्या बात है भाई? इतनी कंजूसी on a Saturday, Super Saturday. Come on, we can have more likes in the stream. Snail बोल रहे 3-2 to City. मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर मैंने पहले भी दिया था. आफ्टर सीइंग द लाइनअप एज वेल, मैं आई विल नॉट चेंज दैट मच कंसीडरिंग दैट वी स्टिल हैव पीपल ऑन द बेंच. तो मैं बोल रहा हूँ रिटर्न लेग में हुआ था 4-4.
So I am still saying 4 will be the number, but it will be 2-2. That is my prediction, guys. Again, I would wish to be wrong only for Chelsea to win. I know 7 matches में हुआ नहीं, लेकिन football is funny, guys, and that's what basically is a leveler. Anything could happen. तो भाई एक नारा हो जा भाई, come on everyone. Chelsea, 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 Chelsea. Come on, Chelsea. Chelsea, Chelsea, Come on. Chelsea. Come on, Chelsea. Yes. Come on, Chelsea. Let's do it, boys. ऐसे ऐसे भी एहतियात में, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अवे फैंस विल बी लाउडर, प्रीटी श्योर. आई नो ट्रेबल वाली क्लब के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, क्या जुर्रत है अंकित की बोलने के लिए. And it's raining. Through the sun and the rain, it's Chelsea, Chelsea, Chelsea. Yep, absolutely भाई. लेकिन डेफिनेटली भाई, चेल्सी तो बोल रहे भाई, oh when the blues go steaming in, oh when the blues go steaming in, I wanna be in that number when the blues go steaming in. आज लेकिन दोनों ही ब्लूज है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. अब तो भाई वो भी नहीं गा सकते, यू विल नेवर सिंग दैट मिकाइल. ये मैन सिटी का कोई नहीं, हमने मजा लिया उसका भी काफी देर. बिल्कुल. हर्षा अपना बोल रहे ब्लूज द कलर, फुटबॉल इज द गेम, वी आर ऑल टुगेदर, विनिंग इज द एम, सो चीयर अस ऑन टू द सन एंड रेन. आज रेन भी हो रहा है भाई, कॉज चेल्सी इज आवर नेम. एब्सोल्युटली भाई. एबिलिटी राजपाल यादव वाला है हमारी टीम का कॉन्फिडेंस, बट तो बच्चन वाला रह सकते हैं ना. बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली भाई. एबी ओपी हो जाए इन द चैट. थ्रू थर्ड बोल, लेट्स गो सिटी, लेट्स विन ऑन द प्रीमियर लीग टाइटल. भाई ऑल द बेस्ट. अगेन आई डोंट माइंड विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल, ऑल्दो इट पेन्स, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ भाई, ऑल सिटी फैंस, आज के दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सिंपल एज दैट. नहीं, लेकिन भाई मेरा शुरू नहीं है, मिकाइल आपका शुरू नहीं हुआ है ना अभी तक? आई होप सो. नहीं, नॉट येट यार. गौरव का बेस्ट प्रेडिक्शन है जैक्सन टेकिंग येलो कार्ड. इंटरेस्टिंग. क्लॉक मैच क्लॉक यार. लाइव ऑन हॉटस्टार. क्या चीज देवजीत? 55K on Hotstar live. Okay. Debojit, if you don't mind, can you mute your mobile? Yeah, because copyright हो जाएगा भाई, वो सब नहीं चाहिए मेरे. ठीक है, big up to you as well. लेकिन हाँ, मैच शुरू हो गया भाई, and don't tell me I forgot to kind of start the stopwatch, लेकिन अभी शुरू कर देते हैं, कोई नहीं, 2 सेकंड लेट हुआ है. बट कम ऑन चेल्सी. क्या दिख रहा है भाई? टैक्टिक्स, anyone can figure out anything in the beginning? I think pretty sure it's a back 4, no back 3 as expected. लेकिन Enzo already Doku को kind of blocking him, Nathan Ake on left back. अच्छा, यहाँ पर more or less I think it's a back 4 itself. City का Akanji stepping into midfield हो रहा है, but वो हाँ यार, it's a back 3 with Akanji kind of playing that dynamic role, McKyle, जैसे हमने anticipate किया था. Doku trying to beat Gusto early on, लेकिन Gusto well done as well as Caicedo. Ankit, McKyle, shall I just join back during the half time? बिल्कुल. Absolutely. Big up to Debojit. क्या शॉट है भाई? Oh भाई, just wide from Alvarez. लेकिन Debojit OP in the chat. Absolutely Debojit, welcome. You have the link to come back whenever you want. Absolutely up the Chelsea no matter what, bro. तब तक 1-1 रह जाए या 0-0 रह जाए. अरे भाई 1-0 बोलो भाई, away. Why not? Okay, bye guys. See ya. See you half time. Absolutely. Akanji will step in midfield. हाँ वही होगा बिल्कुल. तो the fact is, when in possession, they are basically having Akanji play the dynamic role, is what I understand. एक सेकेंड. देबोजीत अपने आप को मैंने हटाना है, चलो कोई नहीं भाई. जैक्सन लेफ्ट विंग में लग रहा है. मिकाइल जैक्सन नजर ही नहीं आ रहा मुझे तो. वेयर इज ही? नंबर 15. Oh yeah, right here. हाँ, Right here. गैलेगर Yes, इज you're right. प्रेसिंग और पामर इज काइंड ऑफ टेकिंग दैट राइटिश रोल. आपका स्ट्रीम मेरे से कुछ सेकंड आगे है. 3-4 सेकंड का फर्क है. मे बी 5 सेकंड. हाँ, 2-12 2-13 हो रहा है मेरा एक्चुअली. मेरा मेरा 2 वाले 2-5. भाई प्रेडिक्शंस आपने सुना नहीं शायद मेरे भाई. कोई नहीं. 2-7, 2-8, 2-9, 2-10. So I'm 5 seconds or 222 223 224 हो गया. You want to refresh once maybe? 10 सेकंड हो गया अब मेरे लिए. I don't know क्या चल रहा जो टाइम स्टैम्प है ना, उससे आप 10 सेकंड ऐड कर दो, जो टाइम स्टैम्प दिख रहा है स्क्रीन पर.
मेरे वो एक्चुअली 10 सेकंड लेट। वो क्या हुआ ना, वो लोग शुरू कर दिए लेकिन टाइम स्टैम्प वो लोग शुरू नहीं किए थे, तो आई बिकेम 10 seconds लेट. कोई But मसला नहीं। Jackson trying to basically win the ball early. Bhai, McKyle, it's raining. It's torrential rain, yaar. In this rain, basically, the ball will kind of zip. I can see a high scoring game for sure, with all due respect to my own defense. Let's see who scores. वो अलग बात है. लेकिन चेल्सी काइंड ऑफ प्रेसिंग, क्लियरली प्रेसिंग टैक्टिक है, हम वेट एंड वॉच सिचुएशन नहीं कर रहे. बहुत प्रेसिंग लग रही है जैक्सन और गैलेगर द्वारा, एज वेल एज पामर. आई थिंक द थ्री ऑफ देम आर टोल्ड टू प्रेस अप फ्रंट एंड ट्राई टू विन द बॉल बैक. इंटरेस्टिंगली अब स्टर्लिंग लेफ्ट विंग हो गया है, तो डायनेमिक सिस्टम खेल रहे हैं. जैक्सन इज गॉन अप फ्रंट, स्टर्लिंग इज लेफ्ट विंग एंड पामर इज राइट विंग, ऑल्दो स्टर्लिंग टक इन कर रहा है. मिकाइल, डिफेंसिवली स्टर्लिंग इज हेल्पिंग आउट एंड टकिंग इन इनटू मिडफील्ड. That's an interesting change that I noticed. लेकिन will it not expose Chilwell? देखते हैं कि हाँ, you know, अब Gallagher is also pressing up high. हाँ, मतलब Gallagher pressing high. Where are you on that? मतलब the fact is, in a big game, would you not expect Gallagher, Enzo, and Caicedo to be much closer to each other? हाँ, but like if it helps us keep the ball in their half, I don't mind it. But ये हाँ, है कि मतलब yes, generally you have don't. your forwards pressing ना, मतलब your strikers, तो Palmer and हाँ, तो Jackson are on the that's right. why it's kind of looks a little strange to me कि वो इतना आगे निकला हुआ. But City keeping ball just to kind of keep possession, nothing else. अभी के City लिए. will try to make sense of how we're organized. उसके बाद वो exploit करेंगे उसको. This is the problem with the Pep team is कि it's not about starting tactics, it's about how they evolve बिल्कुल. once और they आप see देख what you're सकते हो, doing. नाउ दैट दे कीपिंग पोजीशन, अकांजी इज इन वेल इन मिडफील्ड यार. अकांजी इज नॉट इन डिफेंस, तो प्रॉपर मिडफील्ड में खेल रहा है वो, व्हाइल इन पोजीशन सिटी. हम्म, आगे निकल रहा है. Yeah. एडिसन इज प्ले एडिसन सेंटर बैक जैसे खेल रहा है भाई. ये क्या हो रहा है? और ये कुछ ज्यादा या प्रेस, हमने हमारा स्ट्रीम सुन रहे हैं क्या चेल्सी प्लेयर्स? प्रेस करना की बंद कर दिया लास्ट 1 मिनट में. लेकिन कोई नहीं. वॉकर प्रेस्ड बाय स्टर्लिंग, बट जस्ट अबाउट वॉकर कीप्स द बॉल एंड देन रॉड्री गेट्स इट मिडफील्ड में. भाई साहब, बॉल जीत लो, बॉल जीत लो वापस से भाई. वेल पोजीशन बाय चिलवेल टू हेड द बॉल. स्टर्लिंग विद अ नाइस टच एंड टर्न अगेंस्ट वॉकर. लेकिन जैक्सन ऑन द लेफ्ट विंग चैनल में भागने की कोशिश की है जैक्सन, लेकिन हेवी टच. Pretty sure Diaz, he got it easily, but Jackson very well worked to kind of win the ball back. Brilliant, in fact. Sterling क्या करता है भाई? Sterling will he be able to keep the ball? Just about tries to keep it, but नहीं. Foden gets it back and we concede a free kick. भाई साहब, भाई स्टर्लिंग का टर्न. That is why he's in midfield. Extra man in midfield, trying to help out the midfield, be an extra man to ask for a pass, That and was that turn nice. helped. Yep, that was nice. That's the thing, right? We have to transition quick. Oh my And I god. think Pochettino has been Bayern Munich working लिख on it. दो. Pochettino has been working on it, so it's not the isolated Mhm. one. Oh Like my god. generally, I think we 2 vs try. 1. Oi, Chilwell not giving up on Foden. oh, चलो, थ्रो इन जीता हमने. वेल डन टू चिलवेल. भाई when it gets in the box ना, I get scared यार. जब सिटी होते ना, again, if I speak, I'll be in trouble. Mikhail, you know it. Certain tackles against City, you know what the decision is going to be in the box. Certain tackles, not all. Just saying. भाई ब्लू कार्ड भी आ रहा है आगे. अरे भाई, अब ब्लू कार्ड भाई, अब तो मुझे नहीं लगता रियलिस्टिक आएगा. आई थिंक वो सब पेपर टॉक है, मतलब दैट्स व्हाट द. यार वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं गेम को. नहीं, लेकिन imagine a team like old school Burnley. अरे what a touch by Jackson, but Gallagher could not counter for whatever reason. Palmer के पास बॉल है, देखते हैं गुस्तो if he can overlap, but Palmer does not use him. Palmer uses Enzo. भाई brilliant touch, Gallagher on the far post और क्रॉस किया, but no avail. Jackson ने ज्यादा ही रन मार लिया अंदर भाई, और सिटी प्लेयर clears it और gets a throw in. भाई साहब, nice one touch football by Chelsea. By Palmer did brilliantly to kind of find, in my opinion, Enzo Fernandez, जिसका brilliant first touch था. Gallagher क्रॉस किया था भाई, किसको ब्लेम करो भाई? Jackson at the far post should be. जैक्सन जैक्सन बहुत बहुत आगे निकल गया. ज्यादा एंटिसिपेशन. तो थोड़ा सा पॉकेट में. You should have had the awareness to come into the pocket.
Yeah, again बट वही है, ठीक मतलब है, कैच वो पोजीशन हिज सिचुएशन जॉब बना इज ना टू पुल बिल्कुल। द डिफेंडर विद हिम, तो वो राइट। उस लिहाज से इट मेक सेंस, लेकिन वो थोड़ा भाई सा मैं प्रेसिंग कहता हूँ चेल्सी की सही हो रही है। कि जब बॉक्स सिचुएशंस होती हैं, यू हैव टू काइंड ऑफ आल्सो फिगर आउट की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है हम्म। व्हेन यू आर इन द बॉक्स। एब्सोल्युटली। लेकिन वही है ना, मतलब sometimes we criticize the fact that Chelsea forwards don't anticipate the ball and go for the kill, but sometimes you have to basically read the game better ना वो, और plus it's raining, तो जैसे आप गौरव बोल रहे हैं, मतलब that something sometimes happens. Jace Matthew, welcome back यार to the channel, absolutely, as the family, big up to you as well. यहाँ पर फाउल दिया against Chelsea, seriously, Malo Gusto was fouled bro. नहीं, well yeah, there was a tug on the shirt maybe, yeah, true. What? भाई साहब, सेट पीस बाडिशेले और थियागो सिल्वा नहीं है। हार्ट अटैक भाई। एफसी, आई होप दे नॉट बैक, बट लेट्स सी। Why Tuchel wanted Sterling so badly? Bhai, because he's just won about 4 Premier League titles, bro. With all due respect, I know वो आपने अपनी जीता है, but even for City, I think if I'm not wrong, he's the second most highest goal scorer for City in the league or something like that. If I'm not wrong, correct me if I'm wrong. Goal contributions. तो जेस एब्सोल्युटली राइट यार, लेकिन यहाँ पर फ्री किक आया है, बट चेल्सी हैव नॉट डन बैडली। कैसेडो और भाई फॉलो अप आता है, बट एंजो काइंड ऑफ गेट्स अ हेडर। पेट्रोविच, नो, पेट्रोविच फाइनली मिसेस द बॉल, लकीली कैचेस इट। भाई साहब, पेट्रोविच डूइंग दैट क्रेजी मोमेंट ब्रो, ऑलमोस्ट। व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट मिकाइल? पैनिक। वो बच गया भाई, ये क्या सिजर किक इन्होंने मार रहा था, क्या कर रहा था? पता नहीं, टोटली लॉस्ट इट भाई, ही वाज लकी टू काइंड ऑफ गेट द बॉल ऑन द रिबाउंड आफ्टर बाउंसिंग। थोड़ा सा हेजिटेशन है उसमें कमिंग ऑफ द लाइन का, लेकिन कभी और कभी वो ही डज, कभी कभी he does come off the line as well, so I'm not yes, love that. convinced 100%, लेकिन I'm not super worried क्योंकि maybe it's just jitters early on नहीं ये तो है, in his मतलब वो career. थोड़ा सा, मतलब इन दैट एस्पेक्ट ही गिव्स मी दोस केपा वाइब्स एज वेल, लेकिन इन अदर थोड़ा सा एस्पेक्ट आई थिंक। hesitation है, वो sometimes he doesn't come out early, sometimes he does, so I'm hoping कि he learns. अच्छा, या उसको pull down किया उसने यार, that's a foul. ओके, आई मिस दैट बेसिकली। हाँ, उसको पुल, उसका बाजू लगा के उसको नीचे खींचा था, that's why he missed it. नो वंडर, नो रेफरी वंडर। जो है ना हमारा, कोई नहीं देता। जीके यहाँ बोल रहे बैक फाइव खिलाओ, आई डोंट अग्री विद दैट राइट नाउ, क्योंकि पर्सनल नहीं है ना, पर्सनल होते तो अलग बात होता। आप सेंटर बैक किसको खिलाओगे, एल्फी गिलक्रिस्ट? नहीं यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इट्स मैन सिटी एंड एक्सपीरियंस मैन सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, ये यंग मैन सिटी नहीं है, मतलब बेसिकली जो रीबिल्ड कर रही है। जस्ट डीएम करिए, बात करते हैं उस पर, बिकॉज दे नॉट अ स्पॉन्सर, बेसिकली टॉकिंग अबाउट देम, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन गाइस। नाइस प्रेस बाय गैलेगर टू विन द बॉल बैक, और राइट विंग में जैक्सन अभी फ्री अप हुआ है, लेकिन जैक्सन विल, यार नहीं यार, बहुत हेवी टच, गिव्स इट डायरेक्टली टू एडरसन ऑन द राइट हैंड चैनल। बिल्कुल हार्दिक, बारिश भी बहुत जोर की हो रही है भाई, एक बार रमित बोल रहे एक बार हो जाए भाई, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब, अभी तो बात को काफ़ी कंट्रोवर्सी है, आई नो, बेचारा बहुत सालों जेल में यार, मिस्टर इमरान खान, घबराना नहीं है, बट कोई नहीं। नेथन की भाई, हम रिग्रेट का बात कर रहे थे, नेथन की, मतलब ग्वार्डियोल हैज बीन मिसिंग फॉर सिटी, नेथन की हैज एक्चुअली really been there, yeah. I don't think Guardiola is being missed. In fact, you can almost argue that Guardiola has not lived up to the expectation or the hype, at least as of now. I know it's still early days, but Doku opening up Alvarez on the left hand side, और गोल हो गया, नहीं भाई बच गया, Haaland header, free header in the box, guys, and that is where we are missing Bardeshile and Thiago Silva. Left hand side में Totti opened up. What happened? Gusto was ball watching, and a भाईजान, centre he back left, did not he anticipate left that. him, he left him, he left him for dead. खत्म ये almost. ये this is the challenge for Colwell. ये क्या कर रहा था ये? Wow, Colwell isn't, that's not his game. That's a reality. He has to learn that. that's where the matchup is today. Oh He will my not god, mix. bhai, you called it early. Bardeshile will be the one of the biggest misses in this match. Even Thiago Silva heading ability definitely is right up there. He's a Against beast, man. Spurs. उसकी उसकी आपने हाइट देखी थी? उसका navel was at Colwell's head.
It's crazy. That's how Oh, high bhai. he had jumped. Brilliant pressing यहाँ पर by Enzo and Jackson. Enzo frees Sterling on the left hand side, लेकिन Sterling tries to take his man on. Bine! Oh, curler किया, लेकिन shot did not really basically be so strong and he has given it directly to Edison for easy save. लेकिन technically shot on goal होगा शायद, if I'm not wrong. ओए यार नाइस, बट थोड़ा सा अंडर हिट था, थोड़ा ज्यादा जोर से मारता. He Touch wood, had the Mikhail. angle, he had the curl. Enzo touches, bro. Really doing well. 2/3 सच्चाई बोलते हुए यहाँ पर, लेकिन बट कोई नहीं. I'm Well, hoping और कि मेरा भाई stream थोड़ा speed up हो जाएगा. 13-18, 13-19, 13-20, 13-21. पूरा 10 मिनट 10 सेकंड पीछे हूँ मैं आपसे. 10 सेकंड है क्या? चलो. अरे भाई, पता नहीं मेरा आज 10 सेकंड आगे कैसे हो गया. मैं जनरली when on watching on mobile I am almost with you, right? हाँ, कोई नहीं, But कोई नहीं. that's So what happens in OTT, right? Sometimes. I will refresh in a bit. Let's see. Maybe it'll speed up. By Nicholas Jackson trying to hold up unsuccessfully. That's one thing that he has to learn a little bit better. While link up is good, pressing अच्छी हुई है Chelsea की, but the reality is that अगर high ball खेल रहे हो to Nicholas Jackson, you need to have someone around for to win that second ball. क्योंकि Nicholas Jackson is not a Drogba yet, although मतलब for all we know, we don't know what he's going to become eventually after 5 years. लेकिन time लगेगा, couple of years at least. हाँ, अभी उसकी upper body strength नहीं है जो ड्रॉगबा की होती थी. So like he tries to, but he doesn't look as big as Drogba एक was बाउंस able होता to है make और द himself. रिबाउंड बेसिकली और डिफेंडर काइंड ऑफ वो गेट्स अ बेटर. ड्रॉगबा डिफेंडर को पकड़ लेता था. डिफेंडर वाज बेसिकली सेकंड इन दैट. हाँ, पीछे उसने पकड़ा होता था उसको. सो वो इसमें नहीं है वो एबिलिटी, क्योंकि वो आई थिंक वो अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें. बिल्कुल. लेकिन सिटी नाउ कमिंग बैक विद द पोजीशन. भाई अकांजी बीइंग प्रेस्ड वेरी नाइसली. भाई गैलेगर एंड चिलवेल ओपी. वहां पर स्टर्लिंग हैज केप्ट द बॉल, पुटिंग टू पावर ऑन द राइट विंग. पामर बीइंग प्रेस्ड बाय नेथन आकी. डेवलप करा गया, लेकिन गुस्टो गेटिंग अ क्रॉस, अनसक्सेसफुल, रबिश क्रॉस सच में बोलो तो. अल्वारेज हैज cleared the ball to Doku on the left hand side. काउंटर हो सकता है सिटी का. भाई गुस्टो इज नॉट इन पोजीशन गाइस. अपना राइट बैक मिसिंग है. दिसासी अगेंस्ट Doku is a mismatch, लेकिन Rodri taking a shot. Thanks for Disasi to come back in position, but Caicedo just about keeping the ball. Pretty sure यहाँ पर फ्री किक मिलना चाहिए चेल्सी को, और मिला है. ओ भाई साहब का काउंटर. मिकाइल, 2 मोमेंट्स, हालैंड हेडर, और अभी जो हुआ था 1 बॉल लॉस्ट. चैन लगता है भाई आने वाला चांस. Yeah, this is the problem, right? Gusto will bomb forward and they will try to take advantage of that as well. So this is a team that's good enough to exploit the person that's out of position. Inki passing is fast enough, crisp enough that they will do it and they will wait for it over and over and over again. So हमें भी थोड़ा सा उस साइड पे कवरेज देनी होगी गुस्टो को, जब गुस्टो आगे फॉरवर्ड बम फॉरवर्ड कर रहा है. लेकिन गुस्टो could have done better with that opportunity as well. First man को क्रॉस हिट करना is not मतलब really. आई थिंक ही शुड हैव टेकन क्या बोलते हैं, स्टेप ओवर करना था ना एक. आई थिंक ही became over ambitious in crossing the ball when he was not in balance. बस यही वो फाइनल डिलीवरी जो होती है ना, दिस यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ गाइल. Yeah, absolutely. बट ठीक है, मतलब कोई नहीं. आई थिंक ओवरऑल आई नो इट्स जस्ट 16 मिनट्स एंड आई नो इट्स अ 90 मिनट गेम एंड सिटी का अलग ही माहौल है भाई ऑन द बेंच एज वेल, बट नॉट टू डिससैटिस्फाइड. यही चांसेस हैं जो कि हम वी हैव टू मेक देम हर्ट फ्रॉम दीस चांसेस, राइट? हम चांसेस पे चांसेस करते जाएं और स्कोर ना करें. बट उसका क्या करते हैं हम, वही है. यू आर राइट, एब्सोल्युटली. वी हैव टू बेसिकली मेक द मोस्ट ऑफ दोज हाफ चांसेस, यू नो. Palmer taking on 2 men, almost beating his man, but Nathan Aki's pace has beaten Palmer, and Edison being pressed. By Edison has won the ball from, rather Jackson has won the ball from Edison. लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है मिड में कोई नहीं था यार in the box. But Caicedo winning the ball back, और Enzo keeping the ball, giving it to Gallagher जो through ball करता है. Palmer, come on, no यार. Nathan Aki just about a fantastic interception by Nathan Aki. Bhai, that was definitely a potential great through ball by Gallagher. By the way, big up to Nicholas Jackson or Caicedo to keep the ball. Absolutely brilliant work by Nicholas Jackson and Caicedo. But Gallagher का क्या through ball था भाई. Nathan Aki क्या रीड किया भाई. Palmer was almost there. Big up to Jackson.
props to Jackson for getting the ball from Ederson in that close down, that press. We need to see more of that. Oof. That was definitely a quarter chance, if not a half chance for sure. Arey yaar, almost. Corner hai bhai, Chilwell taking it, I believe. Again, we have to be very careful on the corner as well. Counters पर डर लगता है McKyle. As much as basically it's our वो chance to इसीलिए score. शॉट लेकिन यहाँ इसीलिए वो पर शॉट लेने के लिए खड़ा हुआ है एक. actually you're right. We can see there भाई. लेकिन Badiashile being missed and Thiago Silva even in the opposition box while heading. That's one more thing. अब देखो कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है. मतलब आई थिंक वी हैव टू प्ले शॉर्ट कॉर्नर भाई, मोरलेस. क्रॉस आया है टू नो अवेल दो, लेकिन कैसेडो शुड हैव टेकन अ शॉट. क्या वुड हैव बीन डिफिकल्ट इन माय ओपिनियन, बट ठीक है. पामर क्या करता है, पामर को मिला ऑन द लेफ्ट चैनल, गिविंग बैक टू कैसेडो. कैसेडो लास्ट मैन है क्या? नहीं देयर इज गुस्तो बिहाइंड हिम, बट आई थिंक हमारे वापस से अपना बिल्डअप होगा. हर्षा बोल रहे आई एम टू बिहाइंड, आई नीड टू रिफ्रेश हॉटस्टार. सीरियसली आई थॉट मिकाइल इज बिहाइंड. मैं भी बिहाइंड हूँ सीरियसली गाइस. लेकिन यहाँ पर काउंटर आ रहा है. इट्स ओके हर्षा, वी विल फॉलो. ब्रेक होगा तो वी विल रिफ्रेश, क्योंकि मैच इज टू गुड टू बी डूइंग इट. अभी कर लेता हूँ क्या? अभी कर लेता हूँ. चलो यहाँ पर बॉल वापस गया. लेट मी रिफ्रेश. वन सेकेंड, एक सेकंड दीजिए. अगेन थैंक्स फॉर लेटिंग मी गाइस. अगेन ये ऐसा चीज कुछ होता है तो बोलिएगा चैट में, क्योंकि लोग हॉटस्टार में देख रहे हैं तो साथ साथ में देखने में मजा आता है. मैकाइल यहाँ पर मुझे और भी गाली दे रहे हैं कि भाई साहब साले तू तो कितना आगे निकलेगा और खल्ला खल्ला. मैं 1915, 1916, 1917 30 सेकंड्स पीछे डेफिनेटली नहीं हो जेस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज YouTube basically takes up 10 seconds for you to basically get it through what I'm reacting. ठीक है, वो होता है normally. लेकिन Levi Colwill giving the ball away this time. Levi Colwill has not been in the match, if I'm being very honest, much. लेकिन Jackson has done some brilliant pressing here. I have to say that. How is Joku playing like Anthony? What happened to him? भाई साहब Chelsea happened to him, bro. लेकिन it's just 19 minutes. Devesh, let's come back to ground level. वो एंड में आप 80 मिनट्स ये कर लेंगे ना, वो एंड में आखिरी 10 मिनट में ही वो पूरा कर लेंगे. सो वी हैव टू गेट टू द फाइनल विसल with the same energy and dedication, concentration. ओए होए होए होए, फिर आए अच्छा, यार, ये मुझे डेंजरस. चैट गाइस रिमेंबर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना ये वाला टाइम स्टैम्प, उस पर आप एक्चुअली अभी 15 सेकंड ऐड कर लो. वो है मेरा टाइम स्टैम्प. ठीक है, 14 सेकंड ऐड कर दो इस पर. तो मैंने लेट शुरू किया था 14 सेकंड, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2025, 2026, 2027. यहाँ पर जैक्सन लूजिंग द बॉल, ट्राइंग टू होल्ड अप अनसक्सेसफुली, बट नाइसली डन बाय काइसेडो विनिंग द बॉल बैक. स्टर्लिंग विद द बॉल, लेकिन आई डोंट थिंक ही कैन अटैक प्रॉपर, तो ही गिव्स इट बैक टू एंजो जो स्विच ऑफ प्ले करता है. पामर गेट्स इन द राइट हैंड साइड अगेंस्ट डोकू, जो डिफेंसिव वर्क कर रहा है गाइस. डोकू डिफेंडिंग अगेंस्ट पामर. कलयुग आ गया भाई वापस से नया वाला. With Man City wingers at home defending against our wingers. But it's still early days. We are still nil. Offside, I'm pretty sure यहाँ पर Chilwell. यार Chilwell shouldn't have been offside यार. He was looking clearly across the line. Come on. मेरा टाइमर ना मैं चेंज करना जानता नहीं हूँ जेस, मैं कर लेता, लेकिन टाइमर जो दिख रहा है उस पर 15 सेकंड ऐड कर लो बस. टाइमर बंद ही कर दो क्या? हाफ टाइम तक चलने दो, फिर देखते हैं, फिर सिंकअप कर देंगे. ठीक है भाई. स्लिप तो होगा ना इतना बॉल. इट्स टोरेंशियल रेन ब्रो. आई डोंट थिंक इट्स लाइक जस्ट अबाउट रेनिंग, राइट? इट्स लाइक क्रेजीली बारिश हो रही है ना मैकाइल. लुक्स लाइक हाँ, जो नॉर्मल बारिश होती है वो तो टीवी पे नजर भी नहीं आती. So ये this we can see, so you can tell it's heavier. This Asi nice. Enzo brilliant first touch. और wow, Jackson nicely, लेकिन Nathan Aki clearly gets the ball from Gallagher. Gallagher should have done better there. Come on. यार क्या पास दिया गैलेगर, कम ऑन. वो पता क्या, वो बॉल भारी हो रहा है ना, आउटफील्ड भारी हो रही है, सो वो मिस टाइम कर रहा है पास. Bhai, you know the rule, right? Guys in the chat, people who are new watchers of football, until the ball floats, the referee can allow to continue. और यहाँ पर through ball up brilliantly on the right hand side by Palmer. Gusto giving to Jackson. Jackson क्या करेगा? No, he misses it. No यार, Nicholas Jackson yet again. Come on.
He has been brilliant in this game, I must say it. But you should have done better. Heavy touch, or Edison did well as well. Lekin come on, what a brilliant through ball by Palmer and a cross by Gusto यार to no avail. प्लेट पे चांस आ रहा है, प्लेट पे चांस आ रहा है भाई, खा लो यार, खा लो यार। भाई अभी क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा इसके बाद क्या चाहते हैं। और बट वही है ना, अब देखो, point being that I agree that he has missed it and he should have scored it absolutely. But arguably he has been the best player for Chelsea, if I'm not wrong. McKyle, would you disagree with that? भाई not after that miss, but yes, generally up before the miss, yes. इतना बिल्कुल fair enough, fair point. Up until that miss, yes, but after that things have to be recalculated. Now he's in the sin bin. भाई साहब ऑफसाइड नहीं था यार. I don't think it was offside. Correct? It was not. It wouldn't have been called offside. Gusto with a brilliant first time cross, with a diving cross that too. By Jackson, Actually, come on, bro. Jackson had to shoot it first time. ये जो उसने टच लिया ना, that अच्छा वो पीछे था थोड़ा सा उससे, okay. But he could still have lifted it over. He could have chipped the goalie. He just did. पेनल्टी शॉट भाई मिल भी जाएगा सिटी को. भाई मिल गया क्या पेनल्टी? अकांजी गिर गया है. नहीं, not a penalty. भाई दिसासी not a penalty यार. Not a penalty. Come on. वो मिल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन not a penalty in my book. No way penalty भाई. I'm pissed off भाई. Seriously, City man. City don't need to do this. See, this is where basically I get pissed off. Do really Man City need to do this? Yep. Pissing off. No, if this is a penalty, then you should walk off the field, because everything is a penalty at that point. Change कर दो भाई, नाम चेंज कर दो. Football is not football भाई. हवा बॉल कर दो उसको बस. कोबरा agreed with this point. Again हमने बात किया था इसके बारे में प्री मैच में, याद है मिकाइल, that Jackson maybe today might be again better off playing left wing. But वही है, do we have a finisher who's there on the pitch? That's one more thing, right? Palmer is the best finisher arguably, right? One can argue. Even he misses, by the way. Again, guys, shit player हो सब. I would not go so far, to be very honest. I get that. भावना को समझ रहा हूँ प्रणव, लेकिन the reason I'm saying it, I again repeated, yes, he shouldn't have missed that chance. Yes, it's a golden opportunity. Yes, he should be learning quicker, or he should have better game awareness. But the reality is, up until that point, again, we were praising Jackson. So it's maybe the coach's fault, that the fact that he's going on playing him as center forward. That is the only thing that I can say there. लेकिन यहाँ पर स्टर्लिंग डूइंग वेल, गैलेगर कीपिंग द बॉल, हेल्प ऑफ जैक्सन एज वेल. लेकिन यहाँ पर पामर, ओपनिंग अप स्टर्लिंग, फर्स्ट टच हैवी हो गया भाई. इज इट अ फाउल? नो. सिटी विन बॉल बैक. भाई जो भी लोग जुड़ रहे हैं ना भाई, मैंने टाइम स्टैम्प आज लेट शुरू करके गलती किया, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर बिहाइंड. वी आर नॉट बिहाइंड शिवम. जो आप टाइम स्टैम्प देख रहे हो स्क्रीन पर, उससे 15 सेकंड ऐड कर लो. वहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर काउंटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय सिटी. और यहाँ शिट, हालैंड इज द बॉल, बैक फ्लिक, लकीली यूनियन अलवारेज बीइंग ड्रैग्ड वाइडर, और वेल डन बाय काइसेडो. और काइसेडो गिव्स अ फिस्ट पंप जस्ट टू कंसीड अ कॉर्नर. भाई दैट इज द mentality that we need sometimes. Alvaro Morata had, but this move started in their half. जब वो sideline पे ball थी, तो instead of going for the ball, he started appealing कि ये outside चली गई है. Cole Palmer. वहां पे concentration चाहिए आपको, कि आप रेफरी की बजाय you play the ball. Yeah, but Jackson trying to keep the ball on the rebound, और चिलवेल ने अरे भाई, चिलवेल could have freed Sterling, लेकिन नहीं, सिटी को मिला वापस से बॉल. भाई ये वाला जो बोल रहे हैं ना वेद, to be honest, Alvaro Morata had some terrible misses, bro. He had some terrible misses. I remember, especially at his price. Alvaro Morata at that point, I don't think I had huge regrets. McKyle, did you have regrets getting rid of Alvaro Morata much? Is playing better for Madrid than any. यार वो he might be better in this context. अभी जो चेल्सी के फॉरवर्ड्स हैं वो सारे मिसफायर कर रहे हैं, तो अगर उसने 3-4 गोल भी कर लिए तो he's probably already performing better than them. Not to say कि वो बहुत अच्छा कर रहा हो. Yeah, Comparably.
Jackson बिल्कुल started good, but then kind of fell off in terms of goals, right? कितने गोल हुए हैं जैक्सन के इस सीजन में? स्टार्ट तो है नहीं अभी हैंडी, लेकिन आई थिंक ही हैड गोल्ड कंट्रीब्यूशंस टू डबल डिजिट शायद पहुंच गया, प्रीटी श्योर. Contributions are in double digits, goals are not, right? अरे भाई Single digits. हालैंड header, लेकिन Jackson getting the ball back, unfortunately cannot keep the ball. भाई साहब, we need a proper ball retention player in the forward line, guys. Come on. लेकिन Jackson nicely done on the left wing, only to win a throw in. By City na, they're making sure they're appealing for every throw in, for every fall, to be sure that the referee will be, मतलब कहीं ना कहीं eventually वो देगा. कार्ड मिलेंगे हमें, पहले हाफ में मिल जाएंगे, the way we're playing. Aman, I put why is Chilwell marking Haaland and not our centre backs on set pieces? I think Chilwell's heading ability is actually underrated. I genuinely believe that. Maybe that can be the reason, I would say, compared to maybe Levi Colwill. मतलब Levi Colwill और Chilwell में Chilwell is the better header of the ball. McKyle, disagree? Just on set pieces, Yeah, you know. I guess, If you have to. I think that is the only reason I see. experience ज़्यादा, so I guess you can say कि maybe. नहीं, if you remember, like again, Man City इसलिए बोल रहा हूँ 2021 Champions League final. You remember Chilwell had some crazy headers, bro, in that game, late in the game. नहीं, experience है ना, तो वो positioning as a defender, you learn set pieces वगैरह में, तो experience counts. He can jump, but I don't know, फिर कोलविल का क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है? If अगर वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, तो फिर why did we? नहीं, playing out from the back. I think the fact is he's a ball player. The way that Poch, old Poch ball used to be, na, वैसे basically he fits that. But you X have to factor. you have to be good in your own position first. Yeah, the main defender. Caicedo giving away a foul, guys. Again, a lot of criticism coming in the chat, but to be very honest, McKyle, I know half an hour almost हो रहे हैं. Are you more disappointed, or are you like content, or you're like happy as of now, half an hour into the match? I am exactly where. Ooh, बच गया है भाई, इसको कार्ड मिलना चाहिए था यहाँ पे. अरे Oh यार my एक सेकंड. God. फार पोस्ट में भाई लकीली चिलवेल इज देयर. आई डोंट नो व्हाई वी अलाउ दिस क्रॉसेस, मिकाइल. हर एक स्ट्रीम में हम बोल के थक गए भाई. व्हाई डू वी अलाउ दोस क्रॉसेस एट फर्स्ट पॉइंट? हम पढ़ते ही नहीं उसको. Yeah, so true. Jackson almost. Again, Ved, it'll take time. Trust me that even we don't believe, me and McKyle included, I don't think neither of us believe totally in Poch ball yet. I think we are on the fence, or more or less negative ही Yeah, बोल दो. वही जो फीलिंग हमारी होती है, आपने पूछा कि so far क्या फीलिंग है. फीलिंग वही है जो कि मैंने मैच से पहले कहा कि यार ये हो जाता तो कितना जबरदस्त हो जाता. वो हुआ नहीं कुछ, रही वो जितने भी चांसेस आए वो चले गए. तो बस अब बैठ के हम वही चेल्सी, सेम ओल्ड चेल्सी, Yeah, I'm throwing actually missed chances. yes on this. To be honest, yes, chances miss हुए हैं, especially that Cole Palmer through ball or Gusto cross with Jackson in the middle. ठीक है, लेकिन मतलब I know arguably you I can argue that Chelsea के chances better थे, लेकिन हालैंड का भी free hitter था. I think हमारे chances were more open comparatively, yes, and but we didn't do anything with them. So what does that say? Yeah, maybe that's the inexperience talking जो आप बोल रहे थे. But Caicedo giving a throw in यहाँ पर. Like कितना फ्री होना चाहिए चांस for Chelsea to be able to convert it? But that's what I'm trying to say. कि किस लेवल की गेम See, होनी चाहिए? you remember the conversation we were having pre-match में? See, that is why I would have by sure started Nkunku tonight. Nkunku, मतलब he may not be linking up as per Jackson. लेकिन एक second, यहाँ पर Disasi clearing just about saving her ass. लेकिन as much as link up में Jackson better है, game reading में better होगा शायद. लेकिन Nkunku is not far back as well as Nkunku is a better finisher. तो एक दो chances को convert करना, I would put my money on Nkunku, right? But anyway. Change कर flank, yeah. Come on, the guy was open. Oh man. No, nice through ball. Sterling, is it not offside? I hope not. Sterling, no! What has he done? What has he done, man? Is he offside? He wasn't offside. It is Raheem Sterling, idiot. He's an experienced guy here. Indecisive.
और यह गोल होने वाला भाई. पेट्रोविच लकीली गेट्स एन इजी सेव फ्रॉम डोकू. भाई साहब इतना इनडिसाइसिव. Through ball from Enzo. Sterling का run था, he was not offside, guys. He could have even crossed it on the far post to Gusto, who was running in. Unmarked. Now I feel I'm unhappy, bhai. JS. I'm unhappy now, McKyle. Two यार chances which were भाई both chances of scoring. भाई भाई मैं तो भी होते तो ये चिप कर देते उसको यार, ये क्या था? वो उसको समझ में नहीं आई बात. वो बेसिकली बोलता ना, मतलब बत्ती बहुत सडन से गुल हो जाती है ना, वो वाला सीन हो गया उसका. He was भाई, अरे ये क्या मिल गया, ये तो भाई बोनांजा हो गया. और फिर it was too late to basically react. But that you expect from an inexperienced player, not from Raheem Sterling, right? नहीं, वो अपने टीम की पुरानी टीम है, उसने पहले लिवरपूल के खिलाफ उस दिन काफी को 2 नंबरी परफॉर्मेंस दी थी, और आज मुझे लग रहा है फिर वही होगा. आई भाई होप आई एम चैट यहाँ रॉन्ग. पर बोल रही है तो ऑफसाइड था, मे बी रिप्ले में लाइंस अभी तक ड्रॉ नहीं हुए थे, तो आई एम नॉट श्योर. यार ऑफसाइड क्या, बाहर में गोल तो करो पहले. या सॉरी चैट, आई एम गेटिंग इमोशनल गाइस, बट भाई वही बिल्कुल. वाली मैं बात है कि यार हमेशा हमारे साथ इससे ज्यादा ओपन चांस कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल. कितना ओपन लेकिन चांस, क्या करें? वो अपने हाथ भी बांध ले पीछे, क्या चाहते और हैं, और मिखाइल टांगे एक भी और चीज बांध ले होती है ना, पीछे, एक टांग पे कॉन्फिडेंस. खेले. इवन इफ इट्स ऑफसाइड, मतलब द कॉन्फिडेंस ऑफ गोल द तो एंटायर मारो पहले, फॉरवर्ड लाइन इज गॉन डाउन आफ्टर दैट गोल मोमेंट. मारो. अब इतना सेट करते हो, अपनी आई सेट करते हो कि भाई ठीक है, मैंने फिर भी बॉल वाज ऑन टारगेट. येलो कार्ड. शिट मैन. येलो कार्ड मिल गया भाई. किसको मिला? कैसेडो को मिला क्या? कैसेडो का वो आने लग रहा था, देने वाला है. 34 minutes into the match, भाई कैसेडो gets a yellow card and we do not have भाई much people on the bench. Remember that as a like for like. Lavia is still long term injured. कुकू चुकू है नहीं. ही वाज वार्नड ऑलरेडी यार, पिछले पे उसको मिल जाना चाहिए था, रेफरी ने उसको वार्निंग भी दी पिछले वाले पे. But seriously भाई, मतलब Palmer is not visible. With all due respect, I disagree. मेरे ख्याल से there have been 2-3 beautiful balls by Palmer. I know not as much involved, लेकिन the reality is that भाई it's एतिहाद, और अभी डिब्रोइना का फ्री किक आने वाला है. अगेन येलो, इफ आई स्पीक आई बी इन ट्रबल, बट कैसेडो को मिला है. नाइस वन फ्रॉम लिवाई कॉलवेल. भाई लिवाई कॉलवेल अपना स्ट्रीम को सुन रहा लगता है. लिवाई कॉलवेल हेडर कमिंग इन. नाइस. गैलेगर ट्राइंग टू स्विच प्ले क्विकली, लेकिन एडिसन को मिलता है बॉल इजीली. पामर हैज बीन द बेस्ट प्लेयर. देवेश बोल रहे हैं अगेन इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. मैं बोलता हूँ आई वुड पुट एंजो. I think Enzo has been very good. I know people might not be seeing it, लेकिन Enzo का first touch pass has been next level आज. That's something that we expect from Enzo. क्या आप क्या बोलते हो? 35 minutes into game. मतलब I know it's not a great question when we have missed 2 sitters. यार टू बी ऑनेस्ट, एंजो मुझे तो ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन वो ट्रांजिशन में मे बी ही इज पार्टिसिपेटिंग. मैं तो अरे वो भाई देख रहा एक हूँ कि सेकंड. हालैंड टच. नो नो पेट्रोविच आ जाए. अटैक एफसी ऑलमोस्ट वाज हियर. हालैंड का फीबल टच था भाई. यहाँ पर डिफेंडर और गोलकीपर के बीच में कम्युनिकेशन लेट हुई, लेकिन लकीली पेट्रोविच वाज देयर टू टेक द बॉल. ठीक We'll है, come to ठीक है यार, we'll cover in half time in detail ठीक to है. third. बने रहना. लेकिन nicely held by Gallagher to win the free kick. लीवा कॉलवेल थोड़ा दिख रहा है गेम में. नाइस टू सी दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है उसका. बट ही इज ऑन द रन नाउ. और रबिश बॉल. commentators curse coming. Levi Collier rubbish ball gives it away to Man City like a Christmas gift, early one at that. और रहीम स्टर्लिंग यहाँ पर रॉड्री को फाउल कर दिया, एंड आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट फाउल फॉर अ चेंज. रहीम स्टर्लिंग हेल्प देयर, नहीं तो काउंटर आती बुरी वाली. लाइक स्टेरलिंग का बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो है कि मैं आई एम आउट टू हैव अ गुड टाइम टुडे. तो उस पता नहीं, मुझे जरा बहुत ही थोड़ा सा मतलब अग्रेशन, थोड़ा अग्रेशन चाहिए मुझे. या ही इंटेंसिटी मिसिंग लग रही है, as much as he नहीं started नहीं, the game well. इंटेंसिटी होगी, लेकिन मुझे बॉडी लैंग्वेज ऑफ लग रही है, क्योंकि वो ही इज टू रिलैक्स. लाइक थोड़ा आपको टेंस होना चाहिए, थोड़ा सा लाइक गेट इनटू द स्पिरिट ऑफ द गेम, राइट? कि भाई यू कैन नॉट मिस योर चांसेस एंड बी लाफिंग. गैलेगर गेटिंग फाउल्ड आई गेस, राइट? गैलेगर के अगेंस्ट फाउल है कि गैलेगर फाउल किया गया है? अरे भाई फाइनली समवन हैज सेड इट भाई. पुदिन थैंक यू भाई.
You all know that I was really unwell, bhai. Today, finally, I'm feeling a little bit better. Although, abhi bhi my nose is crazily blocked, if I'm being honest, with two thermoses next to me. Like, big up to McKyle, yaar. Always helps in the watch-alongs on weekends. Again, I couldn't have carried this, especially for this big game, without Debojit. By the way, big up to him as well, and McKyle, of course. लेकिन यहाँ पर Gallagher coming off क्योंकि he took a break, so he has to come off for a few seconds, I believe. McKyle, इस वक्त वैसे इट्स अ टॉक फॉर लेटर, लेकिन मैं आपसे I'll come back to it. But who can be sold from our squad for money for summer? तो it गैलेगर has का to नाम be आता है Sterling. बार बार. It has to be हाँ, Sterling because सऊदी में स्टर्लिंग ले लेगी क्योंकि एक ऑफर आया था शायद. दैट्स व्हाट द रूमर्स एटलीस्ट से कितना, 100 लास्ट से. मिलियन? जो भी हो ले लो बस. एटलीस्ट 50 मिलियन तो होगा ही उसके लिए. तो पता नहीं यार, 15 भी मिलने तो बड़ी बात है. मैं तो कहता हूँ नहीं, परफॉर्मेंस सऊदी तो से इतनी तो आ नहीं है. जाना चाहिए. सऊदी से तो आ जाना चाहिए. परफॉर्मेंस तो ज्यादा भाई नहीं है. कुलीबाली के लिए मिल गया था. गुड ऑफर. बाय द वे गैलेगर इज कम बैक गाइस. ही इज नॉट इंजर्ड. होम नो प्रॉब्लम. लेकिन दैट्स गुड न्यूज. रेफरी ड्रॉप बॉल देते हुए सिटी को. अब अगेन इफ आई स्पीक आई बी इन ट्रबल वहां पर. लेकिन चिलवेल गिविंग स्पेस टू फोर्डन फॉर अ चेंज. यहाँ पर क्रॉस करने का मौका है वॉकर को, लेकिन 1-2 खेलने की कोशिश. यहाँ पर फोर्डन डेफिनेटली लेट और चिलवेल रेड द गेम और गिव्स अ थ्रो इन अवे टू सिटी. गैलेगर का सॉक्स चूहा काटा हुआ है क्या? नहीं. सो क्या होता है ना, देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल पुदिन. ईदर ही वाज फाउल्ड और सेकंड थिंग इज to get room to be able to run fast. Actually, you do that again. Having played the game, my coach used to say that. I don't know, Mikhail, if you have experienced that. मेरा कोच ना एक्चुअली बताता कि सॉक्स को बेसिकली आप फाड़ के रखो सो दैट यू कैन हैव योर पेस, क्योंकि इनसाइड द शूज एज वेल यू गेट सम मोमेंटम. आई डोंट नो व्हाट लॉजिक इज दैट बट इट यूज्ड टू वर्क इज व्हाट आई यूज्ड टू फील. नहीं भाई, मैं कभी इतना तेज नहीं था. मुझे कोच ने ऐसी कोई बात नहीं की कभी. मैं भी बहुत स्लो था इसलिए वो बोला था भाई. मेरा आ, Cam used to be the position, be a second striker, but not नहीं, वो fast. एक्चुअली द प्लेयर्स दैट हैव स्ट्रांग लेग्स, मसल्स, उनके लिए यस इट्स इजियर मे बी इफ क्रिएट सम रूम. वो सर्कुलेशन वगैरह के लिए मे बी इट्स नॉट द बेस्ट अगर वो आपने पहना हुआ. बट लॉट ऑफ प्लेयर्स डू इट. बट कई दफा तो वो स्टड्स लग लग के भी फट जाते हैं. सो वाज दैट अ फाउल इज द क्वेश्चन. आई डोंट नो. गुड पॉइंट. जीके का यहाँ पॉइंट है यहाँ पर मिकाइल दैट शुड चेल्सी कंटिन्यू विद दिस हाईलाइन अप्रोच क्योंकि वन बॉल इन बिहाइंड एंड वी आर डूम्ड. यार वो वाली बात है कि एंजो कम्स इनटू द प्ले जब आप मिड ब्लॉक डिप्लॉय करते हैं. हाई ब्लॉक में एंजो का तो रोल कोई ज्यादा है नहीं. नहीं. So I would argue कि but we did create a lot of good chances even then, right? So वो convert नहीं हो रहे. अब क्या करें, मुझे तो नहीं समझ आती. I have no answer. बट कि अगर लास्ट आप 5 मिनट में इट्स ऑल सिटी गाइस. इट्स ऑल सिटी ऑल ऑफ अ सडन. जो चांसेस चेल्सी को मिले हैं पहले हाफ में, वो पूरी गेम में मिल जाते तो बड़ी बात थी. और हमने कुछ नहीं किया उनके साथ. So वही वाली बात है. अब फजूल फाउल्स दे रहे हैं फॉर नो रीजन. कोल पामर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आई गेस. कोई जरूरत नहीं थी उस फाउल की. अब उसको भी कार्ड मिलेगा नेक्स्ट फाउल पर. Our width is gone for a change. Like Enzo keeping position nicely. Pretty sure it hit his face. Jackson, nice touch, brilliant touch by Jackson. Or Jackson got the ball back on the right hand side. Jackson can he cross? Yes. Sterling is there. Sterling, khatam kar ibar. Sterling khatam kar. Sterling khatam kar. Yes, man. Yes, Chelsea. Chelsea, 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 Chelsea. Get in, man. Yes. Raheem Sterling. Yes. Man City guy. Goes against City yet again. It is Chelsea 1. Deservingly so. Deservingly Chelsea are in the lead. Come on, man. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. Come on, Chelsea. स्टर्लिंग ने कहा मिकाइल को तो बताऊं मैं तेरा आज. भाई साहब, Nicholas Jackson OP in the chat, everyone. Let me not have Nicholas Jackson as shit. Nicholas Jackson did some world-class stuff in this. What a pass! What a pass! World Good class, cutback. world class 1-2 and a cross by Nicholas Jackson. Bhai, what a brilliant touch by him! First of all, to start the counter, and that is where Chelsea are using Sterling. The difference is
Compared to the first two chances, Sterling ने खत्म किया है भाई. City are behind. This is football, guys. When they're running towards their own goal, look how haphazard the defense can look. This is the Yes. trick. You have to capitalize in the moment when they are running towards their own goal. So this was exactly what we wanted to see. And thankfully, thank you Sterling भाई कि तूने finally एक चांस हमारा कन्वर्ट कर दिया. हालांकि ऑलमोस्ट लग रहा था कि टू लेट हो गया, लेकिन he did it. Doku shot Disasi in the box. Bhai, we have to be very careful. 3 मिनट अभी भी बाकी है, हाफ टाइम प्लस स्टॉपेज टाइम. वी हैव टू बी रियली ऑन आवर ब्लॉक्स, ब्रो. Habi is a very crucial moment, right, McKyle? I think arguably it can be the moment of the match by the next 3 minutes and stoppage time, no opinion. Or going into half time 1-0 is very crucial, right, McKyle? Yep. Sterling, bhai, This on is the we are come on Sterling, ये चीज. लोग यहाँ चैट में पूछ रहे हैं, McKyle अभी भी स्टर्लिंग को बेचोगे? बोलो. नहीं भाई, अगर अच्छा खेलेगा तो रखो, अगर नहीं अच्छा खेलेगा तो फिर जाए बेशक. लेकिन बात यह है कि आई वांट टू सी कि ये हमारे इतने डॉली चांसेस, हम इतने अच्छे चांसेस बना रहे हैं, वी नीड टू कन्वर्ट देम. सो बिग अप टू स्टर्लिंग, कोई मसला नहीं है. मैं आई विल टेक द एल इफ इट मींस माय टीम विंस. Absolutely. यहाँ पर क्रॉस है. नो भाई, दिसासी ओपी हो जा भाई. दिसासी की जो फिस्ट पंप, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट लेकिन डेंजरस हेडर दिसासी ने लिया है. सैंडविच बिटवीन टू सिटी प्लेयर्स, क्रॉस फ्रॉम फोर्डन. वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशनिंग बाय दिसासी. कहीं ना कहीं चेल्सी लकी भी थे, यू कैन आर्ग्यू, बिटवीन अ रॉड्री एंड अ हालैंड वाज दिसासी, और कंसीडिंग अ कॉर्नर, अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट आई थिंक इन द गेम. लेकिन यह गोल आ गया. शिट, नहीं. अरे भाई, गोल आ गया ऑलमोस्ट. बचा लिया. कॉर्नर वेल टेकन बाय सिटी, बट कुछ हुआ नहीं उससे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सम पिंग पोंग हैपेंड और फाउल दिया गया अगेंस्ट सिटी, आई बिलीव. ये क्या था भाई? ये क्या था भाई? What an improved performance by Disasi in the last month, Mikhail. ये कैसे नहीं हुआ गोल? अच्छा, डिसासी नहीं क्लियर किया. वाओ. Disaster who, bro? Chat बोलिए, disaster who? Disaster, no, decisive, yes, absolutely, bro. For a change, Disasi एक महीना का consistency दिखाया. I have to say it. Axel Disasi has upped his game, and also भाई crowd में jump करना and अलग acting antics that he does. कहीं ना कहीं he is becoming a fan favorite. रूडिगर वाइब्स, आई नो बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूडिगर थोड़ा सा इतू सा वाइब्स आ रहे हैं. जस्ट सेइंग. अरे कुशल इन द हाउस भाई. कुशल हाफ टाइम में बात करेंगे भाई डिटेल में. एक सेकेंड, लेट्स कंप्लीट दिस. लास्ट ये 2 मिनट बिफोर स्टॉपेज टाइम कंप्लीट, बिकॉज वो हार्ट अटैक एफसी कैन बी बैक. कुशल, यू नो इट. लेकिन बिग अप टू कुशल एंड दिसासी ओपी 100%. अंश यहाँ पर बोल रहे हैं पेट्रोविच इज एक्चुअली नॉट अप टू द मार्क, एंड आई थिंक ही हैज अ पॉइंट. पेट्रोविच हैज बीन ससेप्टेबल, आज लग रहा है थोड़ा, नहीं Mikhail इन द बॉक्स. Let's get to half time. Again, भाई साहब. Disasi again, भाई. What a brilliant dive clearance by him for a throw in given to City. लेकिन यहाँ पर follow up City has done very well. They might just score. छक्का मार दिया luckily City ने भाई, अल्वारेज ने. भाई साहब, Disasi OP भाई. As much as we were saying Nicholas Jackson OP for the goal assist as well as Sterling scoring, Disasi in the last 5 minutes, भाई माता आ गई उसके अंदर. Again touchwood. छक्का मार दिया, वरना यार ये तो जा रहा था. लेकिन क्रॉस है. नो भाई, गोल आएगा इस बार, लग रहा है गोल आएगा. De Bruyne on the right hand side gets the ball. De Bruyne with a high cross for no one, I guess. लेकिन City keep it. By City are turning it on. By City 5th gear में पहुंच गई in the stoppage time. Let's be real about that. लेकिन last minute and a half of stoppage time अभी भी remaining, I believe. वहां पर लेवा स्कोर किया बार्सिलोना वर्सेस. कांग्रेचुलेशंस फॉर बार्सिलोना. लेकिन दिसासी भाई दिखा रहा है पैशन फॉर श्योर. नो प्रॉब्लम कुशल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो दैट. ऑलवेज वेलकम ब्रो मेरे भाई. लेकिन यहाँ पर लेफ्ट विंग में डोकू भाई, गुस्तो इज गेटिंग बीटन ऑन द पेस बाय डोकू. इज इट कंसर्निंग?
नेथन की क्रॉस, हाँ हालैंड हेडर वाइड। मैकाइल बचा लो मुझे यार। दिस इज डिफिकल्ट टू वॉच ब्रो, दिस इज डिफिकल्ट टू वॉच। चेल्सी, अब लग रहा है चेल्सी ने स्कोर क्यों किया भाई सेकंड। पता क्या दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं छुप जाऊं जाके, अब मैंने नहीं देखना और। मुझे मुझे मालूम है कौन सी वाली मैच की याद आ रही है। इट वाज जोसे मोरिन्यो व्हिच 2015 और 2017 इतिहाद में, जहां पर हमने पूरा सख्त प्रेशर किया था और श्योरली गोल आया था ऑन द काउंटर। आई थिंक अरे 2-1 था, वही गेम था जहां पर लैम्पार्ड ने स्कोर किया था, इफ आई नॉट अरे, रॉन्ग। लैम्पार्ड ने हमारे वो खिलाफ जो स्कोर किया था या हमारे लिए? हमारे खिलाफ। वो तो हमारे अपने स्टैम्फोर्ड ब्रिज में था शायद। अच्छा अच्छा, मे बी आई गॉट रॉन्ग, बट नहीं आई थॉट ओके एनीवे। लेकिन भाई हाफ टाइम हो गया भाई, इट इज हाफ टाइम। Oh my God. Mikhail. And yes, people, bhai, it's not a technical glitch for people just joining in. It is half time. I know full time में चाहे हम हार जाए, लेकिन हमें जीतना चाहिए या ड्रॉ करना चाहिए कम से कम। एंड आई कहीं थिंक ना कहीं we have ऑन to keep. मेरिट, on merit we won the first half. On merit we Absolutely, were the better team over and over and over again. We were wasteful, we could have had 3-4 goals अगर हमने हर चांस कन्वर्ट किया होता, बट एज चेल्सी इज चेल्सी, हमने 3-4 में से एक कम से कम कन्वर्ट कर लिया, तो आई एम स्टिल हैप्पी कि चलो ठीक है 1-0 स्कोर लाइन है, विल टेक इट। एक एक्सेलेंट। हो जा भाई। Come on Chelsea, come on Chelsea, come on Chelsea, 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 चेल्सी Chelsea। चेल्सी, वेल हो जाए प्लेड, भाई एक और, वेल सब प्लेड लोग इन बॉयज। द चैट, बिग अप टू एवरीवन। सब लोग जो भी लोग बोले भाई 6-1 होगा, फाइनल होगा, 4-0 होगा, चलो ठीक है, आपके व्यू पॉइंट सराखों पर, एब्सोल्युटली भाई। लेकिन फुटबॉल अगर इतना इजी होता तो भाई हम देखते क्यों, हम फैंस देखते क्यों, प्लेयर्स खेलते क्यों? व्हाई वुड बी सो मेनी स्ट्रेटजीज? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई, इट इज पॉसिबल, इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर एंड इट कैन हैपन अ लॉट ऑफ टाइम लेटर। हो सकता है सिटी कम बैक, लेकिन कहां से शुरू करें भाई? सबसे पहले tactically speaking, are you, firstly, were you surprised the fact that Nicholas Jackson was more a striker compared to the left wing, considering जो हमने anticipate किया कि Chilwell might be having a problem? लेकिन मतलब should the midfield get the कहीं ना कहीं praise, क्योंकि Enzo and Caicedo haven't pressed as much as Gallagher. I am, but I think one thing that we were right in is he had a role to play. Jackson had a role to play today, and he's been effective. थोड़ा सा वी बिन वेस्टफुल, उसको भी चांस मिले, स्टर्लिंग को भी चांस मिले, वी कुड हैव डन बेटर, लेकिन थैंकफुली स्टर्लिंग वाज एबल टू कट बैक एंड कन्वर्ट दैट, एंड दैट मेड इट ऑल वर्थवाइल कि ठीक है, एज लॉन्ग एज यू गेटिंग योर चांसेस ऑन टारगेट, वन ऑफ देम विल गो इन, राइट। तो वो थोड़ा सा उस वक्त फ्रस्ट्रेटिंग था कि they weren't even getting the shots out. वो गोली was collecting every time it was one on one with the goalie. They were just kind of finding a way not to get the shot out. तो फाइनली ही वॉज एबल टू कट बैक एंड गेट द शॉट आउट। और उस वक्त अगर आप रिप्ले देखें तो इतना डिसअरे है मैन सिटी की डिफेंस में, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग टुवर्ड्स देयर ओन गोल। और यही मैं कहना चाह रहा था कि जितनी मर्जी आप ऑर्गेनाइज डिफेंस हो, इफ यू आर रनिंग टुवर्ड्स योर ओन गोल, दैट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज, एंड दे कैपिटलाइज्ड ऑन इट। बिग अप टू स्टर्लिंग। स्टर्लिंग को बहुत गाली दिया मैंने, लेकिन उसने दिखाया कि ही इज स्टिल अ प्लेयर दैट हैज द एबिलिटी to rise to the occasion and make a difference. और मैंने ये कहा था मैच से पहले कि Sterling does have the ability to turn a game. So it's just कि वो अब वही है ना, consistent नहीं मतलब इफ्स होता। एंड बट्स वाला मामला है स्टर्लिंग के केस में, और कहीं ना कहीं हाँ, इट्स गुड दैट ही हैज चेंज्ड दैट विद इन अ हाफ ऑफ फुटबॉल, एंड दैट इज वेयर बेसिकली यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लाइक स्टर्लिंग। एंड एग्जैक्टली। मैंने और कोई गलत बात नहीं की, मैंने ये कहा कि वेस्टफुल है, तो अगर वेस्टफुल नहीं है, by all means let's have it, because this is the difference. Look at ये पहले उसने एक इसी तरह कट बैक में उसने शॉट मारी थी, लेकिन वो कांटेक्ट सही नहीं हुआ था, तो वो कर्ल हुई थी लेकिन गोली के पास चली गई सीधा। इट वाज अ लोअर शॉट। दिस टाइम ही पुट इट लिटिल मोर, he put his foot through it for the one that he scored with, and it was such a beautiful cross by Jackson. So assist for Jackson, goal for Sterling. I want to see more of that. बिल्कुल। एंड गाइस अगेन एवरीवन वाज वाचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग अप टू एवरीवन, और साथ साथ में लाइक बटन दबा दीजिए फॉर श्योर, एंड ऑफ कोर्स चेक आउट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज देयर इज अ ग्रेट ऑफर। हैविंग सेड दैट गाइस, मतलब यू हैव टू से
I repeat it, there were people in the chat, I know भावनाओं में बह गए थे, मैं खुद बह सकता था for sure, और हमने खुद बोला था that up until that point जैक्सन का हमने प्रेस किया था, and then he missed that chance, and then we like oh no bro, and now we know why we are getting those criticisms of Jackson. लेकिन जैक्सन ने even coming back to the goal missed, yes absolutely, वो Palmer by the way, yes he was not as involved as normal, लेकिन Palmer and Enzo had some great first touches and through balls, which probably would have gotten more praise if Jackson and Sterling would have finished those chances. Although Sterling ka, I know it was offside the first chance, technically speaking, but Debojit in the house as well. भाई निकोलस जैक्सन को Debojit 25 मिनट के बाद में एक मोमेंट हुआ था जहां पर बहुत ही गाली पड़ रही थी, बट देन ऑब्वियसली चेंज दैट गाइस फॉर द गोल. आई नो असिस्ट की बात होगी, the way that he gave that cross, but Debojit, Nicholas Jackson on the turn, getting that soft touch back heel, starting that counter. Matlab, let's be real, if that same thing, with all due respect, would have been done by XYZ players of the social media favorites, we all know what would have happened. Are we not understanding the fact that Nicholas Jackson basically, if of course there's a big if that he finishes better, I think there is a great player in there. It's not a coincidence कि भाई back-to-back matches against City has performed well on the pitch apart from the goal. I agree to you, like मैं क्या बोलूं, 99%, but then that 1%, मतलब वो होता है ना, मतलब खीर तभी बनेगा जब everything will be in proportion. तो वो last touch is important. आप तब तक डिडियर ड्रॉगबा नहीं हो जब तक that one last flick of your head is not in place, not top right corner. You're not the Champions League winner if you slip on a penalty from the spot kick. 2 minutes, man. I'll be back. Carry on. No problem. Carry Please on. continue, Debojit. Forget about you, man. Okay. So like दो very important cheese, Sterling misses and Jackson misses. We could have been 3-0 up against the top-notch side in the Premier League. We could have said a statement कि हाँ भाई देखो हमें भी potential है. We are not the champions right now. Potential है, बंदों में दम है, कर सकते हैं, जिगर है, जो हम लोग always दिखाते हैं कि Chelsea is a we kill big. It's a big fish. When it comes to big games, we always clinch top notch. हम लोग हार जाते हैं. We have lost to people. I mean, like games like Fulham, Wolverhampton Wanderers. We have lost to like these clubs. But जब बड़ा game होता है, we do come back. We do show our potential. We do play up to the strength. But दो goal missing it on this soil, Pep is not gonna sit quiet. Pep will come back. Stoppage time. You know what? Stoppage time reminded me of the Champions League stoppage time final wala first half का stoppage time. It was so bhai. And you bhai footmob.com. Sorry, with all due respect, I'm using your data. I know that. Totally disagree with Disasi ka rating. If anyone is telling me Disasi on the pitch wasn't the man of the match, seriously was a goal line save back to back. Like even if you see in the Hindi commentary, माता आ गई थी Debojit, माता आ गई थी Disasi के अंदर. Crazy bro. Are we jumping the gun? लेकिन Disasi का the people who said he's slow, he's that, is this. ये मतलब I mean like गोल किया है बंदा ने, ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है. बट बिल्कुल भाई राहुल या तो बोल रहे जैक्सन असिस्ट फॉर द हाईलाइट. अगेन द हाईलाइट देखो तो काफी लोग यही बोलेंगे अबाउट बेसिकली द असिस्ट. बट इफ यू सी चेल्सी का टैक्टिक क्या हो रहा है ना राहुल, यहां पर फुल बैक्स आर बेसिकली स्टेइंग एज फुल बैक्स, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि यू वुड एक्सपेक्ट कि लेवाई कॉलविल है और दिसासी है तो आप जरा कॉम्पैक्ट करो. नो, दे आर स्टेइंग एज फुल बैक्स, दे आर प्रॉपर फुल बैक्स, or either of Sterling or maybe at times Jackson or Palmer actually tuck in कर रहे. तो आप देखो first 5 minutes में भी एक half chance बना था on the turn. Sterling was in that second playing as a central midfielder, क्योंकि एक extra man होता है तो he's asking for the ball and then one Sterling turn and counter. left back पे. Exactly. तो वहां पर counter, that is where Poch has to be given credit, for once, Debojit. And like अगर हम लोग like if we move up from this also, like carrying on to what you were saying, Casedo like बंदा मार के खेल रहा है.
Like he gave one shot. देखा कि हाँ भाई चलो भाई I'm onto his feet. फिर he's going in for the challenge. He's taking in, which we knew कि हाँ fine Chelsea कर सकता है. When we had that right flank open from Joe, like Bosingwa was like taking from the right flank and left from the Ivanovic. Like पुराना team को revive करने के लिए वो memories वो याददाश्त लाने के लिए we have to get in the players. छोड़ दो ये सब. Bring into the new team. If you see Cole Palmer, when he's moving up the flanks or when he's pulling down, the biggest thing is he is not letting left flank of Man City being fluid. वो बिल्कुल रोक दे नहीं, रहा है. लेकिन वो वहां वो पर ना process मतलब कैन वी नॉट नहीं आ रहा है. क्वेश्चन पेप. मतलब आई नो मैं हमारा क्या तो औकात भाई पेप ग्वार्डियोला को क्वेश्चन करे टैक्टिकली, बट द फैक्ट इज देबजीत, आई थिंक they are playing with this 3 to 4 run formation ना, तो all the onus is on Doku to do that. जो आप बोल रहे हो ना, you're right. तो वहां पर basically he's getting outnumbered at times, although he has beaten Gusto a couple of times. You have to give him credit as well. He has beaten Gusto a couple of times and Alvarez छक्का मार दिया and he should have taken a shot better. I get that. लेकिन Nathan Aki is not a traditional fullback. वही बोल रहे हो ना, Chelsea के fullbacks are playing like fullbacks और Full उनके backs. wingers and midfielders are kind of tucking in. I think that would have been a better strategy. So with all the people saying that we should go back 5, I will not be surprised if City go back 4. What do you say? अभी अभी 45 मिनट है ना इन दिस हाफ. अभी अगर स्टार्टिंग से बैक फाइट चले जाओगे ना, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. आई ऑलवेज बिलीव दिस. Whether you see the like stopgap people who have come in like from Ancelotti era, or if you see Conte ka his tacticals, attack is the best form of defense. If you see one more thing, if you are saying we are like playing into a funnel, like they are creating funnels where they are trying to pocket out Enzo को जगह नहीं मिल रहा है खेलने के लिए. That space is being used by Gallagher. अगर नहीं, वो भी लेकिन छोड़ देते मैं हैं. वहीं पर एंजो को भी मैं एक्चुअली प्रेज करूंगा. द रीजन इज यस यू आर राइट दैट ही इज नॉट गेटिंग स्पेस, लेकिन एंजो के फर्स्ट टचेस हैव बीन ब्रिलियंट. हिम एंड जैक्सन के फर्स्ट टचेस मतलब बाइंड बॉन्ग नहीं रहा है. मतलब मैं वापस से बोलता हूँ गाइस, अगेन एंजो का तो भाई देयर इज इनफ हाइप. आई डोंट थिंक वी नीड टू क्रिएट एनी हाइप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर ओन प्लेयर. लेकिन वही जो फर्स्ट टचेस से जो एंजो लिया और फॉर स्पेशली जो जैक्सन लिया ना, इफ say for example, I don't want to take names क्योंकि वो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी हो जाएगी, but you know what I mean, जो सोशल मीडिया पॉपुलर loved ones जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग वो टचेस The लेते हैं known ना players. फर्स्ट, then the headline would have been different. And Equation, that is where I think I think what, in a very weird way मैं देवजीत बोलूंगा, एंजो को not having that extra space and time is a good thing, because एंजो अपना जो क्वालिटी है ना, in that 1 second is able to show rather than basically taking an extra touch on the ball. I don't know if people might feel I'm weird. And ये tactical move भी हो सकता है अगर हम लोग दूसरा, if we see from Man Counter City's के लिए. point of view, वो अगर फोकस करे एंजो पे, तो एंजो इज ट्राइंग टू like मुझ पे फोकस करो, 4 बंदा मुझ पे लगा दो ताकि अलग जगह से पॉकेट बने. Exactly, and that is what basically we need to be make sure that we take advantage of the situation. But I think अच्छा, again one more thing, credit is to Poch. Gundogan there? Is Gundogan there on the sideline? नहीं, Gundogan तो is gone to Barca no on the summer. But he's already gone to Barca. लेकिन anyway, Gundogan- Cobra यहाँ पर Kovacic is on the bench. Remember guys, Kovacic अपना Chelsea man is on the bench. Again, it could be possible that they make changes. I will be really surprised if they make changes right away. जैसे Debojit ने भी बोला, that is City we are talking about. Chelsea I don't think need to make changes. I know काफी लोग chat में बोल रहे हैं Caicedo को change करो. किसके साथ change करो भाई गौरव? है कौन? आप Caicedo को लाओगे? young guy man, he's almost a teenager if I'm not wrong. I'm not going to get Caicedo. We don't have a Lavia on the bench, bro. We don't have a No, good they are being afraid कि ये बंदा ऑलरेडी येलो yellow कार्ड card. खा लिया है. Correct. तो नहीं, देखो यार, लेकिन इतना I think it's nervous working. I think we'll keep him. I know risky है, but अगर we get someone, it could only be say someone like an Nkunku जो at best scam आएगा, तो अपना tactic पूरा different हो जाएगा. जो हम बात कर रहे थे, because people are Nkunku marking is or only rather one man. going close to Enzo. Yeah, continue please. No, so Enzo, अगर I mean if you bring in Nkunku, तो ये फिर मतलब it's gonna be like a pivot. तो वो he's gonna be a lone striker. फिर false nine नहीं खेलेगा. The number 7 is not gonna be there. Like Sterling and ये जो खेल है ना, the duo which actually is penetrating from both the sides, ये नहीं फिर होगा नहीं. So
Exactly. And Putin बोल रहे to be honest, we are rest of the season I won't complain about tactics, players and all. Just somehow top 7 कर दो and 1 cup trophy. शनाया बोल रहे चेल्सी एक दो पास पे मिडफील्ड ओपन कर देता है बहुत. लीड पे हाफ टाइम पे मौका है कैपिटलाइज करो. लेकिन शनाया वो स्टॉपेज टाइम मतलब if you're a Chelsea fan it was heart attack FC being back unless you say that भाई दिसासी को क्रेडिट दो. पेट्रोविच बाय द वे शाउट आउट टू देबोजित स्पेशली क्योंकि देबोजित ने बोला था भाई हाफ टाइम पे आऊंगा या तो 1-1 पर या तो 1-0 पर. और 1-0 पर है भाई, हमने बात ही किया था. लेकिन पेट्रोविच के बारे में यू सेड दैट ही माइट बी द प्लेयर टू वॉच. ही हैज हैड वेरी नर्वस गेम, वो दिख रहा है मुझे. भाई बच्चा है, आएगा ही. हाँ मतलब we don't need to judge that, right? It's too early to judge him, right? No, if I say what Shania is saying कि like मौका है, whatever it is like, but अभी इस टीम पे जो है फाइन, वी आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चलाएगा, यू नो, बिग शूज टू फिल इन, बिग नेम्स टू फिल अप. ठीक है यार, इन लोग का तरीके से खेलने दो, झेलने दो. हिट तो आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, हर तरीके से आ रहा है, हर मतलब कोई जगह छोड़ा नहीं है जहाँ पे जैसे लाइक रामेश से आई नो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर डिजासी, बट यार फाइन. टोनी रूडिगर भी एक दिन में टोनी रूडिगर नहीं बना है. Exactly, he had a terrible 6 months, remember, before Lampard basically got sacked. वो टोनी रूडिगर, दैट जर्मन लाइक बुलडॉग बनने का पहले टोनी रूडिगर वाज जस्ट अ टोनी रूडिगर. तो यार टाइम दो. एंड द मोस्ट, इफ अगर पॉजिटिव साइड से देखो यार, थियागो सिल्वा, द मैन हु डज गोल लाइन डिफेंसेस, ये बंदा भी गोल लाइन डिफेंस, बॉल चला गया था लेफ्ट हैंड साइड में, स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड में बॉल चला गया था. कोई किसी पेट्रोविच वाज टेकन लाइक बाय सरप्राइज, बॉल चला गया. बट हाँ, वी हैड समबडी जो बार पोस्ट का नीचे है, जो बॉल फ्लिक किया है. तो यार झलक आ रहा है, समय दो. फाइन, कोचेस फाइन ब्लेम कर रहे हैं, बस प्लेयर लोग पे अपना धीरज रखो. या चिलवेल इज अगेन थोड़ा डगमगा जा रहा है वो चिलवेल. बट सेकंड हाफ देवजीत मेरा तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस इन द चैट, आप लोग बोलिए. लेकिन हमने टाइम स्टैम्प वापस शुरू करना है 48 मिनट्स पर, लेकिन मेरा शुरू हो रहा है. देवजीत सेकंड हाफ प्रेडिक्शंस, एवरीवन इन द चैट. विक्रांत तो बोल रहे हैं चेल्सी जीतेगी, लेकिन गोल्स आर कमिंग फॉर श्योर. मुझे भी लग रहा है गोल्स तो आ रहे हैं. मैंने इनिशियली बोला था 2-2. आई फील दैट वी माइट जस्ट मेक इट 2-1. व्हाट आर यू सेइंग देवजीत? 1-1. लेकिन वो मिस ऑफ अर्ली जैक्सन मिस and that offside miss of Sterling will come back biting for the confidence agar by chance that becomes a 1-1. क्योंकि let's be real, as much as Haaland had that free header, you know, we were the better team. and Haaland had only one free header. ये भी देखना पड़ेगा. I told you इसका कट जाएगा अगर केविन डी ब्रुयने बॉल सप्लाई करना बंद कर दिया तो. केविन डी ब्रुयने पता नहीं उसके क्रॉसेस ऑन पॉइंट नहीं आए, लेकिन we all know the class player he is having age. Yeah, लेकिन Alvarez has been disappointing if I'm being honest. लेकिन यहाँ पर काइसेडो टैकल लो डोकू के लिए आया भाई. No man, heart attack FC is back already भाई. In the beginning of the second half looks like it. 1-1 बोल रहे वेद भी यहाँ पर. Bhai, that was dangerous man. Caicedo almost tripped Doku in the box. Caicedo बोल के हम मार के खेलेंगे भाई. तोड़ फोड़. Caicedo fouling. Rodri चुप रहे यार. Sorry guys, लेकिन गुस्सा आ रहा है. Man City are making sure that they talk to the referee on every little bit of touch भाई. हवा बॉल नहीं है, फुटबॉल है सालो. Sorry guys, Man City fans, I know you're offended right now. मैं भावनाओं में बह गया हूं, लेकिन the fact is what Man City are doing to the referee is unnecessary. You don't need to do that. You're a treble winner, bro. Come on. Every थोड़ा सा होता है रेफरी की बात कर रहे भाई. What is this man? मतलब if you are asking yellow card for that Rodri, seriously bro. हवा बॉल तू खेल यार, तू फुटबॉल मत खेल. लेकिन De Bruyne in a great position guys for a free kick. Very very dangerous point. I remember Hazard taking one from here. Yeah, but De Bruyne by Petrovic, is he in the right position? Maybe it's a Petrovic moment जो देबोचिन ने कॉल किया था. 48 minute going on right now guys. Four man is there right in front of me, a 4-man wall. नहीं, तो कोल पामर को देखो लेटा हुआ आराम से. Like people don't exist. That was a free kick, yes, absolutely. अरे भाई बच गया. Top surface of the goal on the outside. नहीं, पर अगर होता तो स्ट्रेच करता बंदा, बिकॉज़ काफी टाइम मिला था उसको देखने के लिए. करेक्ट. डिप इतना नहीं हुआ है at the same time. I am a fraction second back behind you guys. So
Yep, मेरा absolutely fiery, रिएक्शन भी bhai. लेट Big ले up to जाने you वाले हैं. for saying it. Again, if I speak, I'll be in trouble, fiery, if you know it. लेकिन दिसासी यहाँ पर putting in gusto on the wing, who doesn't kind of keep position. और यहाँ पर हम 48 minutes होने वाला है, तो we are going to basically restart the time. एक second दीजिए मुझे. और Mikhail will be joining in a couple of minutes, guys. लेकिन यहाँ De Bruyne on the wings gets a क्रॉस एंड दिसासी हर जगह मौजूद है भाई. दिसासी कैन ही कंटिन्यू, दैट्स द होल पॉइंट. अभी मैंने शुरू कर दिया गाइस. मेरा टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो स्क्रीन पर 4804 4805 4806. दैट इज माय टाइम स्टैम्प. इफ पीपल आर अनेबल टू वॉच, आई एम एकदम सेइंग इट. बराबर चल रहा है, नेक टू नेक. Doku on the wing taking a cross. No! Oh, far post में luckily no one is there. Attack FC was almost there. In between three players, bhai. In between Petrovic and the one City and Chelsea player. हाँ यार, nobody was there on the far post. that was the dangerous ball. डोकू का अच्छा बॉल था, बट Your भाई commentary is coming आरवी before my game. मतलब आरवी गोइंग अल्ट्रा डिफेंसिव फॉर नो रीजन. हाँ पता नहीं यार, बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं हम लोग, अटैक में नहीं जा रहे, पेट्रोविच विंग्स बैड काम नहीं कर रहे. क्लियरेंस. व्हाट इज दिस ब्रो. काइसेडो का भी डर है एब्सोल्युटली गौरव, जो काफी लोग बोल रहे हाँ हैं यार, चैट में. कैसेडो को लग रहा है यार ये 10 जन ना कर दे, इसको सब कर दो. लेकिन मैं वही है ना, आई अग्री एब्सोल्युटली, आई एम विद द सेम. हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं. मतलब इफ यू आर टेकिंग हाँ, ऑफ बोला है. गैलेगर टू दैट रोल, देन रॉड्री को कौन ब्लॉक करेगा भाई. एक सेकंड, फ्री किक चेल्सी को मिलना चाहिए. यस मैन, वॉकर, अरे काइल भाई वॉकर, ऐसी गेट अ नाच लाइफ, रहा है, ये गेट अ ऐसी लाइफ नाच. काइल वॉकर. सॉरी देबोजित एंड एवरीवन भाई, आई एम लूजिंग इट. आई एम लूजिंग माय शिट ओवर मैन अरे सिटी. काइल वॉकर मैन भाई, सिटी अल्ट्रा यू नॉट हैट्रिक इन द कर लिए फॉक्सेस भाई. एनीमोर. ये फॉक्स गेट अ छटपटा रहा है ऐसे लग रहा है. विनर्स. ऑस्कर नहीं जीतना आप लोग को. क्या रबिश. ड्रामा है बॉस, सच्ची में. क्या डाइव दिया है, क्या डाइव दिया है बेटा. अरे बाप रे हाँ. बाप, पूरा एकदम आई डुबकी, एम लूजिंग कबड्डी माय वाला शिट ब्रो डुबकी लगा पूरा अगेन. एकदम. Big up to the chat and Debojit. I would have lost my shit over this, bro. 100% Man City. I will write and give you 100% पेनल्टी मिल रहा है at some point. 10 अपील में से एक मिलने वाला है मैन सिटी को. Either Caicedo red or penalty is coming, guys. That is human tendency. वार, नो पेनल्टी नो फाउल, क्या है यार. वार देखी वही शर्म की बात है in my opinion. अब वार पे जाना पड़ा. अरे भाई ये तो ऐसे टकला सर पे हाथ रख रहे कि पेप गुआर्डियोला क्या भाई, बहुत ज्यादा बॉल कर दिया अपने आप को भाई. गोट मैनेजर होगा भाई. अभी के लिए थोड़ा सा नाटक कम कर. as much as you are a goat and you remain a goat, but अरे let's be real. बिल्डिंग यहाँ पर पामर गेटिंग द बॉल ऑन काउंटर. राइट साइड में गुस्तो को मिलता है. मान लो गुस्तो गिविंग बैक टू पामर 1-2, लेकिन पामर ब्लॉक्ड बाय 3 प्लेयर्स ओनली टू क्रॉस. लेकिन बीच में है भाई, क्रॉस करो इंशाल्लाह. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट सिटी, विल इट. नहीं, रूबन डियास इज देयर इन द मिडिल. अरे भाई एक सेकंड, काउंटर. नो नो नो, व्हाई आर वी सो स्लो. केविन डी ब्रुयना अगेंस्ट फोर्डन, लेकिन भाई नो, गोल आ गया. अरे लकीली मिसेस ब्रो. हालैंड मिसेस विद द फार पोस्ट. वेयर इज द डिफेंस. उसको बंदा सच्ची में यार. व्हाई आर वी प्लेइंग लाइक जॉर्जिनियो पेस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय गॉड. अरे भाई साहब, मिकाइल गौरव मुझे जवाब दीजिए. एक सेकंड देबोजीत. गौरव मुझे जवाब दीजिए. एवरीवन, काइसेडो को सब करो, किसको लाओगे? देन टैक्टिकली आप गैलेगर खेलोगे. हु विल बी बेसिकली प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट? वेयर इज द टैक्टिक गॉन? बट एनीवे देबोजीत, प्लीज कंटिन्यू. यू सेइंग समथिंग. सॉरी. चिलवेल स्लो हो रहा है बहुत. पेस वाज प्रीटी स्लो. व्हाई इज चेल्सी गिविंग देम स्पेसेस टू मूव? गेम का पेस स्लो कर दो ना यार. Yeah, Sanchez is, I believe, is he back on the bench? Let me just check. Sanchez, bench पर नहीं है क्या आज? आई डोंट नहीं है थिंक सो. इंटरेस्टिंगली. नहीं है बेंच पर नहीं है. बेटिनली है. आएगा नेक्स्ट मैच में, आ जाएगा बेंच पर. बेटिनली इज नॉट लाइक. अरे भाई लेफ्ट साइड में ओपन अप किया है. Let's see what Jackson can do on the left hand side. Getting the ball from Chilwell. भाई अरे यार ये लेफ्ट फुट में कहां लेता है यार बॉल. अरे उसको चिल्लाए क्या होगा भाई. यू हैव टू गिव इन लाइक. बॉल में पावर नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था. बॉल घुसाने तो नहीं होने वाला है भाई. ये मैन सिटी है. कोई नहीं आएगा भाई, आएगा एक और आएगा. I think a goal is coming by either ways. अब I hope it's for Chelsea. He's been injured, Wade. If you follow our channel every stream, you know that we cover the injury news before every preview. But yeah, he's been injured. It's a long-term injury. He's expected to be back only by April mid.
in terms of match fitness. After one transfer window. लेकिन nice pressing Gallagher द्वारा, but to no avail. Have City changed anything tactically? मतलब I can see a back four. नहीं भाई गौरव तो बोल रहे ब्रिंग कैसेडाई. नहीं यार, इट विल बी हार्श ऑन कैसेडाई मैन, टू बी ऑनेस्ट. एक सेकंड क्रॉस आया. गुस्तो शुड हैव डन बेटर, बट ठीक है. जस्ट अबाउट ग्लांस द बॉल लकीली ऑन द फार पोस्ट. डोकू को मिलता है बॉल, गिव्स इट टू नेथन आकी, ऑफ कोर्स चेल्सी एकेडमी कैप्टन इन द पास्ट भाई, फॉर अ ईयर आई रिमेंबर. जैक्सन का डिसेंट, और यहाँ क्रॉस है. नो, इस बार गोल आएगा. लकीली हालैंड डज नॉट रीच इट ऑन द लीप. डोकू को मिलता है ऑन द फार पोस्ट दो, और देखता है वो कैन ही बीट पामर. ही प्रोबब्ली विल प्ले इन आकी. आकी हैज द एबिलिटी टू क्रॉस, लेकिन पामर गेट्स इन अ नाइस ब्लॉक. आई थिंक थ्रो इन है. सिल्वा भी इंजर्ड है. सिल्वा को ग्रॉइन इंजरी है, लाइक वी कवर्ड. ब्रिंग कैसेडाई, आई वुड डिसएग्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. अगेन हो सकता है आई एम प्रूवन रॉन्ग दैट ही गेट्स अ रेड कार्ड कैसेडो, लेकिन कैसेडाई आई विल गेट हिम. मतलब कब, एट व्हाट पॉइंट विल यू कंसीडर गेटिंग कैसेडाई? एट व्हाट पॉइंट? कॉर्नर लकीली डिफेंड किया हमने. काउंटर सही होने वाला है. पास कर भाई, पास कर. बॉल होल्ड मत किया. अरे इतना दूर तक कौन देता यार बॉल? आस्ते दो ना यार, बीच से दे रही. पेनिट्रेशन सीखना चाहिए यार. पेनिट्रेशन कोई नहीं, आएगा भाई, आएगा. लेकिन यहाँ केविन डोना फर्स्ट टच कमिंग. मारो गुस्तो ओपी भाई. मिकाइल हियर भाई, मिकाइल. क्या चल रहा है बॉयज? सॉरी यार, I'm just taking care of a few things. No problem. Why you taking care of Man City? Well said. Gallagher brilliant, लेकिन heavy touch. Big up Debojit. Nice. भाई सेकेंड हाफ का आप रिकैप दे दो भाई चैट में सब लोग, जो हुआ है मिकाइल को. मिकाइल हार्ट अटैक एफसी यार वो, मुझे लग रहा है जिस तरह इंजरी टाइम खत्म नहीं हुआ, चल रहा है बस. वही तो. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे हाफ चांसेस नहीं बन रहे, वो भी बन रहे हैं. वो मुझे थोड़ी सी एलर्जी है व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक. तो वो अंडर प्रेशर है, एंड वी आर ट्राइंग टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, एंड वी आर लूजिंग पोजीशन इन आवर ओन हाफ, एंड इनवाइटिंग मोर प्रेशर. डिड अ ब्रिलियंट टर्न. बन रहा. गुस्तो क्रॉस कमिंग इन. कम ऑन. नो, चिलवेल ऑन द रिबाउंड. नो भाई ब्रिलियंट सेव्स यहां पर बाय मैन सिटी, आई मस्ट से. लेकिन शुड वी हैव डन बेटर? वी आर्गुएबली शुड हैव डन बेटर. अब विल कम टू हु मिस्ड एटसेट्रा. लेकिन एंजो विद द बॉल अभी भी रख रहा है. एंजो विल बी एबल टू प्ले चिलवेल? यस. चिलवेल विल ही क्रॉस? यस. लेकिन विल गुस्तो शूट? नो. नेथनाकी है. गिविंग इट बैक टू कैसेडो ऑन मिडफील्ड, गेटिंग इट बैक फ्रॉम कैसेडो. गुस्तो ऑन द विंग, नेथनाकी ले रहा है उसको भाई. जैक्सन के साथ 1-2 खेलने की कोशिश, और आई थिंक द अटैक इज ऑलमोस्ट गॉन, ऑल्दो चेल्सी के पास पोजीशन है. Oh my God, Edison भाई must be giving him the Ankit. ओन गोल होना चाहिए था I ना. have to say Debojit, that was the moment यार. Chelsea should have finished it in my opinion. Chelsea should have finished it. I know great save second वाला, लेकिन पहला चांस किसका था? जो पहला चांस मिस हुआ ठीक है. ये प्रेसिंग रहना चाहिए, डर पैदा करना चाहिए. जो डर गया वो मर गया, सीधा बात है. उसको डर, वी आर प्लेइंग दैट गेम. वो डर किस तरह, वो डर इसी तरह पैदा होता है, कि यू एक्चुअली स्कोर फ्रॉम दोस पोजीशंस. फिर ये दे विल स्टार्ट डबल गेसिंग देमसेल्व्स. सीजर इंजर्ड पुदिन, कम ऑन, यू शुड बी नोइंग दैट मेरे भाई. बिग अप. जैक्सन का था भाई. लेकिन सब लोग, can we have Cole Palmer OP in the chat? That turn Cole Palmer did, which created that opportunity. Again, we remember the last bit before the miss. लेकिन the bit before that is something which was very crucial. बोलते ना, the assist before the assist almost. Cole Palmer OP हो जाए भाई. Malo Gusto and Cole Palmer OP. Them two kind of created the chance. I must be saying it. Cole Palmer especially with the turn. लेकिन अभी Doku on the left hand side free, getting it from Aki. नहीं बीट किया भाई गुस्तो को. He has got a cross in. This Kasi OP भाई. keeping out Erling Haaland and Alvarez. अपना भाई. Axel, this Kasi OP in the chat. Come on guys. Debojit looks like मारे इस पुदिन बोल रहे हैं. अरे compliment bro for Debojit. बिल्कुल भाई. कोल पामर भाई साहब. मिकाइल, दिस इज इन ऑन 6th गियर भाई. चल रहा है मैच.
कुछ समझ नहीं आ रही मुझे ये क्या हो रहा है, एक हाफ से एक गोल से दूसरे गोल, एक गोल से दूसरे गोल। गोल आने वाला है किसी का, वो तो पक्की बात है, एक मिस्टेक आने वाली किसी की। तो कितनी और प्लेटें बना तैयार करनी पड़ेंगी, कितनी और थालियां बनाने पड़ेंगी कि एक तो भाई भाई 20 कन्वर्ट कर बना दो। दिए, और फिनिश बनाना बोला मुझे भाई, लगता है गाली देना पड़ेगा किसी को, बताओ किसको गाली दूं। भाई साहब मैं तो बोलता हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो काइल वॉकर को बड़ा गाली दिया। माइकल, यू मिस्ड इट जस्ट एज हाफ टाइम स्टार्टेड। उसको गाली देना है, वो उन गोल करवाना है उससे, चलो मैं दे देता हूँ उसको गाली। क्या बकवास प्लेयर है यार ये। बंदे ने स्टर्लिंग को शर्म आ जाएगी भाई, स्टर्लिंग जो खुद एक डाइवर है, स्टर्लिंग को शर्म आ जाएगी जो काइल वॉकर डाइव किया था। मैंने देखा वो, मैंने उसने जो बाद में ड्रामा किया, वो नाटक चेल्सी प्लेयर करता तो रेड कार्ड मिल जाता वहीं पे। हाँ बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन कोई नहीं भाई, जैक्सन एज मच एज इज मिस्ड टू, आई रियली जेन्युइनली बिलीव निकोलस जैक्सन का जो कनेक्ट है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, एक्सेल डिसासी, निकोलस जैक्सन, कोल पामर भाई आर हैविंग सम गेम्स फॉर श्योर। बट यहां पर सिटी के पास है पोजीशन ज्यादा, उड़ मत अंकित बोलेगी चैट। मिकाल ऐसे देख रहा है, टीवी ऊपर में, लैपटॉप नीचे में। तो भाई यार मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ बॉयज, सो बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं कोई नहीं। क्रॉस आया नो, अरे भाई नाइसली डन बाय लीवाई कॉलवेल, हेडर लेकिन फॉल्स टू नेथन एक्की। इफ यू डोंट माइंड, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ 2 मिनट, कुछ मिनट के लिए। आई नीड टू डील विद समथिंग, बट ऑडियो ऑन है, सो आई कैन हियर यू गाइस। बिल्कुल अमन, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से इट इज द बेस्ट और एनीवे क्लोज टू इट। व्हाट आई एम सेइंग इज आई सी व्हाई पॉच हैज पिक्ड जैक्सन, आई आल्सो सी दैट। वो शिट, नेथन एक्की बाय फ्लोरिंग गैलेगर, व्हाट वाज दैट? स्लिपर, गोल आने वाला है, गोल आने वाला है, बचा लिया। मत बोलिए। अरे भाई एंजो फर्नांडिस ओपी हो जाए भाई यहां पर। द लास्ट हाफ एन आवर विल बी अ डिफिकल्ट वॉच इन माय ओपिनियन, बहुत बट लंबा प्रेस किया था उधर में। Nathan Aki is having some game, bro. Nathan Aki is having some game. मतलब you know what, Debojit, I don't know if you agree, हाँ येलो कार्ड मिला है, लेट्स सी किसको मिला है, आई थिंक कोल पामर को मिला है भाई। देबोजीत, आई थिंक नेथन आकी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन फुटबॉल ब्रो, पीरियड। उसका कंसिस्टेंसी लेवल आई थिंक इज अंडररेटेड। ही मे नॉट बी योर थियागो सिल्वा और द वर्जिल वैन डाइक्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ही ऑलवेज never too high. I never rated him too high. Like उससे बेटर नहीं, भाई लेकिन रूबन मिस्टेक्स डियास। कम है ना बंदे का। एज अ डिफेंडर फर्स्ट थिंग व्हाट यू वांट इज लेस मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट आई सी। But if you see like mistakes कम है, then तो भाई I will say Reece James any day. This guy is rated like, उतना रेटिंग मिला नहीं है, बंदा is like too good right now. He's not in the team, but Reece James is like stalwart. नेथन आकी को सिटी फैन से नहीं रेट करते इतना। गोल आने वाला है, फोर्डन शॉट बचा लिया, नो गोल आने वाला है, नहीं बचा लिया भाई। चेल्सी ओपी भाई, पेट्रोविच, आई डोंट नो हु वाज इट इन द डिफेंस, प्रोबब्ली दिसासी अगेन आई एम गेसिंग, लेकिन इट वाज अ मोमेंट बिटवीन फोर्डन एंड हालैंड भाई। वी आर कीपिंग इट आउट, बट गोल इज कमिंग, goal is coming, looks like it. Doku cross to Foden volley, two shot on target। यार वो एक गोल को लेके कब तक भागोगे? यू हैव टू स्कोर अनदर वन। अपना चांसेस अपने मिस करना छोड़ दो, मान जाओ प्लीज। और इतने गोल्स मैन सिटी ने, इतने चांसेस ज्यादा टीमों को नहीं दिए होंगे मेरे ख्याल में, जितने वो चेल्सी को दे दिए। दैट्स ट्रू भाई, एक तो बनने वाला है, लेकिन मिकाइल गंदी वाली फीलिंग भी आ रही है साथ साथ में। वो आ तो रहा है, लेकिन वो इसलिए आ रहा है कि सर पे चढ़ाया हुआ है। गोल आ गया और बच गया भाई। रॉड्री, यू नो व्हाट, इन अ नॉर्मल सिनेरियो दे माइट हैव स्कोर्ड दिस। ओ माय गॉड, व्हाट वाज दैट ब्रो, व्हाट वाज दैट? ऊपर से डोकू जो है, डोकू जो चाहता है वो कर लेता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं हम, इट्स नॉट वर्किंग। मिकाइल मतलब वुड यू क्वेश्चन मालो गुस्तो हैज नॉट बीन लाइक फैंटास्टिक वाला लेवल जो रहा है रिसेंटली इन दिस मैच? मालो गुस्तो की बात नहीं है, अगर एक प्लेयर से नहीं संभाला जा रहा, somebody else has to step in and help। मालो गुस्तो हो या रीस जेम हो, जो भी है, अगर चिलवेल दूसरी साइड पे स्ट्रगल कर रहा है, आपका जी चिलवेल इज नॉट गुड इनफ, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? द पॉइंट इज somebody else has to help out, step up. Again on the counter we might get a chance. Ved and Gaurav, you have a point. This is the right time to make a change. Petrovic gets a yellow card already, bro. ये क्या हो रहा है भाई, बहुत नेगेटिव खेल रहा है बंदा। लेकिन on the counter Nkunku is a great substitution right now. I agree with your points absolutely. Sterling Nkunku
लेकिन जो मिकाइल ने बोला, स्टर्लिंग might be able to give you that defensive ability that maybe Nkunku may not. Jackson does not trail back. वापस नहीं Jackson आता. does, but नहीं उतना हाँ नहीं. मतलब स्टर्लिंग को हटाएंगे यार ना आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि आपने कैसेडो को उतार लो, गैलेगर को पीछे खींच लो, स्टर्लिंग को मिडफील्ड में ले आओ और कुकू को आगे ले आओ। बट वो मिकाइल वही है ना कि गैलेगर का रोल जो है ना मेन, बंदा आ रहा है. टू कीप रॉड्री ऑफ दैट स्टर्लिंग कर सकता है, स्टर्लिंग इज फ्लीट फुटेड, स्टर्लिंग कैन डू अ हाई प्रेस लाइक स्टर्लिंग चल गया. गैलेगर, ही Sterling कैन नॉट coming off. टैकल लाइक गैलेगर बट ही कैन प्रेस। Guys, Sterling coming आ off. रहा है। Debojit called it. आई थिंक काइसेडो अभी तक है भाई। मिकाइल ने एक चीज बोली थी, इफ आई रिमेम्बर राइट, पॉच ना, आई थिंक देबोजीत ने बोली थी, मिकाइल ने बोला भाई, इधर पॉच जानबूझ के रखता है लोगों को ऑन द पिच इफ दे आर ऑन येलो कार्ड। दैट इज द प्लान गाइस। मिकाइल अग्री? हाँ पता नहीं क्यों बोला मैंने लेकिन वो यही हो रहा है, यही हो रहा है एग्जैक्टली। और वो हर एक स्ट्रेस गेम होता जो है है ना, मिकाइल, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट हैपेंस। नहीं वो गैम्बल है, और वो हर मैच में नहीं चलता, वो किसी ना किसी मैच में इट विल कॉस्ट यू राइट। सो अब वो फिर हम गालियां देंगे कि क्यों क्यों किया इसने, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कुकू आ रहा है बॉयज, गोल Yeah, होना he's चाहिए कम already से come कम। for Sterling and Bernardo Silva has come on, guys. Bernardo Silva has come on for Alvarez, who surprisingly had a bad game. Alvarez had a bad game. Directly मैं बोलता हूँ, Julian Alvarez had a bad game for City. I genuinely believe that. ओए बड़ा डेंजरस प्लेयर आ गया यार। Ruben Dias is quiet. Ruben Dias, yes. नहीं वो तो Yeah, वही this मैं is बोल रहा हूँ ना, गैलेगर वाले पॉइंट, ही इज नॉट अलाउइंग देयर बेसिकली, क्या बोलते हैं, डिफेंस टू बेसिकली अटैक कहीं ना कहीं। Defense line to come up to the नहीं, center third. हालैंड गोल कमिंग, बचा लिया भाई पेट्रोविच ओपी भाई। डेबोजिट कॉल्ड इट व्हेन कमिट द आवर कमिट द मैन भाई। पेट्रोविच ने बचा लिया, लेकिन कॉर्नर है और क्विक कॉर्नर टेकन बाय सिटी। डोकू शॉट कमिंग और छक्का मार दिया भाई। अब पेट्रोविच ओपी हो जाए इन द चैट। हालैंड शॉट भाई, भाई मुझे हार्ट लगा अटैक ये एफसी गोल चल होने रहा वाला है। है। लो जी, शॉट कॉर्नर ले लिया, ओ माय गॉड, छक्का। अभी मिकाइल पीछे अभी कोई नहीं, यार कोई नहीं, हॉटस्टार नहीं है मेरा। आएगा आएगा। बिल्कुल अच्छा सेव था भाई। मोमेंट ही कुड हैव पैनिक्ड इन द सिचुएशन, लेकिन ही स्टूड हिज ग्राउंड। कहीं ना कहीं देवेश, अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ द डेविड डिया मोमेंट्स इन द फर्स्ट सीजन, जब वियर्ड पोस्चर्स होते थे लेकिन सेव करता था। दैट काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पर 1-2 खेला ब्रिलियंटली, गैलेगर ऑन द काउंटर, और ऑफसाइड रहेगा मेरे ख्याल से, इंकू को ऑफसाइड है मेरे ख्याल से, लेकिन हिज शॉट डजंट गो एनीवेयर। छक्का मार दिया एंजो ने भाई साहब। नो नो मैन, डिप करो यार, डिप करो, डिप. I think it was not Jackson. I think it was Nkunku and Enzo Pudin. As much as Jackson misses all the chances, but हर मिस को आप जैक्सन के नाम मत दो। Nkunku missed that chance. अच्छा नहीं, एंजो ने शॉट ले लिया, एंजो ने शॉट ले लिया और उसको जैक्सन को लेने नहीं दिया, तो जैक्सन गालियां दे रहा है उसको कि तूने क्या किया। बट हाँ, बट आई थिंक कि वो ऑफसाइड थी, पूरी मूव ऑफसाइड थी। लेकिन ऑफसाइड थी, मुझे भी लगी, हाँ, लेकिन और ये गुस्टो को 2-on-1 कर रहे हैं वो, लेकिन गुस्टो को हेल्प कोई नहीं कर रहा। correct. And Nkunku should be also criticized to some extent that he shouldn't be offside in that moment. हमारे तीनों प्लेयर ऑफसाइड थे उस मूव में। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि हर मिस का नाम है जैक्सन, हर सेफ का नाम है डियासी। अरे भाई साहब, मिकाइल, देबोजीत, चैट, all these missed chances, I know couple of them offside थे technically, but कहीं ना कहीं एक बैड वाइब आ रही है यार। एक ना एक अब नेक्स्ट लेवल यही है कि एक रेड कार्ड भी मेरे ख्याल में ड्यू है, सब कुछ हो गया। अब मैं अपने को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि और हार्ट अटैक कितने हो सकते हैं। और तो 34 मिनट में इस वक्त इट्स टू फार टू गो मैन, वी नीड टू गेट दैट गाय ऑफ, किसी और को डालना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर लाएंगे भी ना आप, कैसेटा इज टू यंग फॉर इट्स, आई नो ही काइंड ऑफ इज देयर इन द स्क्वाड टू प्ले, लेकिन बोलो ये कैमरामैन को दिखाने के लिए कौन-कौन सब प्रिपेयर हो रहे हैं साइडलाइन में। मतलब टू बी कैमरामैन ऑनेस्ट दिखाई नहीं रहा, ऑप्शन से नहीं यार अपने पास मिडफील्ड में। इट्स सरप्राइजिंग आफ्टर स्पेंडिंग सो मच, आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ इंजरीज मिडफील्ड में। 5 इंजरी में चल रहा है अपना बड़ा। हाँ भाई, गौरव, यस इज द आंसर।
जीके बोल रहे ब्रिंग चालोबा हिन, चालोबा, हाँ चालोबा है यार बेंच पर, दैट्स अ गुड पॉइंट। चालोबा तो आएगा तो उसमें आएगा ना, डिफेंस में वो आ ये जाएगा फिर। टू प्ले इन मिडफील्ड बट ही हैज नॉट प्लेड एंटायर सीजन, आप सडन से उसको ऑफ पोजीशन नहीं डालोगे मेरे भाई जीके, लेकिन बैक फाइव बोल रहे जीके, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल हेल्प, क्योंकि वी आर इनवाइटिंग मैन मतलब सिटी। ये क्या, मतलब जीके जीके इन क्या बोला, चालोबा को अपना चैट में लाने के लिए लास्ट टाइम की तरह, या फिर मैदान पे? नॉट रियली, लेकिन यहाँ काउंटर हो रहा है, नाइस का काउंटर स्टार्ट बाय इंकुंकू, जैक्सन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड गिविंग इट, एंजो। Enzo giving it to Enkunku. अरे Enkunku bhai यार, should be doing better. Come on, man. डमी क्या खेला यार, डमी खेला यार थोड़ी ना। Grealish is injured. Yes, Devish. Answer is yes. जैक ग्रिलिश। They have Oscar, Bob, Mateo Kovacic on the bench, Matthias Nunes on the bench, if need be. कोवा आएगा तो यार ये गेम इतना वेस्टफुल क्यों करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी ब्रेक करके आगे से बॉल गोली को दे दिया, मतलब कि आई डोंट गेट इट। Right side से भाई ये Levi Colwill corner. इतना कोई मुश्किल मूव नहीं था वो, मतलब कि ही वाज ओपन पाथ था, आई डोंट नो। Yeah, Levi Colwill is not that bad, but the thing is, the moment he takes on someone one on one, right? थोड़ा बहुत डर तो लगता है, I'll be real. कोविल इज नॉट दैट यार वो कॉर्नर बहुत बहुत तेज लेते हैं कॉर्नर्स, वी हैव टू बी अवेयर, एकदम कॉर्नर ले लेते हैं। बच गया, but ball back to Man City of the corner. अरे भाई चेल्सी शुड हैव बीन 4 बाय नाउ, अगर सही से खेलता। Yeah, फर्स्ट actually, हाफ का 2, you're इस right. हाफ का 1। मतलब which were like sure shot goals होना चाहिए था, मतलब one was Jackson first chance for sure. जैक्सन स्टर्लिंग के तो एक एक शोर शॉट होने चाहिए थे। स्टर्लिंग वाला तो भी लेकिन और ऑफसाइड एक था ना किया ना टेक्निकली। अभी सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में भी अभी वाला या पहले वाला, फर्स्ट हाफ वाला? नहीं, दोनों नहीं जैक्सन के ही फर्स्ट है। हाफ You में 2 मिस किए थे, 2 तो श्योर शॉट था ना फर्स्ट हाफ जो में, और दोनों सेकंड हाफ जो दोनों पैरों में रह गए थे, गोली ने पकड़ लिए थे, वो क्या थे जो गोली को चिप करना चाहिए था? नहीं, उन लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करना था, गोली को भी देना चाहिए लाइक Enzo इवन। Fernandez OP guys. नहीं बाहर अरे बाहर बाहर। लेकिन he played it out, only to play it out of the pitch for a throw in, लेकिन Gallagher has kind of kept it short, but Levi Colwill clearing it। भाई पिंग पोंग चल रही है यहाँ पर, Chelsea are playing like it's the 90th minute already। मैं वही कह रहा हूँ, इंजरी टाइम है पूरा सेकंड हाफ। Yeah, again Hardik, not a big deal bro, I know नहीं City भाई, of last 6 years, but come on, we are Chelsea as well bhai। Carefree wherever we may be, we are the famous CFC, we know what we are, we know what we are। भाई पुतिन आज चलो जीके ने अभी बुलाया अरे था भाई, आगे हम लोग आए थे। जीके ओपी भाई, पुतिन सही बोल रहा है यार। पामर इज ऑफ, यस गाइस, व्हाट, ये क्या सब्स्टिट्यूशन है? व्हाई नॉट काइसेडो ऑफ? यार ये आया बाहर मुझे मार वाली बात है। मतलब Palmer is off, मतलब I get that when you are countering you need pace and he's not the exact guy for pace, लेकिन he's the guy to open that counter, to give that pass। Nicholas मतलब he is Jackson going after for missing 2 goals सेंटर is बैक। on the pitch। ये कहाँ खेलेगा ये बंदा? वो इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं। बीच में तो खेल रहा है बेटा। बैक 3 कह रहा है, बैक 5 कह रहा है, क्या कह रहा है? 5 बैक When 5 we are बाय in गुडनेस, possession we'll get to बॉल know ना actually। मतलब गोले की तरह आएंगे पूरा। उसने जो Disasi इशारा OP किया भाई, वो nice header। ऐसे किया है। अब आई डोंट नो वो 4 था या 5 था। 3 होना चाहिए, या 3 या 4, राइट? 3 होगा शायद, आई थिंक बैक 3 है टेक्निकली, बट वो बैक 5 बन जा रहा है चलो obviously। बा क्लियर्स, नाइस। 5-3-1-1 भी हो सकता है। हाँ वो ये लगता है, लेकिन अरे भाई क्रॉस है, नो बचा लिया भाई, बचा लिया, ओह बचा लिया। लीवाई कॉलवेल गॉट अ टच गाइस, एंड ऑफ कोर्स पेट्रोविच कोविल गॉट को इट। हटाना चाहिए था। पामर वाज येलो कार्ड, चलो ठीक है, पॉइंट हार्दिक का पॉइंट है क्योंकि येलो कार्ड पर से सिमिलर टू, लेकिन भाई वो एक मिड प्रॉपर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, तो यू वुड रादर थिंक भाई अबाउट गुडनेस, गेटिंग। सब कोई ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे बॉल यार ये गोल हो गेम जाएगा, अपने गोल 6 हो यार्ड बॉक्स में हो रहा है क्या, बाकी ग्राउंड में नहीं खेलना? मैं इसलिए बोल रहा हूँ मिकाइल, आई एम सरप्राइज्ड विद पामर गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज फॉर मी पामर हैज दैट एबिलिटी टू पुट दैट वन बॉल व्हिच कुड काउंटर, यार पहुंच के सब पहुंच जाने, हम क्या जाने।
लकीली लेवाई वॉच कॉलिन के स्टार्टिंग लाइनअप हमें नहीं समझ आया आज तक, तो ये तो सब नाइस solution है। टच भाई, लेफ्ट साइड में ओपन अप हो सकते हैं, नाइस बॉल फ्रॉम गैलेगर, चिलवेल इज देयर, लेकिन इज इट बेसिकली लिटिल बिट टू स्लो, चिलवेल इज लिटिल बिट स्लो टुडे फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन कुड ही क्रॉस इट टू गुस्तो, नो ही कुड नॉट नहीं स्विच, नहीं, नहीं यार, कॉलवेल इज डूइंग वेल इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, आई मस्ट बी सेइंग इट, हम और ब्रेक भी नहीं कर सकते, हम करते क्या हैं फिर? हम देखते भाई हैं। नाइस नहीं, गेम सही भाई, बात है, सही बात है। अगर आपको ब्रेक मिला है, आपने ब्रेक भी नहीं करना, तो करना क्या है फिर आपने? होल्ड करना है। बस मैं होल्ड ऐसे करना है और इसको किसी तरह बस 1-0 फाइनल विसल हो जाए। So that's gonna be man, it's gonna be a long टू हाँ 35 बिग minutes. फॉर बार्गेन। या तो यहाँ पर वेद बोल रहे हो, जो चीज मैंने बोला था पामर कर सकता है, वो अब एंजो का रोल रहेगा, मे बी, यस एब्सोल्युटली ही स्टर्लिंग कुड डू दैट, स्टर्लिंग कर सकता था, या पामर में भी, आई डोंट नो, वन वन इनकुंकू भी वन कैन वन हेल्प, वन बट आई जस्ट डोंट सी द एनर्जी कि जब हमारे पास ब्रेक का बॉल आता है, हम हाँ बॉल लेके बस 20 यार्ड भाग के थक जाते हैं खुद ही। करेक्ट, और आई थिंक वन थिंग इज द फुल बैक्स आर टायर्ड, आई डोंट नो इफ यू गाइज ऑब्जर्व्ड, आई कैन सी दैट द फुल बैक्स आर टायर्ड, यार, इतना हाँ यंग नहीं, आई प्लेयर कैन आई अंडरस्टैंड, ऊपर से हमारे जो थियागो फॉरवर्ड्स हैं सिल्वा वो को भी ला हाई दो यार प्रेस इससे कर रहे हैं, सही। वो भी टायर्ड है। नहीं, थियागो सिल्वा को ला दो यार, उससे कई गुना ज्यादा जोश है उनमें। इंजर्ड है भाई, इंजर्ड है, अरे नॉट ऑन द बेंच, यार, ये लूज बॉल खेल रहा है ना, दिया सी देखो लूज बॉल खेल दिया एक तो। कोई नहीं, आई थिंक पहला मिस्टेक बन देगा यार दिसासी का, दिसासी इज हैड अ क्रेजी गेम ब्रो, नॉट गोइंग टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हिम फॉर नाउ, अप अंटिल वी कीप अ क्लीन शीट ऑफ कोर्स, बिग क्रॉसेस, यहाँ पर अरे भाई बार हैंडबॉल बार अपील होगी, लोइंग सिटी, वापस एक डिसासी मोमेंट कमिंग इन, लुक्स लाइक इट, चल, भाई नहीं डिसासी सेलिब्रेटिंग दैट बचा लिया मोमेंट, लेकिन हैंडबॉल मेरे ख्याल से वी आर नोइंग सिटी एंड इफ आई स्पीक एम इन ट्रबल विल बी चेक्ड, आई होप सो नॉट, डाइव मारा है, Pep is basically on the sideline already to put ऑन pressure द to the इज referee and आउटसाइड द साइडलाइन, inside the pitch. अपना दायरे के Like बाहर चला गया है। through ball try करते हुए Foden unsuccessfully and we have lost the ball yet again. This bar we should have kept यार उसको Nkunku a खींच little bit खींच के better. उसने बॉल वापस ले लिया, लाइक रेफरी कुछ नहीं बोला, कमीज खींच खींच के उसने उसको बॉल ले लिया उससे। भाई काइसेडो नहीं दिया है भाई फ्री किक, डेफिनेटली मत मत उसको देना। चाहिए था गिर जाता। De Bruyne उठ जा, कुछ नहीं, अपने आप को अरे तू तुम्हारे, किया अरे है, बॉल तुम्हारे पे है, देख तुम्हारा टीम यार ये क्या डाइव थी De Bruyne की, यार इस पे कार्ड नहीं मिलता। नहीं वो अपने आप को ट्रिप कर दिया बेसिकली, आई डोंट थिंक इट वाज द डाइव बट आई थिंक ही ट्रिप्ड हिमसेल्फ हिटिंग काइसेडो, मुझे तो पूरा डाइव लगा यार, वो फ्लाइंग सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ गया बिफोर इवन देयर वाज कांटेक्ट। नो 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 नो, अरे भाई कॉर्नर, बर्नार्डो सिल्वा गेटिंग इन देयर समहाउ, और अच्छा कॉर्नर जीता मिकाइल, सिटी ने, you're there on Instagram bro, I try to tag you there but मिला नहीं, क्या नाम पे हो इज भाई? ए ब्लूज मर्चेंट, Blues Merchant। एट ब्लूज मर्चेंट। I've tagged him I think in my post, you can check it out, but again big up to people, everyone do check out the post on Instagram, let's give भाई Debojit and रुको रुको McKyle रुको, fun अभी as अभी well. रुको, fingers crossed। KDB वाह, corner, oh no, Foden has got the ball back, KDB trying अरे to play वाह, 1-2, Malo Gusto बचा लिया नाइस भाई, Malo नाइस Gusto, नाइस। brilliant stuff by Malo Gusto bhai, read the game really well in that moment, only for a throw in to be given to City. KDB putting in Foden yet again, Foden छक्का मारते हुए क्रॉस किया है इस बार, लेकिन हालैंड यूजिंग हिज फिजिकलिटी, बर्नार्डो सिल्वा क्रॉस कमिंग इन, गोल आने वाला है नहीं, नेथन आकी was a little bit too short, luckily ball was long और गोल किक भाई है। कोवा इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, हाँ साइडलाइन पे कोवा देखो तैयार हो रहा है। या इंकुंकू रस्टी लग रहा है, अग्री विनीत, दैट इज द होल पॉइंट, वी वर क्रिटिसाइजिंग पॉच, considering what Nkunku has the ability and we know when बट fit what चालोबा इज ability he ट्रैकिंग has, बैक, हाँ चालोबा ये बॉल भी ट्रैक बैक कर रहा था, देखे। बिल्कुल, लेकिन हाँ कमिंग टू विनीत पॉइंट, अब कैरेबो कप फाइनल में एंकुंकू शुड हैव बीन मैच शार्प, आई थिंक पॉच हैज टू बी ब्लेम्ड वहां पर, लेकिन अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन नाउ। अरे जीके तो बोल रहे हैं हालैंड का बस हो गया बस, भाई क्रेडिट टू दिसासी ब्रो, क्रेडिट टू कॉलवेल इन द सेकंड हाफ, यहाँ पर अरे ये गैलेगर लोग नाइस बराबर टैकल, डाइव करते जा रहे हैं यार, मतलब क्या है यार, मैन सिटी डाइव किए ही जा रहा है। हाँ यार, मैं वही कह रहा हूँ कि किया, इतनी डाइविंग पे कोई कार्ड नहीं मिला चेल्सी को। जैक्सन को कितने डाइविंग पे कार्ड्स मिले हुए हैं? अग्रीड, डोकू ऑन द लेफ्ट विंग, अरे he beats everyone, अरे भाई who was that this time, Levi Colwill OP भाई, Levi Colwill is the अच्छा right भाई, foot ये ब्लू वाला कार्ड कब से शुरू होने वाला है?
एक और गोल आने वाला है, बचा लिया, किसको लगाना है? नाइस कर लिया भाई, अर्लिंग हालैंड हेड्स इट ओवर, दैट शुड हैव बीन अ गोल इफ यू आर अ सिटी फैन। भाई चुल्लू भर पानी ढूंढो अभी राइट नाउ, जैक्सन को जितना हम खुद देते हैं गाली, अर्लिंग हालैंड has missed a sitter guys, as much as it's not as easy as it seems, but हमें मौके पे चौका मारने का मौका मिल गया। और मुझे लगता भाई है कि वो साहब, जो हमारे प्लेयर्स को है वो उनको भी लग रहा फीलिंग आ रही है भाई, फीलिंग आ रही है भाई सिटी फैंस को। ये एक चीज देखो, है। अपना कंटेजियस है भाई, भाई कंटेजियस ये है। चीज देखिए, अपना गोलकीपर कैसे गिरा है, फ्री फॉल है अच्छा, यार, आराम से Debojit and गिरेगा। McKyle, you guys remember, OGs, everyone in the chat, De Bruyne missed a sitter in that game जहां पर चेल्सी ने बीट किया था 2-1 away, if I remember right. Correct me if I'm wrong, guys. I don't know if it was at Stamford Bridge or Etihad. De Bruyne had one of the misses of all time. I know Torres की बात होती है when that, but I remember that game like anything. और that moment is what this moment was for Haaland. SJFC by big up, absolutely by no problem, no problem. You're welcome always. Uh, didn't expect this from Chelsea. Why not? Why shouldn't you expect? Because we are the Pakistan of the cricket and the West Indies of the cricket. With all due respect, sometimes they're world class. Sometimes you know what to get. You know that, and McKyle exactly वर्थ would क्लास। me right. अरे भाई क्या याद करा दिया। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान ऑलवेज नो ना क्रिकेट में कि भाई एक दिन में वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, एक दिन में यू नो व्हाट टू गेट इन। चेल्सी इज बिकम लाइक दैट इन फुटबॉल नो। बिग अप टू एसजीएफसी फॉर द सुपर चैट। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट रुको साइड रुको रुको रुको, अभी बन रहा है, कुछ बन रहा है। अपना हाफ में मैच जा रहे, कॉर्नर जीते। बॉल कॉर्नर, we just भाई consider डोकू one से corner once डोकू again। तो जो उसको फ्री पास मिला हुआ है, जो मर्जी उसको करना है कर लो, नोबडी इज इट अ टचिंग। टैक्टिक मिकाइल? मतलब मे बी उसको कोच ने नहीं, बोला वो है ही इज टू गुड, नोबडी वांट्स टू टेक हिम ऑन। उनको पता रूबन है ये डियास is Ruben Dias is here, गोल आएगा। डिफेंस अरे में खड़ा है बंदा। भाई चिलवेल ओपी, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा गेटिंग द गोल आएगा और बच गया। फार नहीं पोस्ट नहीं मिस्ड नहीं, बाय बहुत बर्नार्डो लंबा सिल्वा। था, देख के लग रहा था ये नहीं जाता है, लंबा था, वाइड वाइड भाई एंड ऑफ। लेकिन सिटी का यू नो दैट चिलवेल, दिस गुड काइंड गुड ऑफ, जॉब। अरे भाई कोई नहीं कोई नहीं। भाई, ओए होए 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 होए, गोली भाई कहीं भी नहीं अर्लिंग था। हालैंड ट्रिपल कैप्टन किसने 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 किया है अर्लिंग हालैंड को बता दीजिए चैट में जल्दी से। एफपीएल में अरे अपना तो एफपीएल का पासवर्ड तक भूल गया यार। मेरा भी सेम है ऐसे केस। देखे देखे देखे, वो आउट इ- इ- वो गोलकीपर फ्री फॉल, पूरे फ्री फॉल। अरे नहीं यार पुदन, इंजरी किसको नहीं चाहिए यार, वी डोंट वांट टू विश इंजरी फॉर एनीवन। आई नो भावनाओं में भेज आते हैं हम समटाइम्स पुदन। वॉचलॉग जोक की गोली को तरह। पता है गोली। सो ये थोड़ा सा लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह लो कि वो थोड़ा सा रूटेड हो जाता है अपनी लाइन पे। सो ही नीड्स टू फिगर आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट हैबिट। you have to commit one side or the other and try to फार पोस्ट में भाई not be on the heel। फार पोस्ट में हालैंड ने केप्ट द बॉल, दैट वाज अ बिग डील। लेकिन बिग अप टू चिलवेल फॉर बीइंग देयर। देखो डोकू जो है ऑन डिमांड, वो क्रॉस पे क्रॉस, जब डोकू के पास बॉल आती है आपको क्रॉस डिफेंड करना पड़ रहा। नाइस Again, I don't want the headlines to be because City missed chances that guys, it's 80 Chelsea won. bloody 80 minutes and we are one up against MCI top 3. Did any bloody even person भाई आर्सेनल expect this? लिवरपूल फैंस के डीएम्स आने वाले भाई, लव यू ब्रो वाले आज रात को। आई नो दैट। अगर जीत जाते मुझे हैं तुम 10 लोग मिनट कैसे कर दिया, कैसे कर दिया वो भी। we had like so many shots on target, on target। अभी ये कौन है? अरे aggressive change। Cassidy coming in, guys. Cesar Cassidy is coming in, or Nicholas Jackson is off. McKyle, what is it? Caicedo is still on the pitch. Yellow carded. Caicedo is still on the pitch. क्या कर रही हैं यार। ठीक है, हमें फॉरवर्ड नहीं Pochettino, चाहिए अब। bro. Pochettino. अब you have to close shop I guess, but This is let's Poch see। mania, guys. Poch mania अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है उसका। भाई पैरेलल चले, कुछ भी चले भाई, अपना एक Cassidy गोल का coming लीड on. तो लेके रखा है भाई अभी फॉर्मेशन का खेलेंगे अपन, लेकिन अभी निकोलस जैक्सन वाज प्लेइंग लेफ्ट विंग राइट। भाई नो चलो खत्म। कोई नहीं है अभी नहीं नहीं यार नहीं, पिंग पोंग बॉक्समैन रॉड्री गेट्स दैट बॉल एंड स्कोर्स मैन, लाइक इन द चैंपियंस लीग फाइनल फ्रॉम द लेफ्ट फुट दो दिस टाइम। लेकिन भाई इट इज व्हाट इट इज मैन, इट इज व्हाट इट इज।
It is what it is. होना Come था, on. it was coming. It was coming. We didn't. I don't know. Matlab, I know that City had a lot of chances. You can argue that they deserved it, but to be honest, it feels like a loss right now. नहीं, वो आपने बोला था अभी कि भाई 80 मिनट्स हो गए हैं, तो मैंने बोला था कि 80 मिनट्स तक तो हम भी खेल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो यूजुअली, तो यही। लेकिन दिस वाज ऑन द कार्ड्स, इट वाज कमिंग। कितना डिफेंड करोगे, कितने चांसेस वो मिस करेंगे? वो तो दे वर नॉट इवन शूटिंग ऑन टारगेट। ये पहला शॉट है जो सेमी टारगेट पे आया, डिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। वही बात है बट कि ये एक शॉट मारा, एक शॉट टारगेट पे चला गया। ये टीम कितना चांस दिया चेल्सी को। हाँ, और हमें हमें इतने चांसेस मिले, तो फिर अब वही वाली बात है ना कि शायद हमने वो एक की बजाय 2 या 3 कर लिए होते तो इट वुड हैव नॉट We मैटर्ड। should have won this, भाई। 7 मैचेस हो गए। We should have won नहीं this. नहीं, मगर ये बात ये है कि अंकत भाई, वी मिस दीज चांसेस एवरी गेम, सो वी शुड हैव वन इट, लेकिन वी शुड हैव स्कोर्ड ऑल ऑफ देम एंड बीन टॉप ऑफ द लीग एज वेल। जितने चांसेस हमें मिले जो हमने नहीं लिए, किसी को नहीं मिले प्रीमियर लीग में। आई थिंक वी आर टॉप ऑफ द मिस टेबल Hmm. गोल चांसेस मिस्ड। आई थिंक वी आर टॉप ऑफ द टेबल इन दैट स्टैट। सो Yeah, ये it भी was हमारा coming actually. ये भी हमारा कैरेक्टर है, लेकिन अभी भी ठीक है, वी कैन प्ले फॉर अ ड्रॉ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वी विल। लेकिन आई शुडंट बी सो नेगेटिव। The draw is still there and the win is still there. If we can score one more goal, we can still take the game. Yeah, No, again, we need wait, to have the Aman, you guys are mentality. really like right. We are not only playing defensive to our strength, but we also not fighting back. वो जो मतलब counter attacks होने वाला है, the मैं वही move बोला। which हाँ, मैं यही बोला कि जब काउंटर मिलता है तो काउंटर भी नहीं करते, थक जाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? व्हाट आर यू प्लेइंग फॉर? We win a free kick. Wow, come on. Yellow card for City, guys. Come on. As much as they deserve that goal, you can argue भाई referee के लिए clap भाई। तालियां हो जाए referee के लिए भाई। City player gets a yellow card, man. Let's all clap, man. Let's all clap in the chat भाई। With all due respect to City. बर्नार्डो सिल्वा को मिला क्या yellow card? हाँ, But come बूढ़े on, you know what? यहाँ पर मैं पॉच को बूढ़ा blame नहीं सिल्वा करूंगा honestly. Yes, Debojit, please. बूढ़ा बर्नार्डो सिल्वा को मिला है। No, but honestly, I will not blame Poch. I know that Caicedo wala you can question, and the way that the team was. Dekho yaar, we are playing against City after basically being 10th in the league, after basically what we have been through as a young team. I can see that why these guys are basically going inside the shell. Missing chances, it's an individual thing. I don't think we can blame Poch. Generally, I'm not too happy with Poch. I agree with that. Like in this match, I don't know if I can blame Poch as such. I don't know. यार McKyle, where गैलेगर are you? ओपी हो जाए यार। गैलेगर ओपी, Gallagher. गैलेगर अकेला बंदा है जो लग रहा है ही इज प्लेइंग। नहीं, one more thing which I really find missing, the missing link है ना, मतलब when Sari ball used to be there ना, there was one leader in every half. Striking end में there was one person. When you were in the midfield, like midfield to the the ones who were the blockers. हाँ, मतलब someone who takes the ownership at every. Yeah, Kante was there, वो बीच में। वही और अगर एक्सपीरियंस बोल दो, वही अगर that's what we defensive were third trying में to say. जाओगे, there was Dave. There was somebody to hold that place कि हाँ It'll ये come, बंदा ये it'll take गार्डियन time. को लेके आगे जाएगा, कमांड करेगा, कमांड फ्रॉम आइदर बिहाइंड, और ये यहाँ पे है नहीं, उसीलिए पीछे यार सब कोई दे गोइंग इनटू द शेड। ये देखो फिर ये I बॉल said of पीछे playing back खेलना यार, यार, that's ये a dangerous ball. डाउन। भाई to be honest, don't be surprised. मतलब I know optimistic होगा और optimistic, लेकिन मैकल ने बोला काउंटर पे अभी भी एक चांस तो बनेगा कम से कम। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक भी चांस नहीं बने चेल्सी का काउंटर पे। 4 मिनट्स प्लस इंजरी टाइम 2 मिनट्स, 6 मिनट आराम से मिलेगा। तो देखते हैं व्हाट हैपेंस। लेकिन हाँ, पामर इज मिस्ड अमन एब्सोल्युटली। उसका जो क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग इन द काउंटर इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो एक बॉल देता है और भाई एंजो नहीं, शुड मगर बी डूइंग वही वाली दैट। बात है कि आप 40 यार्ड या 50 यार्ड या 60 यार्ड भाग लो, उसके बाद गोल भी स्कोर करो, चलो ठीक है, कर लेते हैं यार, लेट्स डू इट। लेकिन लगा नहीं मुझे कि इस तरह खेल रहे हैं हम। तो ये बेसिकली उसने शॉप शट करने की कोशिश की थी, लेकिन वही इनएविटेबल था कि दे आर टू गुड अ टीम, दे विल स्कोर। पिंग पोंग हो रहा है चलो बहुत। ओह माय गॉड यार, ये क्या ओपन पिंग क्रॉसेस पोंग, वी इनको आर मिल जस्ट रहे हैं। इनवाइटिंग ट्रबल। चलो, ओह माय गॉड। ऑल सिटी। एनीवे, लकीली वी डिफेंड समहाउ। 80 से 88 मिनट शुरू हो रहा है गाइस। अगेन पीपल इन द चैट बने रहना। लेकिन डोकू हैज हैड अ ग्रेट। देवजीत ने बोला कि बेस्ट डिफेंस कभी कभी ऑफेंस होती है, तो वो अगर आपने ऑफेंस करना ही नहीं तो फिर इट्स गोना बी हार्ड। करेक्ट। ऑफेंस एक ही बंदा लग रहा है, कॉनर गैलेगर।
हाँ, प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला चीज वो एक एटीट्यूड में दिख रहा है उसका, वो एटीट्यूड चाहिए सबकी। अब फाइनली उसको डबल टीम कर रहे हैं जब ये आया है। ब्रिलियंट गाइस, कॉनर गैलेगर कीप्स द बॉल। भाई एंजो बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है। चिलवेल बहुत थक गया, नहीं कर Enzo पाएगा is a काउंटर। playmaker. नो यार, देखो should Enzo have is not countered. pace. Enzo is not Offside. pace. Enzo is a playmaker. तो वो जी ध्यान सर, रखना ऑफसाइड। पड़ेगा। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से कॉनर गैलेगर डिड ही गेट ब्लाइंडेड बाय वन साइड? आई थिंक उसने टर्न कर लिया था, ही शुड हैव काउंटेड ऑन द राइट हैंड साइड। या उसके बगल में एक बंदा था तो ही वाज अनडिसाइसिव कि इंकुंकू वाज पास रनिंग, देना या यस। फिर अपने होल्ड करना है। अगेन 4-3-3 खेल रहे हैं हम लोग। अब देखो इंकुंकू पिच पर है तो वी शुड बी मेकिंग यूज ऑफ हिज स्पेस, दैट वाज द मोमेंट। नहीं हो रहा है। नो, क्रॉस आने वाला है। व्हाई डू वी अलाउ सच क्रॉसेस? आई डोंट नो, अंडरस्टैंड, आई नेवर अंडरस्टैंड। थ्रो इन टू चेल्सी गाइस, कोई नहीं। ऋषभ बोल रहे सिटी विनर मोस्ट प्रोबब्ली कमिंग इन। कोई नहीं, कोई नहीं। कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी, कम ऑन चेल्सी। This is when the away fans need to be louder than the Etihad fans. Why? Not that they were already, just saying with all due respect. But Caicedo, yellow carded हमें guy सुनाई नहीं दे early रहा on. है फैंस क्या कर रहे हैं, स्टेडियम में क्या हो रहा है, अपने म्यूट पे है। भाई एक सेकंड, क्लियर करते हुए अनफॉर्चुनेटली वॉकर हैज गॉट द बॉल। रादर वॉकर का नामकरण हो गया वॉकर इज वापस से वॉकिंग विद द ड्राइवर। बॉल। अबे एंजो क्या कर रहा है यार, कोई बॉल तो कुछ तो कर, क्लियर तो कर दे। कमीज ही खींच ले उसकी, कुछ तो कर दे। डोकू भाई अब सोच रहा है कुछ अलग करूं, पूरे रात कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। सो स्लो करते हुए डिब्रोयना प्लेइंग बाय प्लेइंग एज गॉड मैन। पूरा घिर चुके हैं भाई हम लोग पूरा नेतना की एकदम यार। नो नो स्पेस दे दिया भाई वापस से। डोकू क्रॉस, और भाई अरे डिसासी। बाप रे बाप रे बाप पूरा। Should Petrovic not have come out earlier? I know Disasi cleared it for a corner. Should Petrovic का कैच था भाई। मैं वही बोला ना, पेट्रोविच थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो लाइन अपनी हॉग कर रहा है। जस्ट गेट दैट फीलिंग कि वो इनिशियल इंस्टिंक्ट नहीं है टू रन ऑफ। टाइप विनर विनर। अरे भाई 2014 vibes और header coming in from कौन corner. करेगा? Easy catch for Petrovic. टॉरेस टाइप विनर चिल्बल मारेगा, इंकुंकू मारेगा। अपना बेस्ट फिनिशर पिच पर करे, वही एक बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, हालैंड को 4 मिनट मिल गए यार। हालैंड को 4 मिनट भाईजान stoppage उसकी time जंप guys. देखी थी आपने? डिड यू सी हिज जंप फॉर दैट हेडर? Yes. I think he put all the effort in jump. लेफ्ट फुटर फ्री शॉट नहीं मिला Gallagher, उसको। man, what a match, what a game. Gusto nicely done, getting it back from Caicedo again. लेकिन Gallagher on the run, first time they यार। Gusto cross coming in, I don't think लेगा भाई। चिलवेल है यार, चिलवेल हेड किया बैक। एंकुंकू, ओ थोड़ा सा एज लगते हुए थोड़ा डिफिकल्ट था वॉली पर। प्लेयर है अपना। हाँ Again, we should be motivated. We should have the intensity as well as the tactical now. वॉच कैनॉट विन ओवर द फैंस इतना जल्दी यार, फैंस बुद्धू नहीं है हम लोग। It'll take time यार, वो तो है ही यार। मतलब the fact is we are not convinced. That's the answer. यार आप लोगों के इंजरी टाइम खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं, 90-57, 90-58। मैं शायद मैं और पीछे चला गया हूँ। नहीं आप डिफेंस करो, पीछे नहीं गए हो, डिफेंस कर रहे हो आप। नहीं हाँ नहीं मैं आई नीड द क्लॉक टू रन फास्टर दिस टाइम। नहीं आप बोले ना पीछे, आई वेंट बैक, मैं पीछे चला, पीछे नहीं गए भाई, डिफेंड कर रहे हो। फुल टाइम विसल कर दो बस। अरे नहीं, एक सेकंड, एक अटैक आ रहा है भाई सिटी का, ऑन द राइट हैंड साइड क्रॉस किया, नो फार पोस्ट में हेडर आया है। निकाल दिया। अरे यार क्या क्लियरिंग कर रहा है यार, थोड़ा तो पैर में जोर लगा यार, वेट कर जा। लेट्स नॉट बी सो हार्श ऑन कैसेडे यार, कम ऑन। McKyle is too scared, बोल रहे ऋषभ। होना ही यार, होना ही है, अपना क्लब है भाई। नेथन आकी गेटिंग अ हेडर, इज इट अ फ्री किक? हां फ्री किक। किसके लिए? चेल्सी के लिए? नहीं भाई सिटी के लिए। लाइट ब्लू अल्लाह यार भाई, फ्री किक से डर लगता है। फ्री किक फॉर सिटी, बट शॉट लिया है उन्होंने, ट्राइंग टू ड्रॉ आउट चेल्सी इन द बैक फाइव जो खेल रहे हैं अभी। नाइस ब्लॉक। अरे गिर गया यार भाई, गिर जा उतना मत भाई, रेफरी रोक यार। अरे भाई अगर गोल होता ना, गाली पड़ता। काइल वॉकर तू भी डाइव किया था भाई, एंजो गिर गया है भाई। एंजो पड़े रहे, उठना मत एंजो भाई, उठना मत, उठ जाएगा पड़े रहे, इट्स ओके।
Enzo, I think that was typical Argentine game management. Trust me or not, that guys. Typical. I think the OGs will know that. Diego भाई पॉच के Simeone पीछे देखो, tactics पॉच के of पीछे देखो। Argentina. Poch भी Argentina है, yes. कोच क्या Petrovic. कह रहे हैं, आ जाओ वापस आ जाओ। वो ऋषभ पंत वाला, अरे भाई आ जाओ, अरे नहीं खेलना। भाई Nkunku is looking very very not ready. Sorry to say. लगी He लग रहा should है। be holding up that. मतलब he ये should have स्टार्ट आना held that चाहिए। ball यार वैसे deeper. आपस की बात है, गैलेगर जितनी एनर्जी दिखा रहा है आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ प्ले, हैट्स ऑफ मैन। Correct, absolutely. नहीं बिल्कुल, आई थिंक सेकंड हाफ में मैच्योर प्लेयर लग रहा है। वो इनकुंकू जो है कॉर्नर इज लुकिंग कुछ टायर्ड तो कंपेयर टू हिम। कंसीड द अरे कॉर्नर भाई भाई यार इस वक्त लास्ट नहीं मिनट ऑफ यार, पोजीशन. कम ऑन। it will be very harsh if City go score here यार, let's be real. लेकिन it is जो football. भी है, whatever the result is, at injury time 93 minutes, we're at 1-1, we're still in it, so hats off. Petrovic save coming in, नाइस। Leather push coming in, Colwell nice clearance, लेकिन साला कोई है ही नहीं ऊपर. एडिसन आ रहा है उनका स्वीपर कीपर, लेकिन एंकुंकू नाइस ट्राई ऑफ प्रेस, लेकिन नो यूज. और प्रेस किया था। देखते हैं रॉड्री क्या करेगा भाई इस पोजीशन से. रॉड्री प्लेइंग इन द राइट विंग. बर्नार्डो सिल्वा, आई थिंक लेट हिम नॉट क्रॉस, लेट हिम नॉट क्रॉस. नो हैंडबॉल अपील है. सिटी उठ जा यार भाई, रेफरी देगा भाई, पेनल्टी देगा. लुक्स लाइक इट. डोकू टेकिंग अ शॉट टू नो अवेल. सिटी आर अपीलिंग फॉर अ पेनल्टी गाइस, प्रीटी श्योर वी आर देखेगा नोइंग देम. लेकिन आई एम सरप्राइज दैट रेफरी ने पेनल्टी दिया नहीं है. नॉट दैट इट वाज अ पेनल्टी. एक और पेनल्टी फिर शाउट से गिर चिलवेल गया, फिर विद से गिर गया। गोल आने वाला है. बचा लिया यार. भाई अरे भाई गुड। ट्रेवर चालोबा, द डे दैट Debojit is there by ट्रेवर चालोबा makes a match saving save in the end, but VR is checking. यहाँ पर there was a little pull of the shirt, लेकिन I don't think वो देना चाहिए. हैंडबॉल देख रहा था, हैंडबॉल देख रहा है। पुल ऑफ द शर्ट बाय लेवाई कॉलवेल भी लग रहा है थोड़ा बहुत. नहीं यार, यू कैन नॉट गिव अरे दैट हाथ हैंडबॉल. लगा था कोविल का। It wasn't a pull of the भाई इतना सा. Come on, if you give that a pull of the shirt, really, I don't think that pull of the shirt was good enough for. अरे नहीं, अरे यार रूबन डियास चुप रहे भाई. गिरने के बाद और गिरा यार, और घुस जा. नहीं नहीं खोद नहीं दे भाई नहीं नहीं जमीन में. नहीं। अपने आप को गाड़ दे रूबन डियास, गाड़ दे तू. सीरियसली आई एम लूजिंग माय शिट ओवर 95 हो गया यार, आप तो बंद कर यार। ये बचा ले यार, ये गोल मत खाना। कॉर्नर है. Petrovic is nowhere. चलो Luckily, and it's a finish, man. It's a finish. Yet again, चलो, against a huge team, we One- cannot get a one all. victory. But One koi nahi, all. bhai. Proud of the boys, bhai. Proud of the boys. I must be saying, yes, we missed our chances. Yes, we shouldn't have conceded. But at the end of the day, bhai, it is Man City with all due respect. And second half, man, the way we have sucked in the pressure, I must be saying, by Heart Attack FC was almost back, but 1-1 deservingly. Arguably, you can say that we deserve to win, but I think just about they had a lot of chances, City. So I'm not going to say कि by sit and say that absolutely deserve नहीं करती थी. But guys, over to you, McKyle. What is your take, bhai? Where are you now? मतलब again, Bhai, chances missed. We'll come back. and you told me at the start of the game that we would draw this game with Man City, I would have bitten your hand off. So you know what? I think that that's was the the spirit. prediction. That's the spirit, because हमें पता है कि we will be wasteful. हम chances create होंगे भी तो we will not score them. 3 4 5 में से एक जाएगा अंदर मुश्किल से, right? So we were able to. एक सेकंड. दिस सेकंड 2 सेकंड पहले जो हालैंड का दिखाया था हॉटस्टार में, द फेस, सॉरी गाइस, आई एम नॉट अ हालैंड हेटर, नॉट अ सिटी हेटर, बट लिटरली जो फीफा में खेलते वक्त जो मिस हो जाता है ना, मिस ऑफ द सीजन एंड वी हैव लॉस्ट द फाइनल वाला चीज, जो एक्सप्रेशन होता ना हालैंड के फेस में, वो एक्सप्रेशन था राइट नाउ. मतलब अगेन प्लीज कंटिन्यू. यस, कौन बोल रहा था? नहीं, बड़ा मजा आया देख के. पेप ने भी हमें चढ़ाया ऊपर मैच से पहले, लेकिन हमने भी दिखाया पेप को कि तू माइंड गेम्स खेल ले, लेकिन if we choose to, we can still. वो तेरी वाली बात है कि Chelsea is so hot and cold, you don't know which Chelsea you're gonna get. कि हराने को वो Pep को almost like we could have beaten Pep today. Like it was not beyond doing, right? We just were wasteful. We had done the hard work.
the easy part of it, yeah, the final touch to it, cherry on the top to it, we missed. कि एक दो हम और कन्वर्ट कर लेते. There were so many chances, we should have scored them. लेकिन यही हमारा रोना है, गेम इन गेम आउट, सीजन इन सीजन आउट, कि चेल्सी को 10 चांसेस दोगे तो शायद एक दो गोल हो मुश्किल से. एंड द प्रॉब्लम इज कि इन द एरा जहां पे चेल्सी यूज टू डोमिनेट, वो हाफ चांस से भी हम स्कोर कर दिया करते थे. सो नाउ हमें प्लेटर पे आते हैं, एक के बाद एक चांस आता है, वी जस्ट कैन नॉट कन्वर्ट इट. Debojit, what is your take? 1-1. It was like 1-1, always. नहीं मतलब फॉर यू अगेन वी कैन गो बैक इनटू द टैक्टिक्स एंड ऑन दैट, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मतलब जो फर्स्ट हाफ में रिमेंबर लास्ट 2 मिनट और स्टॉपेज टाइम में जो दिसासी ने जो माता दिखाकर जो किया था, कहीं ना कहीं आई नो वी फाइनली कंसीडर्ड, बट आई थिंक यू नो दोज लिटिल थिंग्स एक्चुअली मैटर. दोज मैटर बिकॉज वी कुड हैव कंसीडर्ड इन दैट, यू नो, इन दैट टाइम. और याद रखिए गोइंग बैक टू द 4-4, आई नो वहां पर भी ड्रॉ हुई थी, लेकिन स्टैमफोर्ड ब्रिज में जो 4-4 हुई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, हालैंड स्कोर्ड जस्ट बिफोर हाफ टाइम. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, इन स्टॉपेज टाइम ऑफ हाफ टाइम ही स्कोर्ड. यहां पर सिटी डिड नॉट गेट दैट. I know second half में one can say that we were a little bit too negative, maybe some substitutions were at fault, maybe a bit too late. लेकिन the fact is we kept Manchester City at the Etihad at bay for 80 minutes, especially with Disasi making those clearances, and arguably you can say that Petrovic did not have his best game. Right? That is, Debojit? Petrovic did not have a great game, but he did enough. And the defense in front of him did enough to protect him. So hats off to them. What you call it? Colwell had a rough game Second half. in some ways, but we were able to step up when it mattered. And honestly speaking, we all know Man City had a goal in them. Man City was always going to score. वो तो they were so wasteful with their opportunities for a change कि वो छक्के पे छक्के मारे उन्होंने हर जगह कि it didn't turn out that way. But you know, अगर as an underdog, if you tell me कि हमें 5-6 ओपन गोल्स के चांसेस मिले या 3-4 ओपन गोल के चांसेस मिले और हमने नहीं लिए, तो that's also disheartening in some way. लेकिन we are used to it. हमें पता है कि हमने तो इसी तरह खेलना है. So all said and done, I'm happy with the result. Yes, you know, we could have held on a little better. Lekin the coach had made the changes already. We had decided to sit back and absorb the pressure. So कुछ ना कुछ तो होना ही था. It happened. The other side, वो Debojit, you were constantly saying कि you know attack भी करो and try to convert. हम नहीं कर सके वो, लेकिन question marks हैं थोड़े से. But I think on the whole, a positive performance, especially Man City के घर में. I'll just say it out in like three sentences which drew the line. तीन चीज अगर just we'll see the match through and throughout. First of all, Haaland was not given the through passes to you know belt all those by the keeper. Number one, De Bruyne who? Oh, Yeah, oh. and second part where our defense did crumble, but in the first half our defense did the defensive job and not attack. We held the line, and the last man Petrovic did his job to the fullest. Yeah, misses hota hai. That was a belter right past him in the top netting. कुछ कर नहीं सकते, but yes, Petrovic did the work. He was the one better than Ederson. So once again midfield भूल जाते हैं. बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाए हम लोग. Let's not talk about our midfield. We cut off their supply line for the goal machine to play off. Number one, our defense line did throughout जो भी किया है, whether it is Disasi, whether it is Chalobah coming being as center half, जो भी सब किए हम लोग. Goalkeeper played the most important role. Once again, I wanted this guy. I always supported Kepa. I always supported Petacek. Being a person who loves the goalkeeping throughout, being a captain, be in whatever role, the youngest player on pitch, he did a fantabulous job. He saved it. He saved two huge chances. Header wala just save kiya tha. So I'm fine with 1-1. Like we could have been 3-1, 4-1, but 1-1. Take a fine. Top 10. Done for the day.
Bhai, ज्यादा I सोचने don't मत. know. Football.com again. I would like to say, with all due respect, I know that City made a lot of chances in the second half, and Chelsea ka Poch ka tactics. A lot of people on the chat are saying we were a bit too defensive in terms of substitutions, in terms of how we were approaching the game towards the last half an hour. But come बस on, डर how गया can you था. not give a man of the match to a Chelsea player? यार, Mikhail definitely आज to Disasi को man of the match मिलना चाहिए, right? I think there Yeah, were a couple Gallagher. of good performances. Couple of good performances. I would say that Disasi was big. I would say Jackson was also, despite being wasteful, that Jackson's endeavor and his assist make him a contender for me. Sterling was also decent, hot and cold tha, lekin he was okay. But I think between the two, maybe. But in the end, I think second half, mein Gusto also was uh, was uh, was good. I liked how he Right. Only was thing played. about But Gusto on is the whole, you're right. On the whole, हम you're लोग right. Disasi was the rock. No, but what I'm asking is, did we not give too much space to Doku? Because at the end of the day, वो even that goal for that matter, कहीं ना कहीं वो शुरुआत क्रॉस से ही आई थी. It fell जो to भी है Doku needed a 2-on-1. We did not do it till the end. आखिर में जब वो कैसेडे आया, that's the only time when he started doubling up on Doku. Doku को वो बेचारा एक बंदा नहीं cover कर सकता. वो he's just that good. You need a 2-on-1 in that situation. तो उस वक्त कोई ड्रॉप इन नहीं हो रहा था उस वक्त. लेकिन जब ये आया तो इसको इंस्ट्रक्शन शायद उसने दी है कि you can drop back in deep. तो शुरू में देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी देयर टू डू बेटर ऑन दैट साइड बिकॉज वो डोकू को जब बॉल मिल रही थी डोकू क्रॉस कर रहा था उसको. वो इट जस्ट सो हैपेंस के ऑल द क्रॉसेस वर लाइक कोई गोल नहीं हुआ उनसे. बट ऑन अनदर डे दैट कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. हालैंड को दो तीन क्लियर हेडर्स मिले. हालैंड was wasteful as well with his chances. So on the whole, good job by the centre backs to keep Haaland off his touch in those situations. And Baki bhi everybody, I think Chilwell, even you were right. Chilwell was key in some clearances as well. So that panned out as well. I think we, on the whole, I have a positive feeling about this result of this performance. I think on the whole we were better than we were worse. It was a better performance, and the results shows it. You took points off City, who would have given us a chance. देवोजीत मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर काफी लोग बोल रहे हैं द यूजेज ऑफ एनकुंकू. मतलब एक चीज होता है दैट वी हैव नॉट इवन गॉट ए मैच शार्प. अगेन पॉच इज टू ब्लेम. देयर आई टोटली आई बाई जो कमेंट्स में बोल रहे हैं. लेकिन एक चीज होता है यूजिंग हिम इन दिस गेम इवन. मतलब व्हेन यू गॉट एनकुंकू, मतलब could you see why at that point Jackson was playing left wing and Nkunku was playing a striker, or would you say that Nkunku is better off playing the Palmer kind of role in the team? I think you're on mute, मेरे भाई. Can't hear you. Sorry. Nkunku can play in two positions. Okay. If we sub, like if you are playing by the three names, Nkunku, Jackson, and Palmer. Palmer is a person who can start from defense or he can play from the midfield onto the box, D box. Jackson is a person who can play either in the striking half but does not come back when required, when the ball is like being pressed off. So that's a big drawback. Cole Palmer is a person who can go up, is young, go up and down by the flank. So left wing up, I mean like on the wing part, up and down, or even when he's playing in the center third. But on the other hand, Nkunku is a different kind of player. His basics are different. Nkunku is a person who's a pressing player. He is not a person who's gonna hold down, like if you see on the likes of to cover up the space which Gallagher वो was. बंदा लिंक अप वाला बंदा नहीं है, मतलब as compared to Yeah, what he's Jackson not is. a box to box player. There are different strategies to play in different player. Now, if Also, you're I have one putting, more suggestion because you're saying that. The fact is, whenever, if you have seen, I know दो ही games हुए, लेकिन I think there were two games जहाँ पर Nkunku, Jackson and Mudryk were playing together, and a very weird way that worked brilliantly because Jackson was that link up guy, Nkunku was that pressing guy, and Mudryk was that 1-2s वाला बंदा who gets in behind. So I think the way that you explained is super, because for me, Cole Palmer is a brilliant footballer, and what some turns and touches he had. One touch where he had one of the City players falling by, that was great, with all due respect. Lekin, I think you're right. Actually, very weirdly, Nkunku, Jackson, and maybe even Sterling would have worked a little bit better in that situation,
because of the fact that Sterling का जो pace on the turn है is more than a Palmer, और वहां पर Nkunku का press can be useful for the second man Sterling with his pace being there. I don't know if that makes sense. मतलब that is the It makes reason why sense. that is the reason why we are hearing Sterling to be like change or maybe sold out or something in the window, right? तो उसीलिए Sterling को लाया गया था from City. His ex team, he did a fabulous job tonight also. Hats off to this guy. But the thing is that Chelsea doesn't need any more playmakers right now. We have two playmakers. We have Gallagher. We have Cole Palmer. We have somebody like Disasi who's getting a build up. अगर वो सही से ट्रेनिंग लेगा फ्रॉम द लाइक्स ऑफ थियागो सिल्वा तो बंदा सही से एक बीस्ट बन जाएगा, जो somebody was commenting कि ये बीस्ट बन सकता है और बीस्ट इन द मेकिंग. फाइन, बट अटैक में वी ऑलरेडी हैव 4 पीपल. We have the likes of Nkunku, Mudryk जो अभी नहीं खेल रहा है. We have this thing, the one who got subbed off, Sterling. And pardon? Sterling, yeah, Sterling, exactly. And of course Jackson. So basically ये जो 4 बंदे अपने पास है, इसमें से एक जन को हटना पड़ेगा because we are planning to buy in either a false 9 or maybe a striker or positive striker. तो अगर positive striker जो भी आएगा, whether from a PL team अगर positive striker आएगा, he will take that number 9 spot. तो नंबर 9 अगर किसी को दे देंगे तो there is only one place to fill in a sub. That means a false 9. तब either Gallagher has to play bit lower down. तब Cole Palmer has to only play through the wing. अगर विंग में खिलाने जाओगे तो एनकू का जगह एनकू कैन प्ले फ्रॉम द राइट फ्लैंक. I think you know what, you are right, but I genuinely believe at the end of the day, the way that Jackson is basically using his ability on the left wing, na, I have seen them. I know not exactly, but Nkunku ने किया at some point for Leipzig as well as for France. There are few games that he's actually done that better. Maybe because Nkunku is not 100% fit, right? अभी वो लग रहा है वो not looking at match sharpness नहीं है. I think he has that ability to kind of not just basically press, but also definitely use his pace better. What I do you say, think this McKyle? is what I wanted to add is कि Poch ने Nkunku को क्यों नहीं खिलाया from the start. Maybe he was seeing in the training कि he's not up to it, right? Secondly, he's coming back from a long-term injury. I think कि the club's consensus is कि इसको somehow get him through the season at least without another injury. तो इसीलिए उस पर ज्यादा pressure नहीं डाल रहे हो. ठीक है, as a fan we want to see our attacking talent being started. लेकिन I think तो वो he's probably seeing what we saw on the pitch as well, which is कि he's not there right now, right? तो अगर वो नहीं है, if he's not showing the intensity in training even, then you can understand कि Poch ने उसको off the bench लेके आया. लेकिन फिर expectation ये है कि off the bench he makes an impact, which means कि if he didn't make an impact, I would say कि he's carrying some sort of niggle. That's why he was so lackluster when he came on. Maybe let's hope that's not the case though. लेकिन Mudryk और Noni turnovers बहुत नहीं, करते I हैं. actually hope that that's the case because I would rather कि he's protecting an injury than this is how he's going to be playing for us with full fitness. But only thing is because मुझे अभी भी लगता है लिवरपूल का pace will be crucial getting in behind again versus Liverpool. Again we'll come to that later on. लेकिन for me not using Mudryk at all for the last 2 weeks. I know Mudryk is not ready. वो clear दिख रहा था in the last few weeks, but not using him at all. I know आज we could not expect in a big game to come in the scenario, but Nkunku, Mudryk not being confident and match sharpness वापस नहीं है before a cup final is a questionable thing still मैं बोलना चाहूंगा. But again ये we cannot be very man negative. management, squad management, could be better. वो ये मे बी ओल्ड स्कूल जैसे बोलते हैं ना, काफी लोग इफ यू रिमेंबर देवोजीत एंड मिकाइल इन चैट, Jose Mourinho in the first stint was criticized because he did not use youngsters as much as what he should have. Even arguably in the second stint फिर भी वो use किया था काफी इनफैक्ट, लेकिन first stint में that was one of the few criticisms that one had, right? Because at any point he was thinking about the match and basically the result. अब maybe Poch, because of the fact that we were 10th and the fact that we have a final, maybe he wants to instill that in the team कि भाई first result पे देखो आगे. By the way we are still 10th. I just see एक point ही है, 8th थे, अगर हम जीतते फिर 8th होते. भाई ये क्या हो गया भाई, we are still 10th guys. What is this? On the lighter note, we are still in top 10. So बाप रे, what that is optimism bro. Maybe fine, we are there.
अरे They have भाई to हम decide यार जीतते again. हम जीते, हम हारे, हम ड्रॉ करें, हम 10th पे ही रहते हैं। ले दे के। चलो कोई नहीं भाई। काफी लोग चैट में जो भी चैट में बता रहे थे, साथ साथ में हम काफी बारे बातें कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन द गेम। अगेन सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, आई मस्ट से दैट। मतलब शाउट आउट डेफिनेटली टू अ सेंटर बैक पेयरिंग। This center back pairing, मतलब don't be surprised if it's one for the future. Again, it's early days, it's just one match. लेकिन मुझे लगता है मतलब it has some potential. I know headers में अभी भी question mark है थोड़ा सा, लेकिन imagine basically them basically Levi Coley, if I'm not wrong, मतलब you never know, he might bulk up a little bit next year and all of a sudden we have a man ready bro, along with Disasi जो already looks like a mini Rudiger है, going to that level. But Conor Gallagher second half, man, the way he ran his socks heart out, brilliant. And Nicholas Jackson, जितना भी हम गाली दे, और I know we should have won, we should have not missed his chances and all that, you have to give it to Nicholas Jackson. Malab, him and Cole Palmer and even Enzo in a couple of moments had some turns, which again I repeat for the nth time in the stream. भाई with all due respect मैं बोल ही देता हूँ भाई, वही टर्न अगर मेसी करता, मतलब that would have been the headline for Oh literally my every God. Twitter Seriously. account in the world. Let's be real. And I know people, मैं निकोलस जैक्सन और लियोनेल मेसी को लिया हूँ एक सेंटेंस में. People who want to troll can troll it. Yes, I'm not comparing. What I'm saying in this, the kind of touches and the turns he had, the kind of हाँ, link he had at times was awesome. वो आप Bernardo Silva type turns थे, like Yeah. they were beautiful turns. And you're not used to seeing Cole that Palmer from भाई Chelsea क्या players. गिरा दिया था बंदे को टर्न करके. That should have been a goal though, but yeah. Yeah. But बात वही है ना कि turn without goal, वो फोका है थोड़ा सा. So we need to up our finishing so that वो बात देवजीत ने जो की कि डर होना चाहिए अगले को. The defenses should be scared of अभी problem ये है कि even if we beat the defense, we beat the first man, if we win the second ball, defenses are not scared of us because they know कि इतना slow build up होगा कि we will be able to get back into position. वो थोड़ा सा डर डालना है उनमें कि we need to convert the ball जब वो they are still running towards their own goal. Don't give them the time to get back in position, get their backs to their goals and behind the ball. Make them run after the ball. They make them run towards their own goal and try to score in that moment. And the biggest teams, the Messis of the world and the Pep teams of the world, that's what they're good at is they hit you when you're running towards your own goal. Think of Liverpool. कितना अटैक करते हैं, कितने कन्वर्ट करते हैं. Why? Because they do the basics. कि अगर आपने अटैक करना है, you're supposed to take the shot at the earliest moment, not at the last moment. Like यहाँ पे I'll just add something about the Milan teams. I'll talk about Inter Milan. Recent past में बहुत अच्छा नहीं किया है. Because I suddenly saw Kaka's jersey out there. I remembered the part about Milan. अगर आप Yeah, I have a soft corner for AC Milan भी भाई, Debojit, just to let you know. Yeah, please continue. Fine. No, I'll bring a different perspective about defense. अगर आप किसी को प्रेस करोगे ना, बंदों में डर पैदा हुआ रहेगा कि हाँ फाइन ये तगड़ा डिफेंड करेंगे ना, उन लोग का हाथ पीछे बंधा हुआ रहेगा ताकि सडनली हैंडबॉल ना हो जाए. देयर फेस ना बॉडी और छोटा हो जाएगा. वो जो अगर आप मैच सही से देखोगे, इफ यू सी सेरिया में अगर इंटर मिलान का गेम अगर सही से देखोगे, मैं छोड़ दे एसी मिलान का छोड़ दे रहा हूँ, दे प्ले वेरी वेरी डायनामिक काइंड ऑफ गेम. बट इंटर मिलान का जो मिडफील्ड है स्पेशली, आई हियर यू. So डिफेंस हेवी टीम, जो बंदा लोग मिडफील्ड में भी है ना, दे कम बैक, दे suck the pressure and then they press, that's like. और वो जो बॉल ले लेता है ना, और एक सडन बॉल which is और लंबा सब कट के है ना, तो बॉल फ्लाइज ऑफ एंड बॉल मिडफील्ड से नहीं आता है. See, that is the difference, Debojit. वहां पर they play a wing back system, right? अब if you all remember Conte and Tuchel, what they used to do, मतलब in simple sense they used to use that. Marcus Alonso भाई running on the wings, we all know that. Victor Moses भाई, बट नीचे नहीं आता बंदा नीचे नहीं आता कभी. वो बेसिकली डिपेंड करता है इन द सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं मोर कॉन्टे देन टुकल. बट हाँ, मिकाइल प्लीज. Last word. What's your assessment of Pochettino's performance today versus Pep? The two To be managers. honest, he definitely, in my opinion, Mauricio Pochettino needs to get the credit big time for the first
1 hour. ठीक है, he definitely gets to get a lot of credit for the first 1 hour. Definitely मैं बोलता हूँ in game management there were issues, things like not taking off Caicedo at the the right time, or rather even taking off Palmer, जैसे नीरज बोल रहे in the chat, taking off Palmer a bit too early. He was hoping and he was expecting, maybe directive ये दिया था by Enzo Fernandez, तू अब रोल कर जो Bit more Palmer game कर रहा time. था. But that was not possible because of the fact that at that point Caicedo had a yellow card. So Caicedo wasn't playing in the fourth gear. Caicedo was playing in the second gear. And that is why Enzo Fernandez is a little bit more behind. And this is why that space, कोई वो space में था ही नहीं in that middle, that connect between the midfield and the attack to put that ball. And that is why our counter never came. Or of course, coming down to the players' misses, it is what it is. Nkunku should have retained the ball better, although Poch is to blame there as well, McKyle, to answer your question, because for me, Nkunku should have been match sharp for this match, in my personal opinion. In the end, if Nkunku was match sharp, a couple of balls retention and then counter me, he could have done better. But again, Jackson, he used Jackson in the best possible manner that he could. No, Jackson did not finish. So I think आज Poch को मैं rate करूँगा. Honestly, I'll give him a solid 7 out of 10. I would not criticize him as much as what I usually do. No, I'll be still critical of him because एक match में कुछ change नहीं होता है. Suddenly, you know, if your team plays well, you don't become a big shot manager. No, we are just talking about today's performance, No, not about no, general Poch. I'm not challenging between the anybody. between the two managers, between Pep and Poch, I felt Yeah. that Poch had. I'm agreeing with Ankit that he had. The first 60, 70 minutes, I think we were on top, but then after that, it was pretty much, we were not changing what we were doing. So eventually, we were going to give them something to do, and that's Your what we had metal said is, before the game. yeah, Mikhail, your metal is only tested when you become a seasoned campaigner. When you play throughout that first 60 minutes, when your team is young team who runs through and throughout the whole field, maybe few kilometers in like what 60 minutes time. But then uska baad, when there's a temperament issue, when you need to make your team play either at a fast pace, suddenly फिर pace slow करो, when he can play by the sideline. Coach can say things by the sideline. That time your metal is tested. That time if you would have done like important substitution कि कैसे लोग को हटाओ या फिर like if you bring in Cole Palmer को थोड़ा और time दो और 10 more minutes or maybe 5 more minutes, तब क्या होता है ये जो Like conflict he did in the last game. For example, we were criticizing Poch in the last game against Crystal Palace that he did not take off people, but in the end we scored those late goals, right? And we did. Sometimes basically good. जैसे Poch Pep ने खुद रखा है. But I hear you, Debojit. I hear you absolutely. Again, there are pluses and minuses. But I would not take a bottom line. Let's try and end the stream because it's been 3 hours, 33 minutes. It's a long day. Having said that, by proud of the performance, not really मतलब बहुत ही हैप्पी वाला चीज नहीं है चेल्सी का, नहीं happy है. लेकिन वी आर बिल्डिंग I think एंड Man City is a big thing. हाँ I think बट वो ये I think contest I game. think on the whole, today's result and performance was a little upwards trajectory. It wasn't a downwards trajectory. So it was a positive game from that perspective for Pochettino. It wasn't a perfect game, like it wasn't a terrible game either. So I think on the whole, we have to be upbeat. कि ठीक है, this was a big game with a big opponent, and honestly speaking, we deserved a draw because we did not convert our chances. Had we converted our chances and scored 3-4 goals and still drawn, then you can say that we deserve to win maybe and we drew. But एक goal करके Man City के against एक goal करके you were able to draw the game. I think पतली गली पकड़ के निकल जाओ because you take the 1 point like you stole it, because that's pretty much what happened today. Pep को नहीं समझ आई होगी उसके साथ क्या हुआ आज. So in that sense, I would give Poch a 7.5 as well today. लेकिन ये है कि my expectation from Poch is not कि जी वो कोई world class manager है. I think generally he's trying to do methodical step by step improvements. लेकिन उसकी जो starting lineups होती हैं, we never agree with it. उसकी substitutions we never agree with, and that's just the kind of manager he is. It will never change. तो देबजीत वाप वाली जो बात है कि वो is he now suddenly वो कभी भी नहीं होगा. I think as a Chelsea fan base, because we've been seeing so many managers over the years. We are not a Tottenham, right? So we have seen the best managers of the world coach in our club, right? तो हमें पता है standards क्या है, और हमें नहीं देखते वो standards इसमें. लेकिन from where we're coming in the past 3-4 years since Tuchel left, and Tuchel से पहले भी, सारी का era भी up and down ही था, Conte का era भी up and down ही था.
So we have been having quite a up and down roller coaster ride, and generally speaking, I think we are trying to knit some positive results together as the season progresses. This Christmas break was our best Christmas break in the past 6-7 years. बात नहीं कर रहे हम, because उसके फौरन बाद we lost a game to Liverpool the way we lost it, and we lost a game to Wolverhampton the way we lost it. But generally speaking, Next there are guarantee positives. Okay, guys. हाँ? Sorry, but Mikhail, I have to go, guys. I have to go. I have an appointment early morning. यहाँ पर रात के 1:30 बजे Debojit knows it exactly what I'm saying. लेकिन big up to Debojit, big up to Mikhail, and this topic exactly we have to continue it in the next stream. Absolutely. Again, happy with the performance, proud of the performance, but again, it's one game at a time. It's a big Carabao Cup final. We'll be doing all the build up and all that. Of course, Almighty Blues में तो रहेंगे, लेकिन we will try and even cover on Almighty Sports क्योंकि वहाँ पर not just cricket but we are doing football as well. People to check out the links again. Shout out to Be Right. मैंने दिया नहीं था, मैंने भूल गया with the passion. I forgot everything about it. लेकिन there's a fantasy game going on. Check out if you want to win a free jersey. The link is below first line in the description. You can register on that link and play. The top 3 prizes will get a free jersey and a cash prize. Big up to Be Right, and that's an innovative one in it. लेकिन कोई नहीं, we'll be talking about transfers and whatnot in the coming days. भाई cannot go whole night गौरव, लेकिन अभी के लिए अब तो चेल्स no matter what. तो भाई ओपी हो जाए यार, देवोजीत ओपी हो जाए, मिकाइल ओपी हो जाए, चैट अपने आप को थोप दो, Chat OP हो जाए भाई. Big up chat. Title race is good यार, title race is good. We'll see what happens. चलो guys, bye. Okay. Take care.